ನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ അവിടെ ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಮ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಆಡ್ ಕಾಣ್ಲ ನಾನು ಕದ ನಾನು ನಿಕಟ ಬೀಟ್ ಕೊಡೋದ The day number second, the match for the seeded teams, and first match itself, two very good seeded teams will go into clash each other. KCCR Kadri against Torpedoes Khana, and news here from the center is that after winning the toss, the captain of Torpedoes Khana rightly elected to field first, so that KCCR Kadri will go into bat first. It's going to be a very good match for the morning itself for the cricket lovers. Those who are watching here in UCC cricket ground, slowly the crowds gathering here in this cricket ground in the morning. And good morning to everyone. This is Satish Salyan for you in the day number 2 along with my friend Mr. Gopi. And good morning for everyone, those who are just tuned to the live telecast through Bedra Media in the YouTube channel. Good morning every viewers. And today please don't switch off your mobile and don't take your eyes from your mobile, because today is definitely going to be one of the fantastic day of cricket, and everybody knows that 6 ranking teams will go into clashing here to get the place in the big final, and we are witnessing definitely I'm sure that this day will going to be one of the best day for cricket, and before the innings will go into start of KCCR Kadri, I would like to invite Mr. Gopi for the first 3 over of the innings of KCCR Kadri. And good morning, Gopi, and fantastic day of cricket, the fascinating day of cricket, and everything looks to be so good, and condition seems to be very, very good here, isn't it? Very bright, sunny morning, and weather condition is similar to the month of March. Might be little bit breeze out there in the middle of the pitch, but probably I think it's going to be a very good condition for the cricket. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर दिन की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए इस वक्त, और जहाँ तक के सवाल है रनों का, तो रन्स नहीं मिलेंगे, तो बेहतर मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है टॉर्पेडोज खाना और केसीसीआर कदरी के बीच। आज प्रतिष्ठित टीमों के बीच जो मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि यह मैदान दर्शकों से भर जाएगा जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा। ये गेंद शरण की गेंद उछाला, एनफील्ड क्लियर करते हुए लंबा ऑफ की दिशा में गेंद बढ़ते हुए लंबा दौड़ इस वक्त लगाते हुए, और जब तक गेंद को
फील्ड करे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त अल्ताफ वालपाड़ी द्वारा और 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 6 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 6 ओवर पर साइड टू बी प्ले और 2 ओवर पावर प्ले। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, शरण इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हुए ये गेंद चिप किया, एनफील्ड क्लियर करते हुए अल्ताफ ने एक बार फिर से गेंद जाती हुई इस वक्त टू स्कोर एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। Absolutely perfect struck came from the bat of अल्ताफ वालपाड़ी और इस बार पिछले स्ट्रोक्स के मुकाबले 2 स्क्वायर इस वक्त गेंद को खेला था। इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के सीढ़ियों पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। और अल्ताफ वालपाड़ी अपनी पहली ओवर से अपने इरादों को यहां पर बुलंद करते हुए 6 रन बटोर चुके हैं पहले 3 गेंदों में शरण की गेंद पर। तो जहां तक का सवाल है इस वक्त माहौल का, तो मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश ने फरमाया कि बेहतरीन माहौल क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजय मैंगलोर ने और एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और यहाँ पर आज एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस उम्मीद अपेक्षा के साथ हम इस मैच की अगली गेंद पर बढ़ते हैं। शरण तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट अल्ताफ के लिए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर कमबैक गेंदबाज द्वारा और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों बढ़ता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट इनफील्ड क्लियर करते हुए खेला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में काफी लंबा दौड़ इस वक्त तस्वीर लगाते हुए और जब तक गेंद को वो रोके सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। एक बार फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर और 2 रनों के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रन 90 अंक से नुकसान के। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर। शरण एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार अल्ताफ के लिए बॉल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक। गेंद लाइन पर टिप्पा गया, मिड लेग स्टंप पर आती हुई शफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूंकि और गेंद सीधे इस वक्त जाकर टकरा चुकी है मिड ऑफ स्टंप पर। तो इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है 8 रनों पर। अल्ताफ वालपाड़ी की पारी समाप्त और केसीसीआर कदरी अपना पहला विकेट खो चुका है 8 रनों के ऊपर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड फर्स्ट ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड। First over completed in KCCR Kadri Singh's 8 runs on the board yet to lose any wicket. तो आज बेहतरीन मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच इस वक्त खेला जाता हुआ केसीसीआर कदरी और टॉरपेडोस काला के बीच में। इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा केएफसी कोडिकल और गोरी यंग बॉयज के बीच में और इस मैच के विजेता का पहले मैच के विजेता टीम का सामना एनएम मैंगलोर के साथ होगा इस श्रृंखला के तीसरे मैच में और केएफसी कोडिकल और गोरी यंग बॉयज के बीच के विजेता टीम का सामना होगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के साथ मैच नंबर 4 में। और जहां तक सवाल है कल 2 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं ए पूल से, लोकल पूल से। न्यू स्टार कुंजतूर और दुर्गा कुंचाड़ी, उनके बीच सेमीफाइनल आज खेला जाएगा और उसके बाद इस श्रृंखला का इस ग्रुप का बी ग्रुप का टॉप टीम्स का सेमीफाइनल यहाँ पर खेला जाएगा। तो काफ़ी क्रिकेट है यहाँ पर हमें इस वक्त आज देखने को मिलेगा इस श्रृंखला के अंतर्गत। और एक बार फिर हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि दर्शक इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आज इस मैदान पर पधारेंगे। तो रोहन कॉरपोरेशन इनकी ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए मुबीर और ओवर की पहली गेंद इस वक्त लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए मंजूनाथ। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर मुबीर इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त मुबीर तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट स्वीप किया, इस वक्त नो बॉल का भी इशारा हो चुका है। गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। अंतिम क्षण में गेंद को ऑन साइड पर स्वीप किया था खूबसूरती के साथ। नो बॉल का इशारा भी यहाँ पर हो चुका है अंपायर द्वारा। जहां तक का सवाल है रनों का, तो 3 रन यहाँ पर मिलेंगे। 2 + 1 3 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। 1 रन अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रास के रूप में, 2 रन बल्ले के रूप में और कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है और गेंदबाज मुबीर एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मंजूनाथ इस वक्त सामना करते हुए
और जहाँ तक सवाल है फील्डिंग के नजरिए का तो मिड ऑफ इस वक्त मौजूद, एक्स्ट्रा कवर, कवर पॉइंट, शॉट, थर्ड बैन शॉट, फाइन लेग, स्क्वायर लेग शॉट, मिड विकेट इस वक्त तैनात। इस वक्त अंपायर हरीश पटेल कुछ समझाते हुए नो बॉल के नियम के बारे में खिलाड़ियों को। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर मुबीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है इस वक्त, सुबह का वक्त 9:35 यहाँ पर बज चुके हैं। और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 की शानदार शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। दूसरे दिन का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजाई मैंगलोर ने। और इस बीच मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर, जबकि लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा सीधा दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजुरात के लिए। और अपनी ओवर की अगली गेंद मुबीर, ये गेंद इस बार चिप किया, लॉन्ग ऑफ पर मौका हो सकता है, जी नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। एब्सोल्युटली परफेक्ट स्ट्रोक। और इस स्ट्रोक में हवा का योगदान भी था। गेंद देखिए किस तरीके से डोलती भी गई और आखिरकार लंगो फील्डर ने जीतोड़ कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद तक पहुंचने में असफल। और गेंद उनके सिर के ऊपर से होती हुई लंगो सीमा रेखा को पार कर गई। ये 6 रनों के लिए, ऐसा कहना पड़ेगा। he just played that one with the wind and got a maximum for that। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन। और फ्री हिट गेंद का भरपूर फायदा यहां पर उठा चुके हैं मंजुनाथ। तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, मुबीर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज रवि पडयूर ने गेंदबाज से मांगी और गेंद की परीक्षा करने के बाद एक बार फिर से गेंदबाज के हाथ में गेंद को लौटा चुके हैं। अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप करना चाहता, चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 17 रनों पर एक विकेट गिर चुका है। और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर शुरुआत केसीसीआर कदरी यहाँ पर कर चुका है। दाहिने हाथों पर द विकेट। इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, बाउंड ऑफ हिज लेग्स, फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर। ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को फेंकी थी और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए अंतिम क्षण में सीधे जा टकराई मिडल ऑफ स्टंप पर। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था। और इसी के साथ मंजुरात का विकेट गिर चुका है। तो अल्ताफ वालपाड़ी पहले ओवर में 8 रन बटोरने के बाद शरण की गेंद पर बोल्ड आउट हुए थे। और यहां पर छक्का बटोरने के बाद मंजुनाथ का विकेट यहां पर गिर चुका है। 8 रन मंजुनाथ में 20 ओवर में बटोरे और उनका भी विकेट बोल्ड आउट के रूप में गिर चुका है। इस बार गेंदबाज थे मुबीर। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो इंतजार है इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का। और जहां तक सवाल है ओवर्स का, तो इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनके पारी में। नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ यहाँ पर नवाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। रवि पडयूर इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और मुबीर इस वक्त अपनी अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नवाज इस वक्त सामना करते हुए निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त केसीसीआर कदरी को चाहिए एक साझेदारी, क्योंकि दोनों आरंभिक बल्लेबाज 17 रनों पर पेविलियन वापस इस वक्त लौट चुके हैं। और इस वक्त क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की। और गेंदबाज मुबीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से पैडल स्वीप किया खूबसूरती के साथ, लेकिन गेंद में ज़्यादा रफ्तार नहीं। और जब तक गेंद को स्कोर लेग पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। रवि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और मुबीर की ओर की अगली गेंद रवि के लिए ऑन साइड पर उछाला, बिग वन, इट्स गॉन मेनी अ माइल्स, hit that one pretty hard, just got that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style over long on fence for a huge one. Just look at this, गेंद वृक्ष के डाल पर टिप्पा खाने के बाद टकराने के बाद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर जाकर गिरी है।
और अपनी पहली गेंद पर छक्का इस वक्त झड़ चुके हैं रवि अपने इरादों को यहां पर बुलंद करते हुए। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट मुबीर स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर। 2 छक्के इस ओवर में मुबीर अब तक प्रदान कर चुके हैं। दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। Absolutely perfect strike, just rocked on the back foot and punched it away through the offside with the exquisite timing. Just look at this in the replay, and he finds the gap very well between point and a cover point, and because of that, he's got a boundary for that. तो कुल मिलाकर इस ओवर में रन्स बने 20 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। और निस्संदेह यहाँ पर इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा कि केसीसीआर कदरी मेड अ टेरिफिक स्टार्ट। सो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर सतीश इन केसीसीआर कदरी's पॉइंट ऑफ व्यू गेम 20 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। और इस ओवर की बदौलत अब मैं कहूंगा केसीसीआर कदरी 2 पावर प्ले ओवर का पूर्ण यहाँ पर लाभ उठा चुका है उनके बल्लेबाज। Absolutely, Gopi. This is a game plan, isn't it? And KCR Kadri knows that the first 2 overs of the power play is going to be more important for them to get the runs. That's why they're not really bothered about the wickets, what's fallen, 2 wickets. Because everyone knows that they need to get the wickets. After having such a good batting department, and KCR Kadri knows that they need to destroy the first 2 overs. And second over, outstanding Gopi, Ravi Paddayuru, the way that he's facing his first delivery, and he's dispatching that one to mid-wicket region. You know exactly that there's 2 deliveries remaining, and one which is played down to deep extra cover boundary for 4 runs. With that couple of 1-6 and boundary score, I think they got what they really wanted. This is absolutely game plan, Gopi, and they are really played a very good game of cricket here. So 28 for the loss of 2 wicket. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त। और जहां तक सवाल है अश्विन का, तो अश्विन इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हैं। पहली गेंद थी इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की और कुछ बातचीत करने के बाद यहां पर दोनों बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए अश्विन तमन्ना, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और अगली गेंद इस वक्त लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में। 1 रन मिलेगा और 1 रन नहीं मिलेगा, गेंद पहुंच चुकी है मिड ऑफ पर और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। अश्विन एक बार फिर से तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, फुल टॉस, टॉप एज, गेंद पहुंची शॉट फाइनल की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रन पर। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है अश्विन का, जिसमें सिर्फ 1 रन वो पहले 3 गेंदों में दे चुके हैं। और रवि पड्डायूर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, परफेक्ट लेग कटर दिस टाइम, बट द बॉल मिसिंग जस्ट outside the off stump after being turned a little bit at the last moment, just beaten by that turn by the batsman Ravi Paddayur, and the scoreboard stays at 29 for the loss of 2 wicket. 29 for the loss of 2 wicket, and this is the 3rd over in progress. Lofted, this time he finds the gap as well, and it's gone over the fence for a boundary. Just played that one with a twisted bat and finds the gap as well. Perfect struck this time, came from the bat of Ravi Paddayur. और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन. He just played that one with the exquisite timings at the last moment, and he's got the boundary for that. तो रनों का बहाव इस वक्त जारी केसीसीआर कदरी का, 33 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और अश्विन इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। रवि पड्डायूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, अश्विन गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को साइड पर स्विंग किया, हाफ स्टॉप, मौका जरूर था लेकिन फीडर चुके, गेंद जाती हुई डीप विकेट पर। और इस बीच 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 35 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। तो पहला बेहतर ओवर अगर टॉर्पेडोज खाना के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 7 रन बने, 7 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, और 3 ओवर के बाद 35 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। और सतीश, आइए आपको बुलाते हैं माइक्रोफोन पर। आज पहली बार 35 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। एब्सोल्युटली टेरिफिक स्टार्ट एंड अ टेरिफिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर केसीसीआर कदरी। और मैं समझता हूं 3 ओवर में 35 रन जो केसीसीआर कदरी जोड़ चुका, निस्संदेह यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना के ऊपर के दबाव को और बढ़ा चुका है। तो जहां तक सवाल है इस वक्त
टॉर्पेडोज काना का, तो इस वक्त उन्हें कम बैक कर रहा है बचे हुए 3 ओवर में। और मैं समझता हूँ कम बैक करने के लिए इस वक्त उन्हें पारी के द्वितीयार्ध में जीत और मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए चरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और देखते हैं क्या होता है उनके पारी में। तो आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर अब मैं सतीश को बुलाना चाहूंगा। ये सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So, what an explosive start here for KCCR Kadri. And first ball of the over number 4th, and batsman went for the reverse sweep ball well within the reach of the batters, so that no question of calling that wide. And dotted delivery to start with Sharan again from the far end. Right above the wicket balls. Nawaz looking for the improvisation, but didn't got enough bat onto that. He got a single for that. Short fine leg fielder. Bashit fields the ball, and scoreboard numbers on to 36 for the loss of 2 wickets. So Nawaz know exactly what to do in this situation when Ravi Padayuri is in such a fantastic form he has got. And after that, KCCR Kadri lifted that prestigious RRP Memorial Trophy, UFC trophy. Looks like its body language is so different. That's all happening when you're winning big titles, and it's going to be a level of confidence is always going to be a galvanizing. Here again, right arm over the wicket, batsman Ravi Padayur again driving the ball so beautifully, but this time lack of placement, ball went straight to the hands of short extra cover, and there is no chance at all for any run in the over number 4 is in progress. Again, right arm over the wicket went for the expansive slog sweep shot in that occasion, but ball which is missing the bat, and I think Sharan is doing a right job. He's been a little bit expensive in the first over. He conceded 8 valuable runs for the opposition, but I think after that, in this particular over, he's looked so good and different. Actually, he's just changing his bowling end, and that was really helping him. Again, they're going for the quick single, chance of run out in the non-strikers end. And now everyone is shouting to Sharan, why you are catching the ball in front of a stump. But even though, I think even though it's behind the stump, might be Ravi Salyan definitely going to be a safe. Because there's a long way to go as far as Ashwin is trying for the run out in the non-strikers end. The distance is concerned from third man to short third man to non-strikers end. It's going to be a long distance. Again, Nawaz improvising that one by playing the reverse stroke. Good comeback here by Sharan. Absolutely good comeback here by Torpedoes Khana. After that, the power play over, which is so expensive, then Ashwin came in and bowled 7 runs over. Then afterwards Sharan came in, and then he bowled 1 more good over. So 4 overs completed, but still it's good score on the board. KCCR Kadri has got a 38 valuable runs for the loss of 2 wickets. I think the Torpedoes Khana just missing the regular captain. We're not watching him. Imtiaz is not there. I think so, yes. Imtiaz missing this match. I don't know what is the reason that Imtiaz is missing here, but maybe there's some reason, the injuries for maybe looks like just a report came here. He's suffering from the fever, so that he is missing this match for Torpedoes Khana. Ashwin bowls again. Good start from the over number the second of Ashwin, and over number 5th of the innings of KCCR Kadri. Nawaz went for the reverse stroke, but this time he missed it completely. And look at the wind is passing in the ground. Absolutely strong breeze here. Beautifully bowled. Wicketkeeper behind the stump. Pratap kept the ball. Now batsman started to feel the pressure. It's all happening, isn't it? After getting a very good start from the bat, the explosive start from the first 2 overs from the top order batsman, and Ravi Salyan Padayuri is a 1, and then of course Manjunath has got a mighty stroke over a deep long off for a 6. And after that, so all we can see that Torpedoes Khana bowlers really back here. That this time far away down the leg stump, wicketkeeper fails to collect the ball. 1+1. This is a frustration. This is a frustration for Torpedoes Khana, because after that 2 dotted deliveries, all the efforts are gone in vain, because they got 2 gifted runs. 40 for the loss of 2 wickets. 2 dotted deliveries, but because of 1 mistake by Ashwin, opposition once again has got a runs what they really wanted in this particular over.
Again, Ashwin bowling away from us. Right arm over the wicket to Salyan. Salyan going for the stroke on the onside region. That ball just passing around his legs. And wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. 40 for the loss of 2 wicket. Ashwin, Taman. Beautiful delivery. This is one of the weapon what Ashwin usually using when the batsman is going for the big shot. This time Ravi looks like he wanted to play the slog sweep shot, but he's not choosing a right delivery for that. Absolutely, it's a wrong shot selection. Have a look at that one. The ball pitched in a line, and Ashwin doesn't know about that ball. He's just asking umpire for the leg before we get ball, but missing everything. This bat and pad, but ball not missing the stump of Ravi Salyan. So Ravi Salyan is back into pavilion after he's contributed very well from the bat, but I think he's out in a wrong time. He's got out in a wrong time when is some acceleration which is required for Kadri is back into pavilion. So second match, it's going to be one more good match is coming up in front of you. KFC Kodikal versus Gori Young Boys. So that I request all the players of both the teams kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. So fifth over is in progress. Look at the breeze out here. Absolutely totally different weather condition today. Absolutely strong wind in the ground. Again outside on black stamp, well within the reach of the batter. The new batsman Ashok wanted to swing that on the outside region. Ashok is one of the good player in the side, but this time he's just missing it completely. Maybe the encouragement for him to that ball, the direction of the wind. He wanted to play the ball in the onside region, but he missed it completely. Ashok, oh, what a shot, but straight to the hands of fielder. Can you believe this? Magnificently struck. I'm really loves the way Ashwin appreciating the batsman. Even Ashwin has got a wicket, but he's saying that Ashok, wow, the bad luck man, I have a fielder for that. I have a fielder for you for that kicking strokes down at third man. Even though Ashok is hit that one right from the middle of the bat, rocketing towards the hands of the fielder. And unfortunately, Ashok is back into pavilion and Ashwin strikes. What a fantastic over which is comes in and here. Just a couple of runs, that is in the form of wide. Otherwise, it's going to be a maiden over. This is Ashwin for you. 8 runs in the first over, 2 runs in the second over. Still, it's going to be a economy. It's just under 6. The 5 runs per over. And he got really back in the game in his favorite ground, UCG ground. 40 for the loss of 4 wicket. Now, last over remaining. Rilwan brought into attack. Rilwan bowling round the wicket. Last over. Balls are reaching for the delivery. Dilip is the batsman. Is a little bit correction. Nawaz has got a single for that. Dilip is a new batsman, just came into middle. Very successful captain, isn't it? One who got the very prestigious, the World Cup of Underarm cricket, RRP Memorial UFC trophy. First time in the history of KCCR Kadri, they won the title here in UCG cricket ground. And this contribution is a lot for the success being the captain of the side. Wait and see how we'll going to deal with the 5 balls. Right arm over the wicket. This time improvisation. It misfielded that one. Ball just passing under the trying hands of Ashwin. Rare picture in the field when Ashwin doing that much of mistakes. Have a look at that one. Improvisation means he's a very quickly played that one. And Ashwin couldn't manage to bend quickly to that line of the ball. Ball just passing is under his hand. And got a very important boundary. Captain of the side. 45 for the loss of 4 wicket. Now, third man fielder going back. Third man fielder going back to deep third man. Long off fielder coming inside the ring in the mid-off region. Dilip is on strike now. Rilwan is on attack. Right above the wicket, third time this over. This time, what a shot. This time it's going to be a maximum. I think so. Yes, it does. What a fantastic strike there from the captain of the side. This is what Dilip for you as the captain of the side. Magnificent last strike. I think this is a stroke he played only because the mid-off which is up in the circle.
So he did not really looking for the six. He only wanted to get over the top of that midfielder so that he can get back. But he got enough bat onto that. He got a timing. And look at the today's wind direction here in UCG cricket ground. This is one of the big factor today. The huge wind passing in the UCG cricket ground, helping the batsman to get the distance. 50 comes up. Now again the third man coming up, mid-off going back. 15 sixes, 24 boundaries so far in this tournament. Improvisation again by Bagley, the reverse rip. Again, the excellent placement. What innings is playing here? The captain of KCC Arkad is getting a very, very valuable runs. In just the 3 balls, he got a 12 runs at the strike rate of exactly 400. The kind of the finish which is required for KCC Arkad, the captain leading from the front. 2 balls remaining. Frustration and the pressure. 1+1 for the KCC Kadri. All are the bonus run. 2 extras. 55. Good score on the board for KCC Kadri. Torpedoes might be looking little bit under pressure. They're looking under pressure. Mid-off once again coming inside. Long off coming inside towards the mid-off. Deep cover point going towards the deep extra cover. Short third man going back to deep third man. Mid wicket is there. Long on is there. And square leg is there. This time going for the drive. Nawaz just picked up a single for that. Last delivery remaining. 56 for the loss of 4 wickets. Absolutely huge score on the board. I think it's going to be the highest total score of the tournament. The 56 by KCCR Kadri. Driven, up and over, up and over. This is what a fantastic batting display here from the captain of the side. He finishes the innings in a style. And what a last over it's going to be. Very expensive over ball by Rilwan. That's only because of Dilip, the captain of the side. Remember the name here, the Dilip is the captain of KCCR Kadri and really scoring the runs in the last over. 20 runs came from that over. 20 runs came from that over. And have a look at that, the batting performance of KCCR Kadri. The match summary, the batting summary. And Altaf Padi and Manjunath starts with some explosive batting. Ravi is continue that one. But Dilip is finished well. They starts well, they progressed well, they finished well. And they got 60 valuable runs by losing 4 wickets. And they set a target of 61 to win the match. Now, they scored runs in 10 runs per hour. And required run rate for Torpedoes Khana is 10.20 runs per hour. And it's going to be 10.177 runs per hour. It's going to be very, very difficult but not impossible.
which very much suitable for the batsman. Even the condition, the wind, which is really helping the batsmen of KCCR Kadri, isn't it? Because some unbelievable strokes, even wind is a little bit helped them to get the distance. So altogether, Gopi, KCCR Kadri got what they really wanted against one of the top team, Torpedoes Khana. What do you think? It's a 10 point, just over 10 runs per over is the required run rate here. And KCCR Kadri might be thinking about it, might be the good total to defend against against Torpedoes Khana. But I think, Gopi, Torpedoes Khana has got some good batting department as well, isn't it? Especially Tanveer is once again, even Imtiaz is missing this match, but I think the Tanveer is a perfect replacement for Imtiaz. So that is just came into the bat as an opener, and having some good batting department of Torpedoes Khana, we thinking about this match definitely going to be more interesting. Exactly, Satish. जैसा कि आपने कहा, this match is going to be more interesting. और जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचने का, तो एक विस्फोटक शुरुआत की इस वक्त जरूरत। ये गेंद इस बार पहली गेंद पर विकेट गिर चुका है। अशरफ की पारी समाप्त बॉल्ड आउट के रूप में, और पहली गेंद पर टॉर्पेडोज खाना को यहां पर झटका लग चुका है। गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे इस वक्त आई थी और सीधे टकराई बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद ऑफ स्टंप पर, और 0 पर पहला विकेट खो चुका है। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, टॉर्पेडोज खाना स्टिल हैव दे गॉट अ स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, और यहां पर पहला विकेट गिर चुका है जरूर, लेकिन इस बार उम्मीदें अभी भी जिंदा है उनके, क्योंकि उनके पास 3-4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो मैच एक बार अपना लय प्राप्त कर ले, अपना रिदम प्राप्त कर ले, तो मैच के नक्शा पलटने की क्षमता रखते हैं। तो यहां पर पहली गेंद पर केसीसीआर कदरी ने विकेट इस वक्त प्राप्त किया है, और निस्संदेह ये उनके लिए बिग बूस्ट यहां पर साबित होगा। Absolutely, Gopi, and what a captain is having a day, isn't it, Gopi? From the bat he's contributed some runs, 17 runs, quick fired 70 runs. When the last over he got that runs, and now just came into ball and he got a wicket for that, and that was a perfect captain's performance here from Dilip. First ball wicket definitely going to be a benefits for the fielding team. एग्जैक्टली सतीश, दिलीप ने न सिर्फ 4 गेंदों पर 16 रन उन्होंने बनाए, बल्कि विकेट भी अपनी पहली गेंद पर प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाजी में। तो कप्तानी की भांति अपनी टीम को वो इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इंप्रोवाइजेशन करते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो पहली गेंद पर विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव था, उस दबाव को इस वक्त बल्लेबाज कुछ हद तक उठा चुके हैं। बासित रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को स्कूप किया इस वक्त फील्ड क्लियर करते हुए, और गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक। तो ऐसे ही बल्लेबाज इस वक्त अपनानी है टॉर्पेडोज खाना को, अगर उन्हें यहाँ पर इस मैच में मंजिल की ओर अग्रसर होना है। तो इस वक्त जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दिलीप दाइना तो बर्दा विकेट, ये गेंद बासित के लिए चिप किया, लंबा पर मौका हो सकता है फील्डर के लिए, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन बाय द बॉडी स्लॉग ऑफ फील्डर। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच। अंतिम क्षण में अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी, और जैसे ही गेंद को लपका उन्होंने जाना कि मैं सीमा रेखा को छूने वाला हूं, मेरे पैर सीमा रेखा को छूने वाले, अपने आप को संभाला, शरीर पर संतुलन कायम रखा, और यहां पर इस कैच को बेहतरीन तरीके से लपका। हैव अ लुक एट दिस, देखिए किस तरीके से गिरते गिरते बचे सीमा रेखा के ऊपर, और जो फील्डर थे अमन फील्डर, और मैं कहूंगा सतीश ये एक बेहतर कैच विद अ परफेक्ट बैलेंस। Absolutely, Gopi, the perfect balance, isn't it? Not only you need to two things have to maintain simultaneously. One is you need to see the ball you need to catch, and second one you need not touch that ball, and this is outstanding, isn't it? Body balance is outstanding, and it just controlling the speed, that is so important. Controlling the speed where he is charging in from the deep long arm, and you need to control that speed, which is need to minimize when the ball which is coming to his direction. This is outstanding catch, Gopi. It's absolutely perfect example of how to take the catch in the deep when the ball is going away from you. Absolutely brilliant catch. This is one of the best catch of the tournament. Exactly, सतीश, यहाँ पर निस्संदेह आपको कभी भी दौड़ते हुए अगर डीप पर सीमा रेखा अंदर कैच लपकनी है तो अपना शरीर का संतुलन कायम रखना जरूरी होता है, और यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से इस कैच को लपका अपना शरीर पर संतुलन कायम रखते हुए ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ KFC ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
को। अगली गेंद, ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा प्रताप, एक और बेहतर बल्लेबाज इस वक्त जिनका आगमन हो चुका है। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त खेला था, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला और इस एक रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह टॉर्पेडोज काना को इस वक्त चाहिए एक पार्टनरशिप, ना सिर्फ साझेदारी बल्कि एक तेज साझेदारी की उन्हें जरूरत है। तनवीर एक और बेहतर बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और दिलीप इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद तनवीर के लिए, गेंद को छाला, गेंद हवे में, लेकिन फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर मंजुनाथ के लिए कुछ हद तक मौका था लेकिन मुश्किल सा, जब तक गेंद तक वो पहुंचे गेंद उनके आगे टिप्पा खा चुकी थी। गेंद को बैकअप किया गया एक्स्ट्रा कवर पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और दिलीप एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए प्रताप सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद प्रताप के लिए, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, मत स्ट्रेटर लाइन ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और एक बेहतरीन ओवर के समाप्ति। और सतीश दिलीप का जहां तक सवाल है, कप्तानी की बात ही, बेहतर बल्लेबाजी उन्होंने की, 16 रन बनाए सिर्फ 4 गेंदों पर 400 स्ट्राइक रेट की मदद से। अब गेंदबाजी में भी बेहतर शुरुआत दे चुके हैं, 2 विकेटें पहले और में अशरफ और बासित का प्राप्त कर चुके हैं और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा एक माझी के रूप में अपने टीम की नैया को वो सही तक इस वक्त ले जाते हुए। Exactly, Gopi. Brilliant captaincy, isn't it? And that's why the captain is always going to be one of the important, unique part of the team, isn't it? Whenever the captain performs, is automatically the others will going to get a lot of confidence back in the team. So he's leading from the front, not only in this tournament, Gopi. I'm watching him when he's got the opportunity to lead his team. He's leading from the front. He's not feeling any pressure at all. Probably some of the players, when extra responsibility is given for the players, then we are seeing that the performance is coming down. But here is, after giving responsibility, Dilip is galvanized his performance level, and that was really good to see for KCR Kadri, that the captain is always leading from the front. Exactly, Satish. यहाँ पर धनुष गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं, ऑफ से काफी बाहर की ओर निकलते हुए एंड स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड। और दिलीप ने जो शुरुआत गेंदबाजी में दी है और देखना है कि आने वाले ओवर्स में क्या वो शुरुआत वो बेहतरीन गेंदबाजी के सिलसिले को गेंदबाज केसीसीआर कदरी के बरकरार रख पाते हैं या नहीं। तो धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज तनवीर सामना करने के लिए तैयार। ओवर की अगली गेंद, धनुष फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर जारी और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त धनुष तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट क्रीज के कोने से गेंद तनवीर के लिए, ऑफ सबसे काफी बाहर, 2 लगातार वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं धनुष अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तराशते हुए और यहाँ पर स्कोर 1 वाइड के रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए धनुष, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तनवीर के लिए। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची इस वक्त सिली मिडाउन पर। सही तरीके से तनवीर ने प्रताप को इस वक्त वापस भेजा, हालांकि प्रताप 2 कदम आगे जरूर बढ़ा चुके थे लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद सिली मिडाउन पर फील्ड की जा चुकी है और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तनवीर के लिए, यह गेंद स्विंग किया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और तनवीर की पारी यहां पर समाप्त। तनवीर का जो पसंदीदा स्ट्रोक है पुल करने का, ऑन साइड पर घुटनों के बल बैठते हुए, और यहां पर उन्होंने गेंद को खेला तो जरूर लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने कोई गलती नहीं की। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से देखिए इस वक्त गेंद को उछाला था, स्विंग किया था ऑन साइड पर लेकिन प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। 8 runs on the board, 3 wickets down. This is an absolutely testing time continuing here for the batsmen of Torpedoes Kana. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गेंदबाज केसीसीआर कदरी के बुलंदियों पर इस वक्त नजर आते हुए, दे आर लुकिंग राइट ऑन टॉप। एक और बेहतर बल्लेबाज टॉर्पेडोज काना की ओर से अकरम का आगमन यहां पर होता हुआ, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और इस वक्त यहां पर उनकी जरूरत है टॉर्पेडोज काना को और देखना यह कि वो किस तरीके की बल्लेबाज यहां पर अपनाते हैं अपने टीम के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाज धनुष इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अकरम के लिए यह गेंद बोल्ड, पहली गेंद पर विकेट गिर चुका है, ऑफ कटर गेंद और बल्ले और पैर के बीच में अंतर और
उस अंतर को चीरती हुई गेंद टकराई स्टंप्स पर, बेल से डिस्टर्ब होते हुए, और गोल्डन डक के रूप में अकरम का विकेट गिर चुका है। और सतीश, इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा टोरपेडोस काना की पारी यहाँ पर लड़खड़ाती हुई इस मैदान पर। Absolutely, Gopi. It's a huge wicket, isn't it? Akram is a man in form for Torpedoes Corner. There's so many in this particular season. He contributed a lot from the bat. Whenever his team is wanted some the big shot, whenever team is wanted some partnership, Akram is always leading from the front as an experienced campaigner. I think Gopi, this man is outstanding. Dilip. Little correction, Dhanush is young, talented bowler, Gopi, but the way that is performing, unbelievable. In last two tournaments, I am seeing him, Gopi, is really great attitude and great character he has got. Absolutely is going to be a future bowler in underarm cricket. Exactly, Satish. Hat-trick and he's got the hat-trick. He's got the hat-trick. Absolutely fantastic bowling. Perfect off cutter, and he just got the rid of Rilwan. So absolutely magnificent bowling performance continuing here from the bowlers of KCCR Kadri. और यहाँ पर देखिए हैट्रिक गेंद किस तरीके से फेंकी थी धनुष ने, गेंद बिल्कुल जमीन के साथ है, परफेक्ट ऑफ कटर, एक्स्ट्रा क्विकर, और ये गेंद बल्ले और पैर को चीरती हुई निकली, लेग स्टंप पर जा टकराई, और इसी के साथ धनुष अपना हैट्रिक यहाँ पर परिपूर्ण कर चुके हैं। और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अब इस विकेट के पतन के साथ टॉर्पेडोस का ना और भी संकट की स्थिति में नजर आता हुआ सतीश। Absolutely. Just have a look at that last dismissal, Gopi. Let's look at that. I want to see all the hat-trick wickets of Dhanush, because this is not a simple half-cutter, Gopi. The first one is, of course, the batsman dragging that one outside the run-off stump. Nothing much special in that delivery. There's a mistake of the batsman that he was drags that one. But two deliveries, Gopi. One which is, just have a look at that one. There's a deviation. It's not a simple half-cutter. Extra turn in that ball, Gopi. It was really confusing the batsman. They're playing for the normal half-cutter, but have a look at that one. Extra turn, deviation, extra turn. And because of that extra turn what Dhanush has got, he got the 3 valuable wickets and he deserved that hat-trick. एग्जैक्टली सतीश, 3 बेहतर गेंदें, उनमें से 2 परफेक्ट डिलीवरी। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के दिशा में। नए बल्लेबाज ने गेंद पहुंची इस वक्त 9 रनों पर 1 रन के साथ 5 विकेट के नुकसान पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। दिस इज एन एब्सोल्युटली शैकलिंग प्रोग्रेस किया फॉर टॉर्पेडोस का ना। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और यहाँ पर गेंदबाज धनुष बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए, हालांकि पहले 2 वाइड के साथ उन्होंने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए 3 लगातार विकेट हैट्रिक के रूप में वो प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार प्रताप इस वक्त सामना करते हुए, दाहिना तो द विकेट इस वक्त। ये गेंद धनुष की गेंद के इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा प्रताप ने, गेंद पहुंची पैरों पर टकराने के बाद गली की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। और अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, टॉर्पेडोस काना को कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है। Well, Gopi, after losing 5 wickets, suddenly it's a very difficult task, isn't it, for Torpedoes Corner? Because asking run rate is climbing up, isn't it? 12.75 runs per over, the required run rate, and against the KCCR Kadri's bowling department. Because I already mentioned, Gopi, the KCCR Kadri team is looking so different after winning the big title of UFC RRP Memorial Trophy. The level of confidence is so important here, isn't it? Just in a naked eye, when you are comparison, when they came each other in the first match, looks like Torpedoes and Kana looks like in a naked eye is a better team than the KCCR Kadri. But I am talking about KCCR Kadri in particular season, Gopi, they are outstanding. Even though they fails to lift limited over matches trophies, but performance, all our performance of KCCR Kadri is much better than what they got in the last 3-4 years back. And they are in a perfect form. That's why Torpedoes Corner is struggling. एग्जैक्टली सतीश, इस बार गेंद को हल्के से पुश कर दिया इस वक्त प्रताप ने 1 रन के लिए। और बिल्कुल सतीश सही बात है, पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में उनका बेहतर प्रदर्शन रहा है। हालांकि लिमिटेड ओवर्स के खिताब वो उन्होंने प्राप्त नहीं किए, लेकिन आरआरपी मेमोरियल 30 ओवर फॉर्मेट जो अंडरआर्म क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहलाता है, उस प्रतिष्ठित खिताब को अर्जित करने के बाद, प्राप्त करने के बाद उनका आत्मविश्वास सहज रूप से बढ़ चुका है और उसके बाद वो हर श्रृंखला में बेहतर प्रदर्शन देते हुए, और यहाँ पर वो इस वक्त बुलंदियों पर नजर आते हुए, तो इस वक्त स्कोर बढ़ चुका है 11 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर शुरू हो चुका। दिलीप एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी
गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फुल टॉस, जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली, ओह दिस कुड बी ट्रबल। उन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है ओवर थ्रो के रूप में। तो 22 का इशारा अंपायर कर 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। प्रताप इस वक्त क्रीज पर मौजूद, नॉन स्ट्राइकर पर इस वक्त जुनैद मौजूद, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो दिलीप इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रताप के लिए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मिड ऑफ फील्डर को इस वक्त आगे बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर। लॉन्ग ऑफ के फील्डर को आगे बुला ले गए मिड ऑफ पर 20 गज के दायरे के अंदर। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, डीप मिड विकेट पर फील्डर पहुंचे, दूसरा रन लेना चाहते हैं, रन आउट का खतरा प्रताप के लिए, बैकहैंड थ्रो विकेट कीपर द्वारा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन इस बीच पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली अ स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ टॉर्पेडोज खाना। अगली गेंद दिलीप दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर इनटू द गैप एज वेल, वन बाउंस इनटू द फेंस। परफेक्ट स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ प्रताप। इस बार खाली जगह उन्होंने चुनी थी वाइड लॉन्ग और मिड विकेट के बीच, और देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, ही जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और एक जो वहां पर प्रेक्षक जो बैठे हुए थे उन्होंने इस गेंद को लपक लिया अंतिम क्षण में आफ्टर फर्स्ट बाउंस, और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, एक कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब टॉर्पेडोज खाना को इस मैच में वापस ला सकती है, और उस चमत्कारी बल्लेबाज की तलाश में इस वक्त प्रताप अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दिलीप दाहिना हाथ ओवर द विकेट प्रताप के लिए, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला कवर पॉइंट पर, मौका जी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है इस वक्त 6 रनों के लिए। हवे के रुख के साथ इस स्ट्रोक को खेला थी, जस्ट प्ले दैट वन विद द विंड। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, गेंद हालांकि टॉप एज पर जरूर टकराई थी, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था, हवे के रुख के साथ सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टिप्पा खाए, और इस छक्के के साथ प्रताप टॉर्पेडोज खाना की उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं, और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 37 दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 19 डिलीवरीज। और इस बीच गेंदबाज धनुष अपनी ओर की अगली गेंद, माफ कीजिए दिलीप अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रताप के लिए, यह गेंद दिलीप की इस वक्त लेग स्टंप से बाहर, गेंद को फ्लिक करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में, 1 रन मिलेगा। प्रताप की स्ट्राइक, प्रताप स्ट्राइक अपने पास रख चुके हैं अगले ओवर के लिए, और जहां तक सवाल है स्कोर 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 36 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 18 बॉल, दैट मींस इन 3 ओवर्स एक्जैक्टली 12 रन रिक्वायर्ड। और सतीश यहां पर पिछले ओवर में जो प्रताप ने बल्लेबाजी दिखाई थी, अगर इस ओवर में या फिर इस ओवर में और अगले ओवर में, खासकर अगले 1 या 2 ओवर में उसी तरीके की बल्लेबाजी वो दिखाते हैं, कम से कम 12 से 15 रन 1 या 2 ओवर में बटोरते हैं, हर ओवर में बटोरते हैं, तो निस्संदेह इस मैच में टॉर्पेडोज खाना वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ पर इतने रन बटोरने के लिए उनके बल्लेबाजों को जी तो मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी होगी। लक्ष्य मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के लिए, क्यों सतीश? So, well, thank you very much, Gopi. And absolutely, you're right. The task definitely going to be a little bit difficult one. And difficult road often leads to beautiful destination. And here is a destination for two batters out there in the middle. One is Pratap, is looking so good in the middle. In the previous over, he just opened his wings with terrific cricketing strokes. So 1 boundary and a 6 with a switch it. And that shows, Gopi, the condition, still it was encouragement for the batters, because it's a windy morning. It's not a usual morning what we're witnessing in the UCG cricket ground, but it's a windy morning. Windy morning in the sense, Gopi, probably it's favorable for the batsman, isn't it? With the direction of the wind, if the batsman able to hit the big shots, definitely it's going to be a very good sign for the batters. They got opportunity. Still, I think, Gopi, 1 over, 1 productive over will going to change the complexion of the match. Of course, the runs required per over is 12 runs per over, but it's manageable. It's manageable because of the condition of the ground, the weather condition, the condition of the pitch, even I think the condition of the ball which is used for this particular tournament.
So a little bit discussion is going between umpires versus the players of both the team. Might be the problem of the bat which is used by Pratap, and I think the color of the bat which is going to be a problem here. So that after the Kadri cricketers are just claiming that they are not allowed to use that bat. Why to allow the bat for the opposition team? So that clarification which is made here. And Pratap just changing his bat. Everything looks to be fine here. 25 for the loss of 5 wicket, 27 fours and 16 sixes. And Gopi, one more thing here is to see that that 61 runs which is scored by KCR Kadre in just 19 deliveries and 17 dot balls. That shows, Gopi, it's all about hitting a big shots. It's not tough here for the batsman to get the clear the ground. Once he got the ball right from the middle of the bat, batsman can get big shots here. So that is very important for Tarparas Khana to believe with their believe with their potential. Now Dhanush came into ball. He's the one who got a hat trick in the previous over. Right arm over the wicket. To just beautifully bowled there by Dhanush. She's been outstanding, isn't it? And leg by call by umpire. Again, Pratap is going for the expansive slog sweep shot, and their just ball is hitting his leg. We can see that they are all the real estate group. Absolutely done a great job. They are the one behind the success of this cricket tournament. Absolutely one of the disciplined cricket tournament I witnessed in this particular UCG cricket. One of the best tournament, I want to say. And again nicely to deep long on region for a single. With that single, scored moves on to 27 for the loss of 5 wicket. These are all the active members. They are all the active members of real estate group registered Bejai, because they are really thankful and grateful for the hospitality and generosity they given for all the officials and for the players. Thank you very much once again for all the members of real estate group registered Bejai. Meanwhile, one more single has been taken there. Oh my goodness. Oh my goodness. If it is a directed, I think his brother is struggling to reach his home, isn't it? He's struggling to reach his home if it is a directed. But Ravi Salian may be asking why no one there to collect the throw from me. If it's anyone behind the stumps, it's got chance of run out. But probably whenever the medium fast bowler, after the run off, the follow through is going to be a little bit long. So very difficult for a bowler to come back behind the stumps. Again, nicely bowled, and unforced error from the captain of the side, Dilip in the negation. Tried to charge into that one, try to make the run out. But I think more than the run out, I think saving the runs is so important here. And scoreboard now moves on to 30 for the loss of 5 wicket. So we are talking about that is one of the simple mistake, but sometimes that simple mistake will going to cost a lot when the strike is going to rotate it. Dhanush bowls. This time he lofted. I don't think we'll got enough bat onto that, but ball will going to land it safely. No! Oh, what a catch! This is outstanding combination catch. Once again, Prasad and Aman. This is a combination catch. This is what you call the combination catch, but I think it's a lucky catch as well. This is a lucky catch as well. I will look at that one. What really happened? Batsman didn't time it very well. The fielder from the mid wicket almost charging to the ball. Once he looks at ball, he's just going away from the fielder. He got a ball in his hand, but hitting a farm, slipped out of his hand. And have a look at that. This is what you call the presence of mind from the another fielder. The Aman once again got a fantastic catch. He is really having a great tournament in the field. After taking one spectacular catch in the Deepak Sakawa, now once again he is responsible for another catch. So catches win the matches, one of the greatest long on in cricket. And Aman is justifying that one after that combination catch. Prasad and Aman did a great job. 30 for the loss of 6 wickets. Totally, Aman picked up 3 catches in this particular match. He is responsible for the dismissal of 3 wickets of their opposition. Ashwin Taman is a new batsman in. Dhanush got 1 more wicket, 4th wicket for him. This time again, lovely off cutter. This is a really good one there from Dhanush. Absolutely consistency. The consistency is going to be a success. The key for the success of Dhanush. One more fantastic over as comes to an end. And after completion of over number
4 and searching for the right target. 30 for the loss of right track, 30 for the loss of 6 wicket, and Gopi 12 balls, 31 runs required for the victory. But have a look at the bowling figure of that young man. 2 overs, 6 runs, 4 wickets. Absolutely match-winning performance, isn't it? 3 economy rate, and in 6 overs game against the teams like Tarparas Khana, unbelievable. It's incredible performance from Dhanush. एग्जैक्टली सतीश एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस जो ओवर कोई मेडर नहीं 6 रन 4 विकेट 6 ओवर के फॉर्मेट में ये बेहतरीन गेंदबाजी कहलाया गया और अगेंस्ट टॉर्पेडोज खाना के सशक्त गेंदबाजी बल्लेबाजी के लाइनअप के खिलाफ अगर आप 4 विकेट उखाड़ते हैं सिर्फ 6 रन देकर अपने 2 ओवर के कोटे में तो निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी कहलाती है और यहाँ पर उनके इस मेहनत की बदौलत इस वक्त केसीआर कदरी इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ. Absolutely, it is a flum. Absolutely flum. No doubt at all. No doubt at all in that occasion because Pratap Shuffle, have a look at that, an initial moment. This is the initial moment of the batsman, isn't it? Of course, he's standing outside the line of leg stump, but while he is going for the drive, he's just the initial moment towards the middle stump. And once he misses the ball, then finding himself right in front of middle stump. And Satish strikes. Satish strikes with that beautiful off-cutter. It's a 30 for the loss of 7 wicket. Have a look at the wind. It's a strong wind is passing in the UCC cricket ground. Now I request the captain of Gori Young Boys, please report here for the toss. Gori Young Boys ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ. So 11 balls, 31 runs required for the victory. So here is bowler Satish bowling right arm over the wicket to Ashwin Kumar. Ashwin going for the drive, not getting that much of room enough to play the shot. Satish is doing a great job here. Satish getting the place in the cases haircut in the playing 11, the bowling department. He need to justify, and so far he's bowled 2 very good deliveries to the batter of Tarparas Khana. This time went for the reverse sweep, didn't got enough bat onto that, so that enough time for the batter to complete the single. With that single, Skoban Namuzan to 31 for the loss of 7 wickets. Still, it's a long way to go, isn't it? 61 means another 30 runs required for the victory in 9 deliveries. Tarparas Khana, they are in a deep, deep trouble. Satish, again from the far end, right arm over the wicket balls. Lovely off-cutter there from Satish. This is what the direction of the wind, sometimes helping some extra deviation, extra turn. Even umpires feeling a little bit difficult to keep their hats in their head because of the strong wind, which is almost looks like it's a difficult one. So Harish Padil, again, it's going to be a chance of run out in the last strikers and it's gone. One more wicket is back into pavilion, and this time Ashwin tried to hit that one between the gap, but ball went straight to the hands of short mid wicket. But Ashwin Kumar in the non-strikers end, he wanted a run because no other option at all. The do-or-die situation for the batters of Tarparas Khana. Now Tarparas Khana are looking in a serious trouble. 31 for the loss of 8 wicket. That's only because of a disciplined bowling performance by the bowlers of KCCR Kadri. They are defeated in every format, isn't it? Every department, whether it's a bowling, whether it's a fielding, whether it's a batting. The 3 important departments of the cricket, they defeated Tarparas Khana. That's why they are looking in a tough. That's why they are looking in a tough. Especially the Dhanush is the man who picked up 4 valuable wickets for just the 3 runs. It's unbelievable bowling performance by the youngster of KCCR Kadri, Dhanush, and captain of the side. Again going for the drive. Again mistiming that one, but probably there is a single here for the batter. It's going to be one more fantastic over which comes to an end. 32 for the loss of 8 wicket. Now last over remaining. The last over which is remaining of the innings of Tarparas Khana, but it looks like it's going to be a little bit difficult one. 29 runs required from last over. They needed all the deliveries they wanted to dispatch out of the park. But will it going to be a, yes, will it going to be a easy here? I don't think it's going to be that much of easy because even the new bowler, as the new bowler is introduced here by the captain of the side. Warm welcome for our former cricket, Mr. Bejai. He is one of the former cricketer what we are having, the Bejai. After a long time I am watching him, the Bejai, and I welcome him on behalf of all cricket lovers. Bejai for this prestigious cricket tournament, United Trophy 2023.
And here is again, right arm over the wicket, going for the drive. The ball just missing it. And down, I think. So one more addition. This time looks like they're crossing the time limit. They're crossing the time limit, so that as per the penalty, one fielder they need to keep inside the ring. Ethan, right arm over the wicket, balls, beautifully ball, absolutely fantastic leg cutter. So KC Sarkar is having some youngsters in the side, isn't it? Danush and Hitesh, Satish, everyone justifying. This time top edge, opportunity, one more wicket. Satish got the catch down at short cover point. It's a 33 for the loss of 9 wicket, and the over number last is in progress. Now it looks like just the formalities left in this game. 4 balls, they have to get another 28 runs to win this match. 4 sixes will not going to help Torpedoes Khana to win this match. That means, unless if any wide and no balls, I think the victory which is sure for KCCR Kadri. Hitesh right arm over the wicket to Sharan. Sharan this time up and over, and but not really getting that much of timing behind the stroke. And before the fielder from short extra cover to run back to field the ball, ample time for the batter to complete the single. With that single, scored moves on to 34 for the loss of 9 wicket in the over number last is in progress. Went for the reverse sweep, wide call by umpire. One more addition to total. Addition of that single, scored moves on to 35. Very, very dominated performance here from KCCR Kadri against Torpedoes Khana. Right arm over the wicket. Ball aim. That's it. Bundle out. Torpedoes Khana. The bundle out for 35 runs. It's absolutely clinical victory here for KCCR Kadri. Absolutely the clean victory. All department, whether the batting, bowling or fielding, and they are looking in a top in a 4 department, and they deserve this victory, KCCR Kadri. Congratulations, KCCR Kadri, for your outstanding performance. Hard luck, Torpedoes Khana. And the performance, of course, the bowling department might be the big problem. What happened for Torpedoes Khana is that they conceded a lot of runs. The 60, it was going to be a huge run. And if you wanted to chase those runs, I think they needed some good start. But all we can see that Torpedoes Khana couldn't manage to perform from the bat.
The big hand for Dilip is the one, the leading from the front and scoring a quick fired 16 runs in just 4 balls and 400 strike rate. It was unbelievable. And Lionel Pinto will going to present the man of the match award for the captain of KCCR Kadri. What a fantastic performance. What a fantastic captaincy here from the captain Lionel Pinto. At the same time, I request the losing team captain Torpedoes Khana idara nayaka kuda vedike barbeku. Tama representation memento vannu ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request the captain of Torpedoes Khana, kindly request you to collect your representation memento from our chief guest. So congratulations coming from all around for the wonderful performance by Dilip. He got the very attractive t-shirt and along with that some very good the cap. Now captain of Torpedoes Khana, Bashit, collecting the representation memento. Thank you very much Torpedoes Khana for coming here from long way, being the part of this cricket tournament. On behalf of organizer, we'd like to give special thanks to Torpedoes Khana as well. So now it's a time for the second match, and before the innings will going to start of team Gori Young Boys. A little correction. Before the innings of KFC Kodikal will going to start here, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. Thanks a lot. धन्यवाद सतीश. So what a match ended, which won by KCCR Kadri defeated Torpedoes Khana by a huge margin of 26 runs, and with that victory they are through to the next round of this competition. Next match, one more good match is now coming up. KFC Kodikal will take over Gori Young Boys. Gori Young Boys, after won the toss, they elected to field first, and now the first ball of the match is now coming up. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद. शकीर और ताजुद्दीन बेहतरीन आरंभिक जोड़ी. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो फयाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए मैच की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. तैनात ओवर द विकेट फयाज शाकिर के लिए. ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में. और एक बार मैदान की ओर नजर फिराए तो दर्शक इस मैदान पर इस वक्त दिखाई देते हुए धीरे धीरे मैदान पर भरते हुए, और भरनी भी चाहिए क्योंकि टॉप सीडेड टीम्स के मैचेस आज खेले जाने हैं. और इस बीच एक और बेहतर मैच दोनों टॉप सीडेड टीमों के बीच इस वक्त शुरू हो चुका है. केएफसी कोडिकल और गोरी यंग बॉयज के बीच पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर फयाज ने फेंकी थी, वाइड का इशारा हो चुका था. दूसरी गेंद लेकर इस वक्त फयाज गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैनात के बल्लेबाज के लिए. ये गेंद अपने एक हाथ से गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा शाकिर ने. अंतिम क्षण में परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद
फेंकी थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 1 रन बिला से नुकसान के। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज फयाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद शाकिर के लिए स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर की पारी का यहाँ पर प्रगति पर ताजुद्दीन, जो कि खासकर पावर प्ले का फायदा उठाने में माहिर हैं, एक एक्सप्लोजिव बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और इस बीच गेंदबाज फयाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ताजुद्दीन के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, 7 से 8 बार जमीन पर गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद ये गेंद ताजुद्दीन के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े, अंतिम क्षण में करना का थ्रो इस वक्त वाइड ऑफ द स्टंप्स निकल चुका है और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, जोखिम भरा रन इस बीच पूर्ण करते हुए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और इस बीच गेंदबाज फयाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, शाकिर इस वक्त सामना करते हुए और फयाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद शाकिर के लिए, इस बार शाकिर का विकेट गिर चुका है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, came along the carpet, just wanted to play the reverse shot by Shakir, not succeeded, at the last moment the ball gets some extra pace and after beating the batsman's bat it stuck to his middle of stump, तो पहला विकेट गिर चुका है and that is a big wicket for Gori Young Boys, absolutely fantastic delivery from Fayaz और शाकिर का वो विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। Have a look at this in the replay, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को फेंकी थी, दोनों पैरों के बीच से गेंद निकली और जहाँ तक का सवाल है स्टंप्सों का, तो स्टंप्सों पर जाकर गेंद इस वक्त टकरा चुकी है। शाकिर का विकेट गिर चुका है और 3 रनों पर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त KFC कोडिकल, it's 3 for the loss of 1 wicket। तो मैच नंबर 2 यहाँ पर खेला जाता हुआ और जहां तक सवाल है अगले मैच का, वन मोर गुड मैच राइट आफ्टर दिस मैच इज नाउ कमिंग अप, NM Mangalore will takes over KCCR Kadri in the next match and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chat। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ NM Mangalore ಹಾಗೂ KCCR Kadri ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು। तो यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, स्वीप किया, टॉप एज, मौका और इस बार एक और विकेट गिर चुका है। तंजीम की पारी समाप्त, थोड़े से सफल होते वन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मिनट, गॉट इज टॉप एज एंड अ शॉट स्कोर लेग फील्डर मेड नो मिस्टेक। First ball, golden duck dismissal for Tanzim and KFC Kodigul are now lose their second wicket. It's 3 for the loss of 2 wicket. They are looking now in trouble. 2 विकेटें लगातार 2 गेंदों पर खो चुका है। देखिए किस तरीके से इस वक्त टॉप एज पर टकराने के बाद 20 गज के दायरे के कुछ बाहर गेंद इस वक्त लपक ली गई थी फील्डर द्वारा और 3 रन पर दूसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है इस वक्त KFC कोडिकल। हालत तो कुछ हद तक नाजुक सी इस वक्त दिखाई देती है और इस संदिग्ध मोड़ पर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए बल्लेबाज अफरीद और वो इस वक्त स्ट्राइक रेट पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फयाज दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी है, दाहिना हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, ये जानते हुए कि इस वक्त अफरीद बाएं हाथ के बल्लेबाज है और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया, खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई रन बल्लेबाज को मिलेगा, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए फयाज यहाँ पर दे चुके, सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए 2 बेशकीमती विकेट शाकिर और तंजीम का उन्होंने प्राप्त किया और जो बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद थी गोरी यंग बॉयज के कप्तान के लिए वो बेहतर गेंदबाजी इस वक्त दे चुके हैं, वो बेहतर गेंदबाजी की शुरुआत इस वक्त दे चुके हैं गोरी यंग बॉयज के लिए गेंदबाज फयाज। और हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए अंसार
और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज अफरीद। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और 7 खिलाड़ी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। दर्शकों की तादाद बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ इस वक्त बढ़ते हुए आज गुरुवार वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी नजर आती हुई, तो यह बात यह दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट मंगलूर में खासकर इस यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान पर जो कि लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट से जाना जाता है, कितनी जनप्रियता यहाँ पर रखता है। तो इस बीच गेंदबाज अंसार नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अफरीद। और 3 से 4 कदम उनका रन अप। पहले गेंद, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाते हुए इनटू द गैप एज वेल, पीछा करते हैं फील्डर, एक रन मिलेगा। बेहतर फील्डिंग वहां पर, पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को इस वक्त फील्ड किया फील्डर ने। ना सिर्फ उन्होंने गेंद को फील्ड किया बल्कि तुरंत अपने हाथों से गेंद को रिलीज किया और आखिरकार बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए गोरी यंगबर्स। और जहां तक सवाल है केएफसी कोडिकल का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी पार्टनरशिप अपने टीम की भटकी हुई गाड़ी को सही पटरी पर लाने के लिए। 2 विकेटें पहले ओवर में खोने के बाद सहज रूप से इस वक्त दबाव उनके बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई देता हुआ, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजों के एक बेहतर साझेदारी के जरिए। रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज अंसार फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार ताजुद्दीन के लिए। और एक बार फिर से अंसार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, इंप्रोवाइजेशन करते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा और 2 रन आसानी के साथ बल्लेबाज यहां पर ताजुद्दीन पूर्ण कर चुके हैं। मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को रिवर्स शॉट इस वक्त खेला था खूबसूरती के साथ गली और पॉइंट के बीच और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 7 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अंसार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए और भाग्यशाली रहे कि गेंद लगभग स्टंप से 1 या 2 इंच दूरी पर निकलते हुए और स्वयं बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर करना भी आश्चर्यचकित इस वक्त रह गए कि गेंद स्टंप से ऊपर क्यों नहीं टकराई और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंसार एक बार फिर से तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद थी और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जहां तक गोरी यंगबर्स का सवाल है, इस वक्त टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और यहां पर उनके गेंदबाजों को उस निर्णय का समर्थन इस वक्त करना है। एक बेहतर गेंदबाजी करनी है इस वक्त अगर बल्लेबाजों पर अंकुश बनाए रखना है। तो ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ, इंप्रोवाइजेशन और गेंद इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा जब 4 रनों के लिए। Absolutely perfect struck this time. He just played that one with a twisted bat at the last moment. The ball which is just outside the off stump. Have a look at this in the replay. And this is an absolutely fantastic struck. He's got that one fine and because of that, he's got a boundary for that. और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 12 for the loss of 2 wicket in the open number, second in progress. और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त ताजुद्दीन के बल्ले से लगता हुआ फिर से एक बार गेंदबाज ताजुद्दीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अंसार की गेंदों का दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद आक्रामक स्ट्रोक सीधे मिड ऑन फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ताजुद्दीन की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है और यहां पर गेंद को उछालना चाहा था एनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन उछाला जरूर लेकिन काफी ऊंचा नहीं। मिड ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया। हाँ मतलब कहते हैं रिप्ले देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था लेकिन काफी ऊंचा नहीं उछाल पाए और गेंद मिड ऑन फील्डर के कुछ बाहर लपक ली गई इस वक्त फील्डर द्वारा। ताजुद्दीन चौका प्राप्त करने के बाद कुछ हद तक आक्रामक नजर आ रहे थे। अगली गेंद पर उनका विकेट यहां पर गिर चुका है और तीसरा विकेट केएफसी कोडिकल यहां पर खो चुका है 12 रनों के योग पर। एक बार फिर से परेशानियों के बादल अब केएफसी कोडिकल के ऊपर साफ मंडराते हुए और इस संदिग्ध मोड़ पर एक और बेहतर बल्लेबाज केएफसी कोडिकल की ओर से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए हकीम, जो कि इस वक्त धीरे धीरे क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और जहां तक हकीम का सवाल है एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर के रूप में वो जाने जाते हैं। कई बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली है केएफसी कोडिकल के लिए और यहां पर
ऐसे ही एक बेहतर पारी की ज़रूरत है उनकी टीम को हकीम द्वारा, और देखना है कि हकीम किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर इस मैच में अपनाते हैं। फिलहाल अंसार एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए हकीम के लिए रिवर्स शॉट, टॉप एज, मौका जी नहीं, गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खा चुकी है अंतिम क्षण में। हालांकि गली फील्डर अपने दाईं ओर दौड़े थे जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके पहुंच से बाहर, जस्ट आउट ऑफ हिज रीच। और इस बीच बल्लेबाज को मौका था एक रन प्राप्त करने का, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 2 overs completed, 13 runs on board, 3 wicket lost. Really, the testing time is now continuing here for the batsmen of KFC Kodigal. 13 runs they scored after completion of 2 overs with a run rate of exactly 6.5 runs per over. Still, in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in their innings. 4 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में KFC कोडिकल के बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन से बटोरने के लिए किस तरीके की रणनीति, टैक्टिक्स यहाँ पर बल्लेबाजी में अपनाते हैं। यूनाइटेड ट्रॉफी 2023-2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का दूसरे दिन का दूसरा मैच इस वक्त शुरू हो चुका है, और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजई मैंगलोर ने। और जहां तक इस श्रृंखला का उद्देश्य है गरीब बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए सहायता करने की, और बड़े गरीब बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए धनराशि इकट्ठा करके उनको सहायता करने का उद्देश्य से इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन उद्देश्य रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजई मैंगलोर द्वारा इस वक्त लिया गया है। ये गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट उद्देश्य के साथ इस श्रृंखला का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और निस्संदेह काबिल तारीफ काम इस वक्त करते हुए रियल एस्टेट ग्रुप बेजई मैंगलोर के सदस्य, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस वक्त शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद पहुंची, और इससे पहले कि गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है, इनफैक्ट थर्ड ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट वाले गो, और नौफल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए, और मिड ऑफ के फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है डीप कवर पॉइंट पर। कवर पॉइंट के फील्डर को कहना पड़ेगा, पीछे भेज दिया गया डीप कवर पॉइंट पर, और इस बीच नौफल दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त ड्रेन को ड्राइव किया, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट, ड्रिवन दैट वन परफेक्टली डाउन टू अ लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट in the over number 3 in progress. Still the batsmen of KFC Kodigal searching for the right track, और इस बीच नौफल अपनी ओर की अगली गेंद रिवर्स शॉट, एंड इम्प्रोवाइजेशन किया जरूर, लेकिन आखिरकार नॉट क्वाइट मिड विकेट, नो बॉल का इशारा। इस बीच 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए, और देखना यह है कि बल्लेबाज अफरीद इस फ्री हिट गेंद का किस तरह फ़ायदा यहाँ पर उठा पाते हैं। दोनों बल्लेबाज हकीम और आफरीद कुछ बल्लेबाजी के रणनीति के बारे में बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौट चुके हैं, और फ्री हिट गेंद का सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अफरीद, जबकि नौफल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। तो कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त की जा रही है, और ओवर की अगली गेंद लेकर नौफल इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ 2 रन कुल मिलाकर उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल, द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। फ्री हिट अभी भी बरकरार, और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का, तो हकीम इस वक्त फ्री हिट गेंद का सामना करते हुए, नौफल इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद ऑन साइड पर खेला खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, हकीम और अफरीद, और हर गेंद के साथ फील्डिंग में इस वक्त तब्दीली करते हुए कप्तान गोरी अंगबाज के लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, और नौफल की गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया, इस वक्त स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए बल्लेबाज अफरीद ने, और जब तक डीप बैक स्कोर लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर।
4 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और लोफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया टॉप एज, लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त फाइनल की दिशा में। गेंद का पीछा करते फील्डर, गेंद को रोका गया काफी मुश्किल के साथ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप फाइनल के बीच और 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त स्वीप किया था। अंतिम क्षण में खाली क्षेत्र चुनते हुए डीप फाइनल लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान 2 रन हकीम प्राप्त करते हुए और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था ना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार नॉफर की सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट, प्ले दैट वन, गेटिंग बैट एंड लेग क्लोज टुगेदर और गेंद जब तक शॉर्ट में विकेट पर फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। And third over has been came to 3 overs gone, half the way mark, 25 runs on the board, recovered well after being a slower start for KFC Cortical. Still in overall calculation 3 overs left in their innings. अब देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। 25 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs और चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, लेकिन इससे पहले कि चौथा ओवर शुरू हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So after there been a shackling start from the top order batsman of KFC Kodikkal, a little bit looks like the recovery coming from 2 batters, experienced Akeem as well as Afrid, the 2 batters slowly and steadily they started to build some partnership, which is very, very important for KFC Kodikkal to get some good score. From the far end, start of the over number 4 and starts with the excellent delivery by the bowler in that occasion, which is on the midland off stump, and batsman Akeem little bit shuffled across the line of the delivery. The impact of the line a little bit outside the line of off stump, so that the batsman completed a single before the fielder going to collect that one. 26 for the loss of 3 wicket. Ansar, the round the wicket, keeping 1 fielder in the deep long off, 1 at wideish long on, 1 at mid wicket, and 1 fielder at a deep cover point, extra cover between backward point and cover point, and 1 at fielder down at between third man and backward point. And next delivery, wicket keeper behind the stump. Karna fails to collect the ball. It's going to frustrate the bowler, isn't it? By call by umpire. And it's very good thinking there by Ansar, seeing that batsman, left-hand batsman Afrid is standing well out of the outside the line of leg stump, so that he bowled outside the line of off stump. Good ball in the negation inside the line, so that umpire rightly so not interested to call that wide. 27 for the loss of 3 wicket. Ansar, right arm over the wicket, bowls to Akeem. Akeem improvising that one down to deep for final leg region. Protection has been given in the deep, so that Akeem has to settle for the single. With that single, score moves on to 28 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Again, Afrid is a batter. Will go into face next delivery from Ansar. This time definitely is going to be a wide, and wide call by umpire. 1+1, 2 more to the total. And Karna is not really having a good time in the behind the wicket, because these all runs are very important. You can't give these runs when you are playing against teams like KFC Kodikkal. The opponent so good, and these all runs will going to be counted when you are going to chase those runs. All extras will going to play a big role in the result of the match. 30 for the loss of 3 wicket. Right arm over the wicket. Bounce, chip that one. Loose stroke there from Akeem. He pays the penalty for that. Just look at that. The dead dismissal. The Akeem now just thinking about why didn't I get a little bit extra power in that stroke. Definitely he will going to get the distance for that. Definitely he will going to get the distance for that if he able to get enough power behind the stroke. It's a half-hearted checking stroke. Absolute check stroke there from Akeem, and he just pays the penalty for that. But still ball is traveling towards a deep extra cover, and Akeem's innings which is comes to an end in a disappointing manner. 30 for the loss of 4 wicket. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ
KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. So Ansar has got a very, very important breakthrough. The danger man Akim is back into pavilion, but another danger man came into strike. That is Harris. Harris went for the reverse sweep. Something is going on. The bowler is a little bit excited, thinking that it might be the it might be the leg before wicket, but batsman has got a bat onto that. Otherwise, it's very definitely going to be very close if Harris misses that ball. Opportunity of leg before wicket there. 31 for the loss of 4 wicket. Afrid back on strike. Ansar looking so good in this over. Bowling from the Rohan Corporation and right arm down the wicket. Drives that one straight to the answer field. A chance of run out. Oh my goodness. This is a golden chance of run out which is missed by the both, I think, both, and Karna as well as Ansar. Ansar, I think it's very difficult to come back, but look, have a look at the throw. It's not a good throw from Karna. I think he can shoot the stumps, isn't it? He can shy the stumps, but he's just having an underarm throw, which misses the stumps. Batsmen survive. What could be a certain wicket here for Gori Young Boys? They just missed by their own mistake. 4 overs gone after completion of over number 4. Total score is 32 on the board. 32 for the loss of 4 wicket. And the run rate is now exactly 8 runs per over. So 32 for the loss of 4 wicket. 8 runs per over was the run rate progressing. It's not a bad run rate. It's a very good run rate for KFC Kodigal. The KCCR Kadri and NM Cricketers Mangalore will going to play next match. This is the quarter final. Next match that we're talking about NM Cricketers Mangalore versus KCCR Kadri. Quarter final match. NM Cricketers Mangalore has got a bye. Beautifully ball. Perfect one. Perfect one there from the young bowler Fayaz. Fayaz has contributed a lot for Gori Young Boys in the last 2 seasons as the front-line bowler for the side. Right arm round the wicket, improvising that one down to deep backward square leg region for a easy single. With that single, score numbers on to 33 for the loss of 4 wicket. 33 for the loss of 4 wicket, and the over number 5 is in progress. Again, improvisation and going for the single. Good piece of fielding there by the fielder, and down at short fine leg region, just moving towards short third man region very quickly, and so that batsman got ample time to complete the single. 34 for the loss of 4 wicket in the over number 5 is in progress. Changing the angle, bowler Fayaz, round the wicket is operated. Round the wicket to Afrid. Well, lovely delivery, beautifully ball. Afrid again missing the ball completely from the bat. Each and every dot ball. It's a really little bit problem for KFC Kodigal to get some good score here. And of course, the 45 to 50 runs is going to be a good score in this condition in 6 overs as Fayaz bowls improvising, but protection has been given for that stroke. Again, Karna fumbled. They wanted a second here, but quick recovery there from Karna there. Even that is a little bit fumble from him. Then the batsmen are not interested for the second run. Harris is a very dangerous batsman. And 35 for the loss of 4 wicket. Here is again Fayaz bowling round the wicket, over the wicket in fact. Buzz umpire Arish Padil to Harris. Harris wanted to play that with his favorite slog sweep shot, but missed it completely. Fantastic over from Fayaz. Outstanding over for Gori Young Boys. Last 2 overs, which is bowled by Ansar and Payaz, is really good over for Gori Young Boys. Even the batters of KFC Kodikal really trying for hard to get some big shot in that over, but they fails to do that. So 5 overs completed, and now it's a 35. Means run rate is coming down from 8 runs per over to 7 runs per over.
That's only because of Fayaz bowled an excellent fifth over for Gori Young Boys. Now last opportunity for KFC Kodikal. Have a look at the bowling figure of Fayaz. Outstanding bowling figure. 2 overs, 6 runs and 2 wickets. That means 3 economy rate. And in that 2 hours, he bowled 1 hour as a power play over. And the wicket which is taken, the huge wicket of Shakir. And this is really the Fayaz, really a best bowling figure for Gori Young Boys. Next one, the first one of the over number 6th, Ashik brought into attack. And first ball itself, the batsman are free. They picked up a single. Then with that single, Skoban was on to 37 for the loss of 36. Let progression 36 for the loss of 4 wicket. Ashik balls to Harris improvising, but really lack of placement straight to the hands of square leg. One more addition, the total addition of that single. Skoban was on to 37 for the loss of 4 wicket. Last 4 deliveries remaining. The batsman in front of Ashik is afraid, is for a long time in the middle. Lidri won that one again, not more than a single here. The perfect fielding position here by for Ashik. Now umpire saying that Gori Young Boys, they reached that time which is allotted to them, so that might be one fielder, they need to be inside the 20-yard circle. So one fielder need to bring inside the circle, and that fielder is from the fine leg region to short fine leg region. So they wanted to keep that fielder in front of square. If you feel they keep behind the square, that's going to be 3 fielders, so that they can't. This time he lofted, but stay. Oh my goodness! That is probably the chance of catch, but I think little bit misjudgment. Looks like Riaz in the deep wideish long off. Might be he was just in front of the boundary line, and he thought he is in edge of the boundary line, so that he couldn't manage to judge that one properly. Couple of runs. This time Harris lofted that one into the spectators gallery, and one of the spectators catching the ball. It's not a fielder, but a spectator has got opportunity to catch that one. Magnificently struck there by Harris. Just I mentioned earlier, he's a danger batsman for Gori Young Boys. And a perfect stroke in a perfect time for KFC Kodikal. Again, helicopter shot comes into play. This time Riaz is in the right position. So that's it. KFC Kodikal, they managed to complete their 6 overs quota, and they scored a 46 by losing 5 wickets, and they set a target of 47 for Gori Young Boys to win this match. And just under 7 runs per over is the required run rate. It's absolutely a good performance here from KFC Kodikal, because they didn't got good start. They started very nervously and then progressed very well, but they finished well with the 1-6 which came from the bat of Harris. So 47 going to be a target for team Gori Young Boys, and this is a Rohan Corporation, our the big sponsors for this prestigious United Trophy 2023. The Rohan Corporation, one of the most prestigious and reputed developers, building developers. And thank you very much, Rohan Corporation, for your cooperation for the success of this cricket tournament. And this is a furniture gallery, and I think it's now time for the commercial break here.
So the target is 47 for Goryang boys. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए और KFC कोडिकल फिनिश्ड वेल वेरी वेल आफ्टर बीइंग अ स्लो स्टार्ट। और इस बीच पहली गेंद शाकिर की ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और आखिरकार गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और जहां तक का सवाल है, अंतिम क्षण में एरिस ने जो छक्का लगाया था उसकी वजह से कुछ हद तक बेहतरीन स्कोर यहां पर खड़ा कर चुका है KFC कोडिकल। और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, 9 फल है। और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है गोरियंग बॉयज को, तो इस वक्त चाहिए उन्हें एक बेहतरीन शुरुआत, खासकर पावर प्ले का फायदा उन्हें यहाँ पर उठाना होगा। और इस बीच इजाज एक और बेहतर बल्लेबाज और गोरियंग बॉयज की ओर से इस वक्त आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतर चुके हैं। खासकर पावर प्ले का फायदा उठाने में वो माहिर हैं। और यहाँ पर देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी वो पावर प्ले में यहाँ पर अपनाते हैं। शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑन साइड पर, गेंद को स्विंग करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के, 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर एंड स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 6 ओवर्स लेफ्ट इन द इनिंग्स। इस बार टॉप एज मौका हो सकता है, मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए बड़ी मुश्किल के साथ इस कैच को उन्होंने लपका। हालांकि मैं समझता हूं सूरज की प्रखर किरणें उनके आंखों में लगभग छुप रही थी, लेकिन इसके बावजूद एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने इस कैच को लपका और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। फर्स्ट विकेट गॉन, 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड with this dismissal, I think Goryang boys are now looking in trouble a little bit in the first over. 1 for the loss of 1 wicket, and this is the first over in progress in their innings. Meantime, the next match, I once again to call upon the captain and players of NM Manglore and KCCR Kadri, please to be reported here to make a sign in the official chart for the next match. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इंतज़ार है इस वक्त नए बल्लेबाज का, और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे बल्लेबाज 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ता हुआ, सुबह के 11:10 यहाँ पर बच चुके हैं। दर्शकों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि टॉप सीडेड मैचेस, टॉप सीडेड टीमों के बीच आज मैचेस खेले जाएंगे। और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि क्रिकेट का हर पहलू हमें यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। तो नए बल्लेबाज दीपक, एक और बेहतर बल्लेबाज गोरियंग बॉयज की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और शाकिर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार शाकिर। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स के अति निकट इस वक्त बैठे हुए हकीम। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विक कर, आई थिंक इज गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट में, इज गॉट अ निक ऑन दैट। जिस तरीके से शाकिर ने हताश मनोभावना के साथ अपने दोनों हाथों को उन्होंने मारे एक साथ, तो इस वजह से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ था, लेकिन विकेट कीपर इस मौके को गंवा चुके हैं। और एक बार फिर से शाकिर तैयार, ये गेंद दीपक के लिए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर। तो एक बेहतरीन ओवर, बेहतरीन शुरुआत शाकिर इस वक्त दे चुके हैं गेंदबाजी के जरिए KFC कोडिकल को। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर इज 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 45 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs and the required run rate is now gone up to exactly 9 runs per over। 9 रन प्रति ओवर के औसत से इस वक्त रन्स बनाने हैं 45। और जहां तक सवाल है साझेदारी का, पार्टनरशिप का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक तेज साझेदारी इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए गोरियंग बॉयज को। गेंदबाजी चेतन, एक और प्रमुख गेंदबाज KFC कोडिकल की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और इस वक्त दूसरा ओवर शुरू होता हुआ गोरियंग बॉयज की पारी में। फील्डिंग में जमावट चलती हुई दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। दीपक के लिए इस वक्त लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट ठीक है सीमा रेखा के पास तैनात। और जहां तक का सवाल है 4 फील्डर ऑफ साइड पर 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त चेतन तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद मिड ऑन पर, रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला, लेकिन यहां पर अंतिम क्षण में विकेट चटकाए गए, शायद हाथ से हो गए। तो इस वक्त बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं।
निशाना सीधे स्टंप से ऊपर टकराता तो कुछ बात जरूर वहां पर बन सकते थे, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुका है और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। सेकेंड ओवर स्ट्रैटेजी शॉट वाले को और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो गेंदबाज चेतन इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर चेतन इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर चिपकी है, खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए एब्सोल्युटली एफर्टलेसली प्लेड square of the wicket. He just lofted that one and he's got the distance for that. Absolutely fantastic struck. Have a look at this in the replay. गेंद को उछाला था with the wind और हवा के रुख के साथ इस स्ट्रोक को खेला और छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए नौफल थोड़ी सी विड्थ थी और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को इस वक्त उछाला डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट नौफल है। बेहतरीन स्ट्रोक और इस स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर रंगोरी यंग बॉयज को लक्ष्य तक पहुंचना है तो ऐसे चंद और स्ट्रोक यहां पर लगाने होंगे उनको। और इस बीच गेंदबाज चेतन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस वक्त गेंद को डिलिकेट एब्सोल्युटली डिलिकेट हल्के से गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया स्टंप को कवर करने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने के। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं दीपक का चेतन की गेंदों का सामना करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड की रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 2 अंकों पर यानी 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। चेतन एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी एब्सोल्युटली गुड वन मच स्ट्रेटर ला जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट नॉट कनेक्टेड दैट वन एंड करेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रन। बेहतर गेंद थी चेतन की और एक बार फिर से गेंदबाजी वो आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा दीपक ने चूके इस बार गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर। एक और डॉट गेंद तो हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर तो इस वक्त उन्हें वापसी कर रही है और हर गेंद पर रन्स बनाना इस वक्त उनके लिए ज़रूरी बन चुका है। और एक बार फिर से चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए और चेतन इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग ऑफ पर लेकिन फील्डर मौजूद एक रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति 2 overs completed 12 runs on the board 9 runs scored from this over good over in Gori Young Boys point of view games to end 12 for the loss of 1 wicket 2 overs completed 35 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs that means 24 deliveries and the required run rate for them is exactly 8.75 runs per over 35 they have to score in remaining 24 balls and the third over starts from the commentator box and और गेंदबाज एक और अनुभवी गेंदबाज इस वक्त संभालते हुए हकीम ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 2 overs completed and 12 runs on the board 1 wicket lost 35 to get now from remaining 24 deliveries umpire इस वक्त umpire रोलैंड पिंटो और umpire हरीश पटेल कुछ गेंद के बारे में कुछ चर्चा यहां पर करते हुए शायद गेंद को इस वक्त बदल दिया जा रहा है और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से हकीम इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ गोरी यंग बॉयज की पारी में और तख्ता इस वक्त कुछ भारी जरूर लग रहा है KFC कोडिकल का लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त
गोरियंग बॉयज के बल्लेबाज को। अगर एक ओवर में 12 से 15 रन अगर बनते हैं तो निस्संदेह गोरियंग बॉयज इस मैच में वापस आ सकता है। हकीम ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को इट्स गॉल फाइन, इट्स गॉल फाइन, 5 वाइड्स। और यहाँ पर 5 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में गेंदबाज हकीम प्रदान कर चुके हैं। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी और स्पेक्ट्रा वाइड जिसे कहते हैं, और फाइन लेग फील्डर वहां पर खड़े ही रह गए और गेंद उनके कोसों दूर निकलती हुई सीधे फाइन लेग सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है 5 रनों के लिए। अब इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ, 30 रिक्वायर्ड ऑफ 24 डिलीवरीज, और सीधे इन 5 वाइड की बदौलत रिक्वायर्ड रेट 8.75 से उतरकर 7.50 पर आकर रुक चुका है। 30 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 4 ओवर्स, दैट मींस इन 24 बॉल्स। और इस बीच हकीम दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दीपक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। He's got a problem on his length of line at this situation. Bowled 2 consecutive wides and conceded 6 runs in the face of wide now. 18 for the loss of 1 wicket, 29 to get from 24 balls. और एक बार फिर से हकीम की गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद कुछ ज़्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद पहुंची सीधे शॉट फॉर लेग फील्डर के हाथ में। रन की कोई गुंजाइश नहीं बल्लेबाज के लिए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच हकीम की गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए वाइड स्लॉग पर फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात, चेतन गेंद तक लपकते हुए, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। सेंसिबल क्रिकेट इस गेंद पर दीपक ने अपनाई थी, हल्के से गेंद को पुश कर दिया था, ये जानते हुए कि लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए मच स्ट्रेटर बिल्कुल सीधे खड़े हुए और गेंद को हल्के से पुश कर दिया। और इससे पहले के चेतन दौड़ लगाते हुए लॉन्ग ऑफ से वाइड लॉन्ग ऑफ तक पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और गेंदबाज इस बीच तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई गेंद को इस वक्त पुश किया बैक टू द बॉर्डर की दिशा में, और इस बीच पैरों पर गेंद टकराने के बाद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया स्वयं गेंदबाज द्वारा। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रन। एक और बेहतर ओवर गोरियंग बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि इस वक्त प्रगति पर है। और हकीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। नौफल बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, डीप कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद। अगली गेंद लेकर तैयार, रनअप में कुछ हद तक बाधा, शायद वहां पर गेंदबाज रनअप लेते समय वहां पर फील्डिंग सजा रहे थे शॉर्ट फाइन लेग फील्डर शाकिर, तो इस वजह से गेंदबाज ने अपने रनअप को रोक लिया। एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद वहीं पर गिर गई, उनके पैरों पर टकराने के बाद रन नहीं मिलेगा और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। नौफल और दीपक इस वक्त पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए, एक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी इस वक्त करते हुए हकीम 2 लगातार वाइड फेंक कर 5 रन तोहफे के रूप में प्रदान करने के बाद एक अच्छी वापसी वो कर चुके हैं। 2 लगातार डॉट गेंदे नौफल को इस वक्त वो फेंक चुके हैं, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच 1 रन मिलेगा, सिर्फ बाई का इशारा। 22-22, 3 overs completed. Still, the equal battle is now on. 25 to get from 18 deliveries, exactly 8.33 the required run rate for them at this situation. 9 wickets they got, in fact, kept intact. और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में 25 रन गोरियंग बॉयज के बल्लेबाज बटोर पाते हैं या नहीं। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में अब सतीश को मैं बुलाना चाहूंगा। सतीश, 25 रन चाहिए, 18 गेंदें बाकी, एक्जैक्टली द रिक्वायर्ड रन रेट 8.33 रन पर ओवर। और पिछला ओवर बेहतर रहा जिसमें 10 रन बने और अगले ओवर में 10 से 12 रन बनते हैं तो निस्संदेह गोरियंग बॉयज इस मैच में पूरी तरह वापस आ सकता है। जहां तक सवाल है केएफसी कोडिकल का, तो इसमें ओवर में उन्हें कमबैक करना है एक किफायती गेंदबाजी के जरिए। कुल मिलाकर ये ओवर जो शुरू होने जा रहा है दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सतीश, Thank you, Gopi, and absolutely you are right, Gopi. And this particular over is going to be very important for both the teams because this over will going to decide the exact picture of this game between
Gori Young Boys versus KFC Kodikal. First ball going for the bite. So chance of run out in the non-strikers end. I think it's opportunity in the strikers end rather than in the non-strikers end. And Shakir is trying for the run out in the non-strikers end so that the batsman got ample time to complete the single. With that single, score moves on to 23 for the loss of 1 wicket. In the over number 4 is in progress. And it's just I think so the previous over, which is bowled by Akim, these two batters, of course, maybe they can get more than that 9 runs, but they got in the previous over. They played some 2-3 dotted deliveries in that previous over. This time again, nicely driven down to deep, wideish long off region for a single. Deepak looks like he wanted to spend the time in the middle. It's needed to be. He's a very dangerous left-hand batsman because for the batsmen like Deepak, they need to have some a little bit time in the middle if they wanted to get their natural stroke making. And Naufal is looking so far so good for Gori Young Boys, and Chetan bowls. The bowler's back right, nicely driven, straight down the ground, down to deep, straight long on boundary for 4 runs. Just like I mentioned, Naufal is looking so good so far. After that explosive extra cover drive for the 6. Now it's a magnificent and delightful straight drive. When the batsman hitting the ball straight down the ground, as straight as an arrow, even very difficult for the fielders in the deep long on and extra cover to cut it off. Absolutely fantastic stroke there from Naufal. With that boundary, they straight away they back into this game. 28 for the loss of 1 wicket, 19 more runs required for the victory, and deliveries remaining 15. So 19 required runs, 15 remaining deliveries. Chetan from the far end, Rohan Corporation and right arm over the wicket, rise at 1. This time towards the widest long on region, but this time they need to settle for the single because fielder Harry is so quick to moving towards the direction of the ball, so that batsman have to settle for the single. With that single, score was under 29 for the loss of 1 wicket. Gori Young Boys, of course, these two teams, even Gori Young Boys and KFC Kodikal in this particular season, KFC Kodikal yet to get to clinch the prestigious titles in this season so far, but Gori Young Boys already has won a very big title in Modabidri, and outside the line of off stump, they're going for the big swing of the bat. But again, Deepak in a very important stage of the innings, playing the dot ball means a little bit pressure is will going to build up here for the batter. And Chetan, good comeback, and he bowled a fantastic dotted delivery outside the line of off stump. Chetan again bowling from the far end, right arm over the wicket. This time over completed, misjudgment by Deepak, quicker one and faster one there from Chetan. One more dotted delivery, and now equation here, 18 to get, 12 balls remaining. Now I want to see that what the things which is went wrong in this particular 2 overs. I'm talking about the previous over, the over number 3, when Akim conceded 5 runs. Most probably, both the batsmen has got opportunity to, at least they managed to rotate the strike. They can get more than 12 runs in that over, but they got only 9. The second here is that after getting a boundary in the first ball of this over, second ball of this over, still they played a dotted deliveries. This is the biggest problem I'm talking about in this particular match. And the dotted delivery might be the biggest problem here for Gori Young Boys. At least they need to rotate the strike, but I think KFC Kodikal, they're really back into this game because of the Chetan's last 2 delivery. He managed to keep the batsman quiet. Now Shakir back into his bowling attack from the commentary box end. Very important over for KFC Kodikal and even for Gori Young Boys. The first ball went for the reverse flip again. That's what I'm talking about. One more dotted delivery. Each and every dot ball will going to be difficult for Gori Young Boys to chase down. 11 ball, 18 runs required for the victory. Shakir balls. This time slashes it hard. They're running hard, but not more than a single. Ball is just away from the 20-yard circle. Iqbal, the fielder there in the short-term man region to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. Now, I want to see the Deepak, what kind of strategy will going to implement. 17 to get, 10 balls remaining. One big shot will going to change the complexion of this match. This time, what Shakir wanted to do here is that didn't settle the batsman for the big shot, but he settled the batsman to go for the pavilion. And this is outstanding delivery there from Shakir. This is a sharp incoming delivery. The perfect line to ball to the batter like Deepak, isn't it? This is all about Shakir's experience.
Have a look at that on the pace and the line. So good. And the batsman missing it completely. And 30 for the loss of 2 wicket. And now 17 more runs required for the victory in 9 deliveries. One excited spectator, the senior citizen, once again is troubling the players. And maybe the biggest fan of KFC Kodikal. Every time they are picking up wickets, excited. The senior citizen is entering into the cricket ground. Now, little bit work which is needed for Roland Pinto, sir, to, yes, send this man out of the park. This is the beauty of cricket. Maybe he is a cricketer in his younger age, who knows? Because he's so excited by watching some cricket here in UCG cricket ground. Is entering into the ground and troubling the players, troubling the umpires, and one of the volunteers are doing hard work here to send this man. $30 for the loss of 2 wickets. 17 more runs required for the victory. 9 balls remaining. Karna, captain of the side. This time going to be a wide. With that extra score, moves on to 31 for the loss of 2 wickets. That means 16 more runs required for the victory in 9 deliveries. Karna, known as a finisher. And again, the finisher is known as a finisher, and he wants to finish the man. And ball running down to the final boundary for 4 runs. Just like I mentioned that Karna is known as a finisher, and the second ball is facing, first ball it's a wide, the second ball improvisation. Even there is a square leg fielder is there. Have a look at it. Afreed is there in the square leg. He's sliding there. It's not easy to sliding in the ground like UCG ground. It's not a grass ground, but due to appreciate the effort of Afreed just sliding that one, but couldn't manage to stop the boundary. It's a 35 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Again, going for the single, chance of run out. Direct hit, looks like now fall is safe. Hakim hitting the stump, asking a scholar umpire, and umpire Roland Pinto sir saying that it's not out. And now equation is very interesting after that boundary and a single run. 36 means now 11 more runs required for the victory. 7 deliveries remaining. If the match will go into ended in a tie, the wicket average which is going to be a decider. And as far as a fall of wicket is concerned, and KFC Kodikal have lost 5 wickets, and Goryang boys have lost only 2 wickets. That means even 10 runs without losing a wicket, enough for Goryang boys to win this match. Shakir. Ball, beautifully balled. This is a huge wicket here for KFC Kodikal. This is absolutely a huge wicket for KFC Kodikal. Shakir once again producing a vital breakthrough for KFC Kodikal. And the danger man Naufal departs. Absolutely big blow for Goryang boys. The last delivery of the Shakir's over. Have a look at that delivery. The wide of the crease is balled around the legs, not around the legs, between the bat and pad. Ball hitting the stumps. And one more wicket is fallen, and one more time the same spectators once again entering into the ground to trouble the players and umpires. 36 for the loss of 3 wickets, 6 ball remaining. The 6 ball remaining, have a look at that senior citizen. Now, little bit, not only the firework which is required for that senior citizen, but I think now Roland Pinto sir this is not a good sign to entering into the ground when the game is progressing. It will going to disturb the concentration of the players, isn't it? And there need to be spectators, need to be little bit cool and calm. Sometimes it's not in their control.
So now, at the last over remaining, 11 runs required for the victory. 6 ball, 11 runs required for the victory. Do or die situation. Karna is still there in the middle, known as a finisher. But very surprising to see that Riaz, as a came into the middle as a number 6 batsman. It's going to be very interesting to see that Riaz came as a number 6 batsman, and this is always the two pairs, very popular and pair for Goryang boys, Karna and Riaz, known as Karan Arjun. And wait and see, can these two Karan Arjun will going to finish the match here for Goryang boys? The wait and see. The from the far end, Tazuddin is the bowler brought into attack. You need to restrict the batsman not to get 11, and Karna and Riaz have to get 11 runs desperately if we wanted to be in the next round. First ball, Karna wanted for the wind swing of the bat. This time, never seen chance of run out. He's just jogging, and look at the Shakir. Look at the Shakir in the short find aggression. This is what you call the presence of mind. Outstanding throw coming from Shakir. He's almost in the short find aggression. I will look at that one. Quickly realizing and returns the ball to the hands of the bowler. Excellent throw. Karna, no chance at all for survive. But now I think the bad shot selection there from Karna, because he wanted to play the reverse stroke, but good thinking by Tazuddin, bowling that outside the line of leg stump, didn't settle the batsman Karna to go for the reverse stroke, and he just missed it, and Shakir not missing the golden opportunity. Now, jersey number 28, Shakir, once again proving why he is one of the important player for KFC Kodikal. Responsible for the 2 dismissal, altogether 2 dismissal in the form of bowling and 1 dismissal, which is very important in this particular over in the form of run out. 3 wickets already for him, 1 in the form of run out, and 3 wickets in the bowling and 1 in the form of run out. Oh, lovely delivery, slow over one, beautifully bowled there by Tazuddin. Riaz back into pavilion. Now Goryang boys are looking in a serious trouble. Even a little bit surgery in the batting order, and Riaz has been sent down in the order, in the middle order position, but that was not really working out, and that was a slower one. Riaz thought ball went anywhere, but ball is not went anywhere, which is very close to the stumps for the wicketkeeper to complete the formalities of run out. 36 for the loss of 5 wicket. Now, Goryang boys in a trouble because the previous over, it looks like when they lost 2 wickets, that the 10 runs which is going to be enough, now they have to get all 11 runs. Because the fall of wickets is now becomes same. To fall of wickets is becomes the same, and 3K viewers watching the live telecast of this cricket tournament. This is showing the popularity of Underarm cricket and showing the popularity of even Bedra Media. And 11 required from 4 balls. Tazuddin, right arm over the wicket to Arif. Can Arif will going to produce one big shot here for Goryang boys. Right arm over the wicket, went for the big shot, not quite getting hold of that and properly. Just a single. 10 required. 3 balls remaining. The batsman is on strike, is a Payas. Time, what umpire is showing, the watch, that you are exceeded the time. Need to bring 1 fielder. This is going to be very crucial. Can these 2 batsmen going to capitalize this 1 fielder which is going to be inside? 4 fielders outside the circle, not a 5. Now, Fayaz, he's got a potential of dispatching a big shot. And Tazuddin so far did a great job for KFC Kodikal. 3 balls bowled beautifully, but job is not yet over. 4 time in this over. Right arm over the wicket, slower one. Ake missed it. Overthrow, no, just a single. Now, Hakim is really not having a good time.
Nakim is not really having a good time, even in the behind the stump, even in the bowling. Lot of firework from Shakir to Hakim. Now 2 balls remaining. 2 balls remaining. And they need to get 9 runs to win this match. If they wanted to take this match for the final delivery, in this particular delivery, at least the boundary is required for Gori Young Boys if they wanted to keep the off to win the match and wanted to take that one in the final delivery of this match. Tazuddin bowled a fantastic last over. Outstanding last over. 2 balls which is required for him to get the victory for KFC Kodikal. Right arm over the wicket, went for the big shot. That's it. Looks like now all over for Gori Young Boys. At one stage, if you believe me or not, they're cruising towards a victory. When Gopi hand over mic to me, that time they got 22 runs. 25-18 required that time when Gopi hand over the microphone to me. And all we can see that Deepak, the left-hand batsman, and Naufal, the promising right-hand batsman, are there in the middle. Looks like Gori Young Boys will go into safely to the home. But after that, the Shakir is a man. Once again, robotic did the job for KFC Kodikal with the 3 wickets and responsible for the 1 run out. Then Tazuddin almost doing the right job in the final over. And 9 required from last ball. Looks like just a format is left in this game. KFC Kodikal, after a long time, they're in the right track. And they won the match. They won the match, KFC Kodikal defeating Gori Young Boys. The 8 runs margin victory for KFC Kodikal. It's a huge victory if 8 runs against a team like Gori Young Boys. Always a huge wicket and big victory for KFC Kodikal. Just like I mentioned earlier, KFC Kodikal not really having a good journey in this particular season 22-23. So that they've taken this tournament as very seriously because clinching the titles in the UCG cricket ground is always going to be a huge one. Each and every team wants to be in the final whenever the tournament which is played in UCG cricket ground. Now KFC Kodikal, they defeated Gori Young Boys and they qualify for the quarter-final of this prestigious United Trophy 2023. Now it's the time to announce the man of the match. From our chief guest in our main stage. At the same time, I request Gori Young Boys captain Gori Young Boys Nayak Kuda ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. KFC Kodikal ತಂಡದ ಶಾಕಿರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ
ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ. ಈಗಾಗಲೇ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಕಿರ್ once again bowled brilliantly, 2 overs 8 runs 3 wickets and responsible for one brilliant run out and run out of Karna and Ajay Shetty presenting this man of the match award with the cap and very attractive t-shirt for Shakir for his wonderful performance. And now it's a time for Gopi to take over the microphone. One more good match. NM Cricketers Mangalore versus KCCR Kadri. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So one more match. ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So धन्यवाद सतीश. So the match is now going to start. One more big match is now coming up. NM Mangalore will take over KCCR Kadri. So Kadri, KCCR Kadri, after one was elected to field first, and because of that, the first ball of their match is now coming up, and NM Cricketers openers are the crease. Azim and Asif Adur, the openers, and the bowler starts the fresh proceedings. Dilip, first ball, and he's gone! He's gone in his very first delivery. Absolutely a dream start for Dilip now. Asif Adur, the man dismissed, and a vital wicket for Dilip at this situation. और जहां तक दिलीप का सवाल है, पिछले मैच में भी पहली ही गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया था और यहां पर पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं. He's got the rid of the danger man Asif, and this is a dream start for Dilip now and for the KCCR Kadri. Not for one, Asif departs for duck, and NM Mangalore are now 0 for 1 in the first over. ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. So the new man is now comes out to the middle. Mansoor, the man, number 3 batsman, is now comes out to the middle after the departure of Asif Adur. And Dilip is now going to bowl the next delivery. Mansoor इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद मंसूर के लिए टॉप एज, लेकिन फील्डर इस वक्त इस बार गली की दिशा में. जैसे ही बल्लेबाज मंसूर ने रिवर्स शॉट खेलने के लिए अपने बल्ला तिरछा उड़ाया, गली के फील्डर ने पीछे की ओर दौड़ना शुरू किया इस वक्त और आखिरकार गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. NM मैंगलोर के लिए 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाज
इस वक्त दिलीप तैयार, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए आजिम और निस्संदेह आसिफ अड्डूर का विकेट पहली गेंद पर गिर जाने के बाद इस वक्त कुछ हद तक दबाव एनएम मैंगलोर के ऊपर दिखाई देता हुआ और जहां तक एक बेहतर शुरुआत की ज़रूरत है, अब बेहतर शुरुआत देने की जिम्मेदारी इस वक्त आजिम और मंसूर के कंधों पर आन पड़ी है और देखना यह है कि वो किस तरीके की आरंभिक शुरुआत इस वक्त दे पाते हैं अपनी टीम के लिए। दिलीप इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद अपने स्ट्रोक को रोक लिया था, अंतिम क्षण में गेंद पहुंची मिड ऑन पर और जब तक इनको वहां पर फील्ड करे मंजुनाथ, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में और 1 रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, बैकअप वहां पर होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर ओवर इस वक्त दिलीप का प्रगति पर और इस बीच आजिम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दिलीप अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फॉलो थ्रू में नहीं, इस बार कैच छूट चुका है लेकिन बेहतर प्रयत्न उन्होंने जरूर किया था अपने दूसरे प्रयत्न में और अपने स्ट्रोक्स को अंतिम क्षण में मंसूर ने रोक लिया था। यहाँ पर हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, क्रॉस एंगल पर दिखाया जा रहा है, देखिए गेंद को खेला था, फॉलो थ्रू में कैच छूटी लेकिन दूसरे प्रयत्न में भी गेंद को लपक नहीं पाए इस वक्त गेंदबाज और बल्लेबाज आजिम इस वक्त जीवदान प्राप्त कर चुके हैं और गेंद की परीक्षा करने के बाद इस वक्त गेंदबाज के हाथों में गेंद को लौटाते हुए बल्लेबाज आजिम एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। दिलीप की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद जब गया लंबा पर फील्डर के हाथों में और इस बार आजिम बच नहीं पाए। उछाला था जरूर लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और वाइड लॉन्ग ऑफ पर फील्डर खड़े हुए थे, गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और विकेट नंबर 2 इस वक्त दिलीप के खाते में जाता हुआ और यहां पर मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, मिस टाइमिंग स्ट्रोक और प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और आखिरकार लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सेकंड विकेट लॉस्ट, really a struggling time continuing here for the batsmen of NM Mangalore now and a fantastic first over is now progressing here from Dilip और नए बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है और नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त मैदान पर उतरते हुए इरशाद और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और साथ निभाएंगे इस वक्त मंसूर का। तो पहला ओवर सफल ओवर इस वक्त समाप्त इस वक्त हो चुका, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर fantastic start given by the bowler Dilip, the captain himself for KCCR Kadri, conceded just 3 runs in the first over and captured couple of wickets और पहले ओवर के बाद 3 रन जोड़ चुका एनएम मैंगलोर 2 विकेट के नुकसान पर, 3 for the loss of 2 wicket after completion of first over। दूसरा ओवर धनुष जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी पिछले मैच में की थी, 4 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे, टोरपेडोस काना के खिलाफ हैट्रिक भी उसमें शामिल है और यहाँ पर उस सफलता के सिलसिले को दोहराने की कोशिश में ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त मंसूर सामना करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया फॉलो थ्रो में, इस बार हाथ जरूर अड़ाए थे लेकिन गेंद उनके हाथों में नहीं आई और आखिरकार जब तक गेंद को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। पहली चेतावनी फर्स्ट वार्निंग इस वक्त मंसूर को दी जा रही है अंपायर रोलैंड पिट्टो द्वारा पिच के बीच दौड़ने के लिए और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो अगली गेंद लेकर धनुष इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त इरशाद और इस बीच धनुष की ये गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉट बॉल पर इरशाद काफी आगे, इस बार निस्संदेह इरशाद की पारी समाप्त हो सकती थी अगर निशाना स्टंप्सों पर टकराता तो और वाइड का इशारा जरूर हो चुका है और भाग्य इरशाद का इस गेंद पर साथ देता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। गेंदबाज ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया टॉप है जिप, इस वक्त कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद जाती हुई डीप इन विकेट पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा और इससे पहले की गेंद को डीप इन विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने के बाद विकेट कीपर के गेंदबाज के हाथों में लौटाए बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 7 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका है कि साझेदारी यानी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत एनएम मैंगलोर को, अगर उन्हें एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बनाना है तो
तो इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज इस वक्त तैयार धनुष गेंदबाजी इस वक्त करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी और धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को ऑन पर उछालना चाह नॉट क्वाइट मिटिगेटेड द लास्ट पॉइंट बट ही स्कोर्ड अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के दूसरे दिन का तीसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ और इस बीच धनुष अपने और की अगली गेंद मंसूर के लिए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाते हुए इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर स्वीपर आउट देयर इनफैक्ट द बैट्समैन गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह गेंद और बल्ले के बीच में इस वक्त कड़ा संघर्ष जारी और धनुष एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह नॉट क्वाइट मिडलिंग इट दिस टाइम वंस अगेन दे गॉन थ्रू अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स नाउ दैट मींस ऑन 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अभी भी रन सिंगल्स के रूप में बनते हुए और मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार धनुष की गेंदों का रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन पर बेहतर फील्डिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग। जैसे ही बल्लेबाज ने रिवर्स शॉट खेलने के लिए अपना बल्ला तिरछा अड़ाया उससे पहले अल्ताफ जो फील्डर थे गली के फील्डर उन्हें पीछे दौड़ना शुरू किया। उन्हें वो जान चुके थे कि गेंद उनकी ओर उनकी दाईं ओर से निकलने वाली है और आखिरकार गेंद को वहां पर बेहतरीन तरीके से डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्ड करने में सफल और थ्रो करने में सफल तुरंत अपने हाथों से सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम को मिलता हुआ इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति 8 रन बने इस ओवर में 8 runs scored in this over pretty good over in Mangalore's point of view came student 8 runs came from 2 overs they are recovered a little bit after being a slower start it's 11 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs और जहां तक सवाल है तीसरे ओवर का तो तीसरा ओवर इस वक्त सतीश को इस वक्त सौंपा गया है। हालांकि पिछले मैच में दिलीप ने अपना दूसरा ओवर लगातार फेंका था लेकिन यहाँ पर सतीश को गेंदबाजी पर लगाया गया है और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे ओवर का तो सतीश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। ओवर की पहली गेंद लेकर सतीश इस वक्त तैयार मंसूर के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज सतीश ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा पैरों पर टकराई गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर स्वयं गेंदबाज पहुंचे लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज KCCR कतरी के और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा विकेट कीपर तेजी से के साथ गेंद को पहुंचे बैकहैंड थ्रो जरूर उन्होंने किया लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज इस बीच 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं 13 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और मंसूर काफी अनुभवी बल्लेबाज मैंगलोर की ओर से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सतीश की गेंदों का सतीश अपनी ओर की अगली गेंद ये गेंद धीमी गेंद बेहतर गेंद थी विकेट कीपिंग तेज तरीके की लेकिन बल्लेबाज अपना पिछला पैर क्रीज पर रख चुके हैं और इस वजह से बिल्कुल सुरक्षित। तो परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फेंकी थी और इस धीमे गेंद पर चकमा खा गए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था और अंतिम क्षण में अपना पिछला पैर उन्होंने क्रीज से हटाया नहीं और इस वजह से वो इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए स्कोर इस वक्त रुक चुका 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इन मैंगलोर के बल्लेबाज अभी भी अपनी सही राह को तलाशते हुए जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। सतीश एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए मंसूर के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खेला गेंद पहुंचते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन पर कोई फील्डर वहां पर नहीं डीप थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आए उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का
बेहतरीन स्ट्रोक इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद किस वक्त रिवर्स शॉट के जरिए खेल दिया था डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट के दरमियान ना, और एक लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 15 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त सतीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार मंसूर के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक बार फिर से गेंद को खेला इस वक्त, इस बार 2 स्कोरर, 1 रन मिलेगा। अल्ताफ बॉल पड़ी, गेंद तक पहुंचा है, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले के बल्लेबाज इससे पहले कि थ्रो पहुंचे स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। अल्ताफ ने जी तोड़ कोशिश जरूर की थी दूसरा रन लेने से रोकने की बल्लेबाजों को, लेकिन आखिरकार 2 रन लेने से नहीं रोक पाए और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। धीरे धीरे ये साझेदारी एनएम मैंगलोर के लिए जमती हुई 14 रन अब तक बन चुके हैं तीसरे विकेट के लिए मंसूर और इरशाद के बीच में। 14 runs already scored for the third wicket so far between these two batsmen, NM मंसूर एंड इरशाद। और मंसूर खासकर एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त निभाते हुए और उनका अच्छा साथ देते हुए इस वक्त इरशाद। और इस बीच सतीश अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद मंसूर के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन पर वाइड का इशारा। स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर। 2 रन मिले तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 16 रनों की साझेदारी अब तक बन चुकी है तीसरे विकेट के लिए ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और फिर से एक बार गेंदबाज सतीश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद कौन साइड पर उछाला, इस वक्त गेंद जाती हुई मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed, 20 runs on the board, 2 wicket lost, and 1 more good over in Mangalore's point of view came to an end. 9 runs came from it, and after 3 overs they recovered a lot after being a slower start. 20 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs. 3 overs left in overall calculation in their innings, and let's see how many runs they are making in this remaining 3 overs. और चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, लेकिन इससे पहले कि चौथा ओवर शुरू हो NM मैंगलोर की पारी में क्या क्या होता है ये अब आपको अंग्रेजी में जानकारी देंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश। आगे का को देखा सुनाने के लिए मैं सतीश को माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So, slowly recovery from NM cricketers Manglore after that early breakthrough. Dilip once again got that early breakthrough for KCCR Kadri. After that experience, Mansoor and Irshad after some time is just back into this NM cricketers Manglore squad because of his present form. And let's wait and see how Irshad will going to justify his appearance in NM cricketers Manglore after some break. And here is the bowler, Dhanush. So far he's got a good tournament and good season. 8 runs in the first over and he's bowling his second over. Right arm over the wicket ball. So going for the drive, not more than a single in the negation there for Ishad. Not a convincing cricketing stroke there from Ishad. He wanted to drive the ball into the long on region. Little bit mistimed cricketing stroke, went towards a short mid-wicket region for a single. With that single, Scobin was under 21 for the loss of 2 wicket. Right arm over the wicket. This time lofted that one right in the gap. And before the fielder from extra cover to run towards his right to field the ball, ample time for Mansoor to complete that couple of runs. With that couple of runs, Scobin moves on to 23 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. After that, slow recovery from these two batters, quickly realizing that now it's a time for them to have a little bit acceleration of run rate which is required. So both the batsmen are trying for that in this particular over of Dhanush. Dhanush, who picked up a hat-trick wicket in the previous match against Torpedoes Khana, and he got a man of the match for his outstanding, little bit correction, his captain is on the man of the match. Nicely driven down to mid-wicket region. They're looking for the second. But Aman has been outstanding in the field. Once again, he's in the picture. One who took one brilliant catch in the deep extra cover, deep long off. And one combination catch in the previous match. He fields the ball, back to bowler. Dhanush balls. This time outside the line of offs and too much chance of run out there. Trying for the run out. Wide +1. This is what Dhanush this time not really able to control,
and that will going to be a bonus run here for NM Cricketers Mangalore. So each and every extra runs is going to be very crucial when they are playing against a team like NM Cricketers Mangalore has got a fantastic season so far. Altogether, four biggest titles for NM Cricketers Mangalore in the season. And here is Dhanush. Went for the reverse sweep, down to deep third man region. Protection has been given in the given for that reverse stroke down at the third man region, so that Mansoor have to settle for the single. With that single, Scoburn was on to 27 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Very good comeback and a very good partnership which is progressing here between Mansoor and of course Irshad. They lost the wicket number 2 at the score of 3. That means a 24 runs partnership between Mansoor and Irshad, which is progressing. Beautifully bowled. This is one of the best delivery what the bowler will go into ball. They're coming back for the second and they made it quite easily in the end. Leg by couple of runs. Frustration. The leg by couple of runs might be the ball is just defeating the infield. Ravi Salyan down at short fine leg, so that before the fielder from deep backward square leg to field that one, by running towards a deep fine leg, there is an ample time for the batter to complete the 2. 29 for the loss of 2 wicket. Oh, that was the fastest one. Wicket keeper not really up to the mark here. Again, what could be a dotted delivery? It's from the bat. It's from the bat, inside edge of the bat. That's why the wicketkeeper fails to collect the ball. The partnership of 27 runs in just 18 deliveries. Irshad is batting on 8 and Mansoor is batting on 11. And 10 balls altogether. It's a good combination. Good partnership is building up. 30 for the loss of 2 wicket. And wait and see. And remaining 2 overs, how NM Cricketers Mangalore will going to get the acceleration. So, for the latecomers, you are watching this quarter-final match between NM Cricketers Mangalore versus KCCR Kadri. And after this match, the match will be played between KFC Kodikal versus Young Friends Urwa. One more good match is coming up in front of huge spectators out here in UCG Cricket Ground and in front of huge viewers in Bedra Media YouTube channel. And everybody knows this is a biggest cricket tournament which is organized by Real Estate Group, registered Bejai Manglore, and under, of course, the name of United Trophy 2023. The winner will go to get 50,000 cash prize rupees with a very attractive United Trophy, and runner-up will go to get a cash prize of rupees 25,000 with the attractive runner-up trophy. So, the motive of this cricket tournament to help the needs of poor students, physically, a little bit correction, financially backward students, poor students will going to get the help from Real Estate Group registered Bejai after raising a fund in this particular cricket tournament. This time driven that one down to deep long on region and going to be a boundary there. Once it looks like the fielder will going to stop that one, but ball running down to deep, deep straight long on boundary for 4 runs. Have a look at that one. The fielder is a little bit wideish long on, so he's just charging in, but couldn't manage to stop the ball. Even couldn't manage to stop his speed of run. He's almost running into the pavilion, in the galleries, spectators' gallery. He had a chance of run out again. They're missing the stumps by call by umpire. So very important stroke which came from the bat of Irshad. The acceleration just I'm mentioning about, after they settle down in the middle, they will definitely going for the acceleration of run rate. The Dilip is furnished by Irshad in the first ball with the boundary, 35 for the loss of 2 wicket. Dilip is a man of the match in the previous match against Torpedoes Khana for his all-round performance. Now a lot of responsibility in this match to restrict the runs. Now wicketkeeper, what is doing there? What is really doing there? Again, so many extras which is given behind the stumps. Again, the frustration for the bowler as Dilip defeats the bat of Mansoor but fails to collect the ball behind the stump. Sometimes it's a hard time for the wicketkeeper. It's from the bat, looks like when it's deflected from the bat, it's not so easy for the wicketkeeper. 36 for the loss of 2 wicket. Again, this time the fielder, Dhanush misfielded, so that they're coming back for the second chance of run out. Now, looks like the batsman might be a little bit struggling to reach his home, but umpire just getting, wanted to get the help from a third umpire.
and is referred for the third umpire, Vivek. And umpire Arish Padil will going to give the decision here after getting some angles from the technicians of Bedra Media. So if it is out, then I think Mansoor need to go back. And if it is not out, Mansoor will going to continue. And the over number 5, which is in progress. But so far, both the batters really batted very well. They played as per the condition required. After losing 2 quick wickets, it's not so easy to come and perform. But Irshad, just like I mentioned about NM cricketers Mangalore, they included Irshad in the playing 11. And that will really looks like it's going to help in the batting department. So far, Irshad justifying his appearance in this playing 11 for NM cricketers Mangalore. And now we are just waiting for the third umpire decision, whether the Mansoor is safe or not. So next match, one more good match is coming up. KFC Kodikal versus Young Friends Urwa. KFC Kodikal registered their victory over Gori Young Boys. Young Friends Urwa. Young Friends Urwa, they got a bye, so that they got a place straight away in the quarter-final. And winner of this match and will go into play against winner of this quarter-final and in the semi-final. So altogether it's a fantastic day for cricket here, but here is a still touch and go, so that umpire, third umpire taking their own time to get the best result of this run out. So out is a call from third umpire batsman, just a little bit short of crease, because Mansoor wanted to put the bat into the crease so that Dilip completed the formalities and Mansoor is back into pavilion. It's 37 for the loss of 3 wicket, but very good innings, and being the experienced campaigner for the side of NM cricketers Mangalore, Mansoor once again showing his the potential that handling the pressure when they lost 2 wickets. And just came in and built a partnership along with Irshad, and he scored a valuable, that 24 runs, 34 runs partnership. It just comes in end between Irshad and Mansoor. 37 for the loss of 3 wickets. So Mansoor is out for 14, valuable 14. Now Riaz, one more danger batsman, came into bat. Dilip, the captain of the side, from the far end. Right arm over the wicket, balls to Irshad, the slower one, change of pace again. That going to be a disappointment. By call by umpire, one more by, one more extra. So always it's going to be a disappointment for the bowler whenever he's tried hard to defeat the bat of the batter, but not that much of cooperation coming from wicketkeeper behind the stump. Frustration for the bowler. 38 for the loss of 3 wickets. Dilip, right arm over the wicket to Riaz, lofted. I don't think we're going to get the distance. I don't think he will going to get the distance, but he will going to get the fielder in the deep long on. This time they are not making a mistake, that keeping the fielder in a right orthodox deep long on region. Because in the first delivery, when the batsman hits that stroke down the ground into deep long on region, the fielder is a little bit squarer, almost in a wideish long on region. But this time, the fielder is in orthodox long on region, so that he easily reaches to that catch down at the deep wideish long on. Riaz is out for golden duck. 38 for the loss of 4 wickets. This is a problem whenever the settled batsman back into pavilion. Then all in sudden the fielding team wanted to tighten up the screws by picking some wickets. Azhar is the new batsman, just came into middle. One more dangerous batsman. So known as one of the finisher in a present cricket in Underarm. Azhar, very, very destructive, especially in the slog overs.
The wait and see how he and Irshad will going to get the runs in the final over for NM Cricketers Mangalore. But at the same time, KCCR Kadri, they wanted to get one good over here because they doesn't want to chase a big total of 45 plus or 50 runs. They wanted to chase less than that. For that, this man, Bhavit, have to bowl very well. The first ball went for the Bejai. Again, look at that. What's really going on? Oh my goodness. Two buys. Two buys are going for the third. But this time suicider. Absolutely suicider. Now, the wicketkeeper not really having a good time behind the stump. It's not so easy for the bowler to defeat the bat of the batsman. But they got a couple of runs. NM Cricketers Mangalore, definitely they got what they really wanted in that particular over. But KCCR Kadri not doing a right job. The wicketkeeper missing it completely. Now, Ravi coming towards the wicketkeeper. Maybe Ravi wanted to keep the wickets or not. Because it's a frustration, isn't it? Absolutely frustration for the bowler. 40 for the loss of 5 wickets. The batsman, new batsman, very, very surprising to see that the captain Atif is coming in the middle order as a 7 batsman, number 7 batsman. Azhar back on strike. This is what a big mistake what the team will going to do here. They need to keep this man away from the strike. Because of the wicketkeeper missed it completely, the ball, and Azhar is back on strike. Bhavit. Right arm over the wicket. Again, improvisation. One of his favorite shot is a specialist of reverse stroke and reverse sweep. And Azhar picked up a single here with that single scored Namoza on top. 41 for the loss of 5 wicket. Last 4 deliveries remaining. Atif, the captain of the side. Different field set for a different kind of batsman. Atif got one fielder inside the ring in the back of cover point. Deep third man is there. This time, lofted. Lofted and going, but here is the captain running in front and complete the catch. Not really getting that one right from the middle of the bat. He's just hoisting it over, but not really getting enough room as well. One more wicket is back at the pavilion. So far, it seems to be a very good last over for KCCR Kadri. Just like I mentioned, any score around 45 plus is going to be a big total to chase down against the formidable bowling department of NM Cricketers Mangalore. Of course, we cannot deny the batting department of KCCR Kadri. They got also very good batting department, but I think the bowling department of NM Cricketers Mangalore is even better. So that this is over what KCCR Kadri wanted to restrict the runs. 1 run, 3 balls, 1 wicket. Good bowling from Bhavit. 4 times in this over. New batsman is on strike is Zaid. One more recognized batsman. Beautifully bowled. Perfect leg cutter ran. This is an outstanding delivery. Now, umpire showing the watch saying that you are exceeded that time and Kadri have to bring one fielder inside the ring. Deep third man fielder coming inside the ring. Altaf Walpadi. And here is Bhavit. Balls lofted down the and went to the fence for. This is a problem when you exceeds a time. You need to bring one fielder inside the ring. There is no long off at all. If it is orthodox deep long off, that might be a catch. If it is orthodox long off, that might be a catch there for the fielder. And Zahid, just like I mentioned, E1 is coming in the number 8 position, but is a recognized batsman. Is an accomplished batsman. And the way that he hitting the ball, absolutely magnificent. The last delivery of their innings is coming up. 47 for the loss of 6 wicket. Went for the reverse strike. Wicket keeper Ravi once again, we missed it. Wait for the umpire signal, it's a bye. 48. 48, which is the total score of NM Cricketers Mangalore
and they set a target of 49 to win the match. They got a run at the rate of exactly 8 runs per over, and they now need to get 49 runs to win this match. And it's going to be more interesting here. More interesting here when KCCR Kadri will go in to chase these runs. It's going to be a very interesting match in front of huge spectators. The match looks to be more interesting, but the 6 in that last over will be the big impact in this match. Even the extras which is conceded behind the wicket will be the main impact in this match. Wait and see how well KCCR will going to bounce back from their batting, and wait and see how well the cricketers going to justify the effort of the batters. We'll take a short break, commercial break, and after that commercial break, Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 49 the target for KCCR Kadri set by NM Mangalore. और पहले ओवर में 2 विकेट खोने के बावजूद एक बेहतरीन साझेदारी निभाते हुए मंसूर और इरशाद ने आखिरकार एक बेहतर स्कोर खड़ा करने में मदद की और अंतिम क्षण में जो छक्का लगाया था बल्लेबाज जाहिद ने, और इन सब की बदौलत एक बेहतर स्कोर यहां पर एनएम मैंगलोर खड़ा कर चुका है. 48 रनों का 49 रनों का लक्ष्य. 49 द टारगेट फॉर केसीसीआर कदरी, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती है. और जहां तक केसीसीआर कदरी के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो खासकर पहले 2 पावर प्ले ओवर का उन्हें फायदा उठाना होगा. अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप ऑफ एनएम मैंगलोर इस वक्त बल्लेबाजी करनी है तो ये दोनों सलामी बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं. अल्ताफ वालपाड़ी और मंजुनाथ, जिनमें वो काबिलियत क्षमता मौजूद है पावर प्ले का फायदा उठाने की, और देखते हैं वो किस तरीके की आरंभिक की शुरुआत यहां पर दे पाते हैं. ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार था, इन्हें तो ओवर भी कर गेंद अल्ताफ वालपाड़ी के लिए, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. मुजीब की पहली गेंद को इस वक्त भेज दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए अल्ताफ ने. और निस्संदेह मैं यकीन के साथ कहूंगा ऐसी आरंभिक शुरुआत निस्संदेह उनको मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है. और अल्ताफ समझते हैं कि उन्हें इस वक्त पावर प्ले का फायदा उठाना है, और पहली ही गेंद पर जिस तरीके से उन्होंने गेंद को डिस्पैच किया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर, काबिल तारीफ है. देखिए, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक, जस्ट lofted that one in a style and finds the gap as well, just taking the power play advantage and has got that one absolutely fantastically.
So positive start और straight away the bowler is now under pressure. मुजीब इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और देखना यह है कि अगले गेंद पर वो किस तरीके की गेंदबाजी अपनाते हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त मिड विकेट के फील्डर को पीछे भेजा जा रहा है डीप मिड विकेट पर। जहां तक सवाल है 7 खिलाड़ी पावर प्ले के अंतर्गत सीमा 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर इस वक्त मौजूद सीमा रेखा के पास। लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर मिड विकेट के फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है और इस बीच गेंदबाज तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद अल्ताफ के लिए एक बार फिर से खूबसूरती के साथ निकाला बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए 6 and a boundary and Altaf Walpadi looking on a fire. So this is an absolutely magnificent start for them. और अल्ताफ वालपाड़ी इस वक्त अपने इरादों को इस वक्त बुलंद कर चुके हैं। छक्का और चौका और मुजीब की गेंद पर खासकर पावर प्ले ओवर्स में छक्का या चौका लगाना उतना आसान नहीं है और यहाँ पर अल्ताफ वालपाड़ी ने यहाँ पर पहले 2 गेंदों पर छक्का और चौका लगाने के बाद इस वक्त सीधे गेंदबाज को दबाव में ढकेल चुके हैं। अब देखना यह है कि अगली गेंद पर वो क्या करते हैं। क्या मुजीब अगली गेंद पर बाउंस बैक करते हैं? क्या अल्ताफ वालपाड़ी फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलते हैं? देखते हैं अगले गेंद में क्या होता है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज तैयार मुजीब दाहिने हाथ ओवर द विकेट अल्ताफ के लिए यह गेंद उछाला स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में और अल्ताफ गेंद तक जब तक फील्डर पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। He just lofted that one in a style, just clearing the infield. और अल्ताफ इस वक्त पूरी तरह ब्लाइंड क्रिकेट अपनाते हुए वो जानते हैं विस्फोटक शुरुआत ही उन्हें यहाँ पर अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप उन्हें लक्ष्य तक पहुंचा सकती है और हर गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक को यहाँ पर खेलते हुए 3 गेंदे 12 रन 13 रन यहाँ पर बटोर चुके हैं 3 गेंदों में 12 रन यहाँ पर बटोर चुके हैं 3 गेंदों में 12 रन विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त तैयार मुजीब देखना यह कि किस तरीके के कमबैक को वो यहां पर करते हैं। अल्ताफ सामना करने के लिए तैयार ये गेंद इस बार बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी एक्स्ट्रा क्विक कर रहा फुलर लेंथ गेंद थी। गेंद को ऑन साइड पर ऑफ साइड पर उछालना चाहा था गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई एक्स्ट्रा पेस के साथ शॉर्ट फाइल लेग फील्डर के हाथों में निकल गई। बेहतरीन कमबैक और फिर से एक बार मुझे इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अल्ताफ वालपाड़ी सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया मिड विकेट पर फील्डर मौजूद नहीं गेंद सीमा रेखा से बाहर छक्का या चौका देखना पड़ेगा। छक्का यहां पर लग चुका है। So this is an absolutely magnificent start for them. डीप मिड विकेट पर फील्डर थे देखिए किस तरीके से गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो अल्ताफ पहले ओवर में छाते हुए 18 रन यहां पर बन चुके हैं और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा अल्ताफ की ये बेहतरीन बल्लेबाजी केसीसीआर कदरी को एक धमाकेदार शुरुआत यहां पर दे चुकी है। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में तैयार मुजीब दबाव में इस वक्त नजर आते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार चिप किया इस बार हवे में मौका हो सकता है मिड ऑफ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आखिरकार इस कैच को लपकने में सफल। तो सारे खिलाड़ियों ने इस वक्त सारे दर्शकों ने तालियों के साथ उनका अभिवादन किया अल्ताफ वालपाड़ी का। हालांकि 6 गेंदे उन्होंने जरूर खेले लेकिन 18 रन उन्होंने बनाए 300 स्ट्राइक रेट की मदद से। और मैं समझता हूं सतीश जो शुरुआत एक्सप्लोजिव विस्फोटक शुरुआत की जरूरत थी वो एक्सप्लोजिव शुरुआत यहां पर केसीसीआर कदरी के लिए पहले पावर प्ले ओवर में अल्ताफ वालपाड़ी दे चुके हैं। Well, Gopi, it's been a phenomenal batting performance, isn't it? It's a phenomenal because Mujib, you know, Gopi, one of the fastest bowler in the present cricket. It's not so easy to pick the quickest delivery of the Mujib. And look at the bat speed of that man. Outstanding, isn't it? 2 magnificent strikes towards some mid-wicket and square leg region. Outstanding cricketing stroke. The kind of explosive start which is required, for KCCR Kadri. This is a phenomenal batting performance here from Altaf Walpadi. Of course, Gopi, Altaf Walpadi, someone like Altaf Walpadi, doesn't know the name, especially in UCG cricket ground. But the last 2 seasons, they started to perform in this UCG cricket ground. And in this particular match, where he is performing, this name will going to be sticked in the mind of cricket lovers permanently.
एग्जैक्टली सतीश, दर्शकों के जहन में ये नाम अब बैठ जाएगा, अल्ताफ वालपाड़ी। वालपाड़ी जो है उनका गांव का नाम है। तो यहाँ पर अल्ताफ पहले ओवर में अपना किरदार बाखूबी अदा कर चुके हैं। अब गेंदबाजी आरंभ करते हुए आतिफ और एक और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन मंजुनाथ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, और जहां तक सवाल है इस वक्त आतिफ का, तो आतिफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज, एक और बेहतरीन बल्लेबाज रवि पट्टयूर मौजूद। बाउंस बैक इस वक्त करना है एनएम मैंगलोर को, और किस तरीके से बाउंस बैक को गेंदबाजी में करते हैं इस ओवर में देखना पड़ेगा। और इस बीच मंजुनाथ सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ आतिफ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए 3 से 4 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार मंजुनाथ के लिए। यह गेंद मंजुनाथ के लिए बेहतर गेंद, लेकिन ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ चुका है 19 रनों पर, 30 रिक्वायर्ड एंड 30 बॉल्स रिमेनिंग। स्ट्रेट अवे द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू एग्जैक्टली 6 रन्स पर ओवर। अब जरूरत है सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की केसीसीआर कदरी को। तो यहाँ पर बातचीत जारी है, शायद गेंद पर बल्ला टकराया था नहीं, देखना पड़ेगा। तो इस वक्त बातचीत यहाँ पर जारी है, और अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त मध्य प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है। तो यहाँ पर देखना यह है कि गेंद वाइड थी या नहीं, और देखते हैं तृतीय अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। तो निस्संदेह सतीश अल्ताफ वालपाड़ी, और यहाँ पर पूरी तरह वो दबाव को केसीसीआर कदरी के ऊपर कम कर चुके हैं। और खासकर पावर प्ले ओवर में मुजीब रियाज जैसे गेंदबाजों को खेलना उतना आसान नहीं है, और पहले ओवर में जिस तरीके के उन्होंने बल्लेबाजी की है निस्संदेह काबिले तारीफ है। एब्सोल्युटली ब्लाइंड क्रिकेट उन्होंने खेला है पहले ओवर में। Absolutely blind cricket, Gopi. His batting is just memorizing that the batting of the 1992 World Cup and great batch is promoted as the opener for a destructive batting. That kind of intensity, the killing instinct what batsman has got. Absolutely, Altaf always is got a killing instinct, isn't it? Whatever the bowler is facing, he's not really bothered about which bowler is facing. But he just seeing the ball, he's not seeing the bowler. That's the result here we are watching here, Gopi. He's just watching the ball and not really having that much of footwork. He's really not having that much of footwork, but high-end coordination. At the same time, he got a very good eyesight, Gopi. He's picking up the line and then so quickly, and bat speed is outstanding. एग्जैक्टली सतीश, बिल्कुल ब्लाइंड क्रिकेट उन्होंने खेला, बिल्कुल सही उदाहरण आपने दिया। मार्क ग्रेट बैच 1992 के वर्ल्ड कप में जो ब्लाइंड क्रिकेट खेलते थे, पावर ऑफ प्रेशर ऑफ कर देते, और 1996 विल्स वर्ल्ड कप में जयसूर्य और कलवितरना उसी तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने अपनाई थी, और हर मैच को आरंभिक जोड़ी की बदौलत वो जीतते हुए आए थे, और आखिरकार अंतिमकार वो विश्व कप में विजयी रहे थे, विश्व कप विजेता रहे थे 1996 वर्ल्ड कप में। तो उसी तरीके की बल्लेबाजी पहले ओवर में अल्ताफ ने अपनाई, और यहाँ पर काफी हद तक केसीसीआर कदरी के ऊपर के दबाव को वो कम कर चुके हैं। यहाँ पर वाइड घोषित किया गया है, और यहाँ पर अंपायर का निर्धार सही होता हुआ, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदें बाकी, 30 रन चाहिए। द रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू एग्जैक्टली 6 रन पर ओवर। अब यहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जरूरत है, और देखना यह है कि यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी केसीसीआर कदरी अपनाते हैं। और जहाँ तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए घातक गेंदबाजी इस मैच में वापसी करने के लिए। तो आतिफ इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद है। एक फील्डर इस वक्त जाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर आसिफ, और ओवर की पहली गेंद लेकर आतिफ इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजुनाथ
इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद आतिफ की मंजुनाथ के लिए धीमी गेंद स्वीप किया। इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं। फील्डर गेंद को रोकने में सफल अपने पैरों के जरिए, और दूसरे जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे पर बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। धीमेपन को पहले ही पहचान लिया था मंजुनाथ ने, और गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त मोड़ दिया डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर 2 रनों के लिए, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 21 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। आतिफ एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट मंजुनाथ के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को चिप किया, गेंद हमें में, फील्डर काफी पीछे मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर बन चुका। 22 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Absolutely fantastic progressing here now for KCCR कदरी, और इस बीच आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रवि पटयूर इस वक्त सामना करते हुए, गेंद ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ into the gap as well, 1 रन मिलेगा। क्लीन कलेक्शन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े रवि पटयूर, इस बार नहीं बच पाएंगे। रवि पटयूर डिजास्टरली ही इज नाउ बैकिंग टू पवेलियन। पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे, स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा। देखिए यहां पर किस तरीके से विकेट कीपर ने थ्रो को कलेक्ट किया, नॉन स्ट्राइकर रन पर थ्रो किया और अपने स्वस्थान पर वापस नहीं लौट पाए रवि पटयूर, और दुर्भाग्यवशात आउट होकर रन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका। तो यहां पर सतीश रवि पटयूर का विकेट गिर चुका है, और निस्संदेह यहां पर यह विकेट का गिरना कुछ हद तक केसीसीआर कदरी के लिए यहां पर ड्रॉबैक साबित हो सकता है। Exactly, Gopi. Unnecessarily they lost the wicket. But might be, Gopi, there is probably the possibility of second run because ball which is went in the gap. But Manjunath is of course knows that no need to panic at all, and his strategy is also right. And even Ravi Padel's strategy is also right. But something is going here is that in the mind of Manjunath, why to take the risk when it's a run rate required is a 6 runs per over. So that might be the Manjunath is not interested. But Ravi Padel's wicket definitely going to be an opportunity for NM Cricketers Mangalore to back into this game. Exactly Satish, रवि पटेल का विकेट का पतन इस वक्त एनएम क्रिकेटर्स के लिए वापसी करने के लिए सहकारी हो सकता है। देखते हैं किस तरह से वो वापसी करते हैं। दाहिना ओवर द विकेट मंजुनाथ के लिए बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, क्विक रन फ्रॉम आतिफ, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है आतिफ का, जिसमें सिर्फ 5 रन वो अब तक प्रदान कर चुके हैं। गेंदे 4 इस ओवर में फेंके जा चुके हैं, और अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए। एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम, खचाखच मैदान दर्शकों से इस वक्त भर चुका है। आज वर्किंग डे गुरुवार होने के बावजूद निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति होती हुई। यह गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिकेट एट द लास्ट मिनट, गेंद पहुंची पॉइंट पर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, और बल्लेबाज इस वक्त अशोक नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, और एक और प्रमुख बल्लेबाज केसीसीआर कदरी की ओर से। सेंसिबल क्रिकेट की इस वक्त जरूरत है, और देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज। गेंदबाज आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, स्वीप करना चाहता, गेंद उनके पहुंच से बाहर, और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रन से चाहिए इस वक्त केसीसीआर कदरी को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, आतिफ की गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद हवे में नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 26 रन बन चुके हैं। पहले ओवर में सतीश रन बने 18, अल्ताफ फॉल बॉडी की बदौलत। दूसरे ओवर में रन्स बने 8, 2 ओवर में 26, 24 गेंदे बाकी, 23 रन चाहिए। अभी भी केसीसीआर का तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ, और निस्संदेह बाउंस बैक करना है तो अब एनएम के गेंदबाजों को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाजी, असामान्य गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी इस मैच में वापसी करने के लिए। Well, Gopi, after getting such a position, such a good position after getting 18 runs in the first over, even I think second over is maybe it's 8 runs, but they got a wicket off Ravi Salyan. That's a different story. But equation definitely, Gopi, just like you're mentioning about, still looks like KCCR Kadri in a commanding position because 23 runs to get from 24 balls, and just like you are mentioning about one good over which is badly required for NM Cricketers Mangalore. Good over in the sense, Gopi, the wicket taking over plus economical over, and that I think is a reason of affect the bowler as far as NM Cricketers Mangalore is concerned. The man in form from the ball as well as from the bat definitely got a potential of giving that over for NM Cricketers Mangalore. Wait and see, sensible batting which is required for KCCR Kadri, but just like I mentioned, extraordinary bowling which is required for NM Cricketers Mangalore to bounce back.
एग्जैक्टली सतीश, और यहाँ पर रियाज को गेंदबाजी पर बुलाया गया है। जैसा कि आपने फरमाया सतीश, रियाज के पास वो क्षमता एबिलिटी है कि मैच के तख्ते को पलट कर रख सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं इस ओवर में वो किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हैं। पहली गेंद शेयर करना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एक्स्ट्रा पेस के साथ बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद निकली। इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में स्टीयर करने के प्रयास में चूके इस वक्त अशोक, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 23 बॉल्स लेफ्ट, 23 रन्स मोर, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। स्टिल द मैच इज नाउ इक्वली बैलेंस्ड, और गेंदबाज इस बीच रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर, कोई फील्डर वहां पर मौजूद है और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। अशोक ने गेंद को खेला था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था, और वाडी लॉन्ग ऑफ पर जो फीडर थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से हुआ था यहाँ पर, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था लेकिन प्लेसमेंट गलत था, और गेंद सीधे हवे में होती हुई सीधे पहुंची लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में आसानी के साथ। तो तीसरा विकेट गिर चुका है, और जहां तक विकेटों के पतन का सवाल है, 18 रनों पर पहला विकेट गिरा था, 23 रनों पर दूसरा विकेट गिरा, तीसरा विकेट गिरा अभी अभी अशोक के रूप में 26 रनों पर। और मैं समझता हूं सतीश यही एक सही वक्त है इस वक्त बाउंस बैक करने का एनएम मैंगलोर को। अगर यहां पर एक दो विकेट और वो उखाड़ते कम अंतराल में तो निस्संदेह यहां पर उनका पलड़ा भारी हो सकता है। Well, Gopi, irresponsible cricketing stroke, isn't it? No need to go for that kind of cricketing stroke. When it's just a rotation of strike which is required, you're going for the big shot. That means it's not this is definitely going to be a big mistake of the batter, isn't it? No one rises suddenly, even the sun, Gopi. You need to be a little bit patient, isn't it? That was really lacking here from the batter, Ashok. But captain just came into middle. Wait and see how captain will go into play. Is captain's knock. Exactly, सतीश। देखते हैं यहाँ पर कप्तान किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, रन के लिए इस बार चूका, थ्रो चूका इस वक्त, और बल्लेबाज दिलीप बाल यहाँ पर बच चुके हैं। और जहां तक सवाल है स्कोर का, इस वक्त पहुंच चुका है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जैसा कि बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, कोई भी अपने आप उभरता नहीं है, सूरज के अलावा अपने आप को उभरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर निस्संदेह यहाँ पर जो बल्लेबाजी जिस तरीके की बल्लेबाज कर रहे हैं, तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैच इस वक्त एक रोमांचक मोड़ की ओर इस वक्त बढ़ेगा। तो गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। और जहाँ तक अशोक का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव इस वक्त केसीसीआर कद्री के बल्लेबाज के ऊपर है, वो देखना है कि उस दबाव को किस तरह झेलते हैं। और यहाँ पर रियाज इस वक्त तैयार मंजुनाथ के लिए, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद मंजुनाथ के लिए ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर, केम अलोंग द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। अब 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन यहाँ पर रियाज प्राप्त कर चुके हैं, एंड द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। अब 22 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 20, 22 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 20 बॉल्स। और यहाँ पर मंजुनाथ देखते हैं अगली गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। अंपायर विकेटों को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए अपनी अगली गेंद लेकर रियाज तैयार। सिर्फ 1 रन अपने पहले 4 गेंदों में दे चुके। फील्डिंग में जमावट वहां पर चलते हुए दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। दाहिना तो ओवर द विकेट मंजुनाथ के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, बल्लेबाज 1 रन मिलेगा उन्हें जरूर बाई के रूप में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रकृति पर। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और कुल मिलाकर 19 गेंदें बाकी और रन से चाहिए 21। स्टिल द मैच स्टैंड्स इन अ बैलेंस। रियाज इस वक्त तैयार दिलीप के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 3 से 4 कदम उनका रन अप। ये गेंद इस बार गेंद को हल्के से खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके, रन के लिए दौड़ पड़े, दिलीप के लिए खतरा हो सकता है, चूक चुका है निशाना, चूक चुका है। दूसरी बार इस ओवर में बच चुके हैं दिलीप रनआउट के मौके से, और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 20 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 ओवर्स, दैट मींस इन 18 बॉल्स। और आइए सतीश आपको बुलाते हैं आगे का आंखों देखाल, 3 ओवर का आंखों देखाल सुनाने के लिए। 18 गेंदे 20 रन चाहिए, और मैं समझता हूं पहले 2 ओवर में 25 रन प्रदान करने के बाद इस ओवर में बेहतर कमबैक किया है रियाज ने, जिसमें
3 रन उन्होंने प्रदान किया। पहले 2 ओवर के बाद 26 स्कोर था, अब 3 रन इस ओवर में रियाज ने प्रदान किए हैं और एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया और इस ओवर की बदौलत रियाज अपने टीम एनएम मैंगलोर को कुछ हद तक इस मैच में वापस ला चुके हैं। Well, right, Gopi, just like I mentioned earlier, when you are told that an extraordinary bowling performance which is required, and Riaz has got a potential of doing that, and he's justifying as well. So that is a good over. And only 1 run, Gopi, through which is by the mistake of the wicketkeeper, that 2 bites. And altogether, I think it's a fantastic over. Just like what I mentioned earlier, the Riaz can do the magic here, and he did the magic. Now, first time, the asking run rate which is going over that 6 runs per hour. Once the asking run is going over 6 runs per hour, suddenly the pressure is building up for the batters. Now, 18 balls remaining, 20 runs required for the victory. Atif brought into attack, nicely turns that one to square leg region. This is what you call the intelligent. It's coming back for the second. Fumble from the fielder, grabbing the opportunity. Now, one of the senior most player in the side of NM Cricketers Mangalore, Faisal, I think is a very cool customer, but sometime in this condition of the game is not so easy. And everyone is just firing to that man. But sometimes it's happening in cricket, isn't it? And he is always a very good fielder. But sometimes it's happening in cricket because the pressure situation, it's not so easy, Gopi, especially in front of huge spectators. Everyone is started to feel the pressure. It's not so easy. It's understandable, and but each and every run, which is very, very important for NM Cricketers Mangalore. That's why everyone is frustrated because of that fumble. But both the batters got us couple of runs. 31 for the loss of 3 wickets. Again, driven that one. Atif has got opportunity. Now who will go into a blame? Atif? This is all happening in cricket, isn't it? Everyone has to deal with some tough time. The Atif in his follow-through has got opportunity to field the ball, to hit the stumps in the non-strikers, and he's also did the mistakes here. And one more single is taken. 32 for the loss of 3 wickets, and here is 17 more runs required for the victory. Diwan nicely down to deep long on region. Well, good piece of fielding there by the fielder. Once it looks like ball is just traveling very quickly down to deep long on region, but the fielder has got a great job. Zahid has got a very good time in the field. One who taken a very good catch in the deep long on, a very good time in the deep long on region as well. Couple of runs here for the big man, Manjunath. Reverse sweep, going for the reverse sweep, change of pace. Good thinking there by Atif. Very good thinking there by Atif. Seeing that batsman Manjunath is going for the premeditated switch hit, is just reducing the pace, bowled a slower run and defeats his bat. 34 for the loss of 3 wickets. Atif again from the Rohan Corporation and bowls. The batsman drives that one firmly down to deep long on region. Azhar, it's not a neat collection. It's not a neat collection, but batsman settled for the single. 35 for the loss of 3 wickets. And maybe the strategy from Azhar that after doing that, he can get the wicket if the batsman going for the second run. Atif again, right arm over the wicket, beautifully bowled, but I think that ball is just going down. Oh, direct it, but umpire says it's not out. Leg by call by umpire, just ball just going down the leg stump. One more single, and with that single, scored Namozan to 36 for the loss of 3 wickets. And Gopi, I think it's 7 runs which just came from that over, and 13 runs required from 12 balls. I think in this particular over, both the batsmen did a great job that dealing with the singles. Now, 13 to get, 12 runs required, match is evenly poised. Exactly, Satish. यहाँ पर मैच बराबरी पर रुक चुका है. यंग फ्रेंड्स उर्वा ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request all the players of Young Friends Urwa and KFC Kodikal please to be reported here to make a sign in the official chart. So exactly, Satish, what you told. तो यहाँ पर 12 गेंदे 13 रन. The match is now evenly poised. और पिछला ओवर 7 रन बना और यहाँ पर हर गेंद पर रन बनाना जरूरी बन चुका है केसीसीआर कदरी के लिए, जबकि एनएम मैंगलोर को हर गेंद पर रन रोकना जरूरी बन चुका है. फिलहाल सतीश ये 2 ओवर काफी दिलचस्प होंगे इस मैच के अंत में. Absolutely, Gopi. 13 runs required. That 13 which is conceded in the form of extra by KCCR Kadri. That's the point to be noted here. And nicely driven that one to square leg region. Looking for the second. They're going for the second. Fumble from the fielder. No. See, now this is what you call the pressure. This is what you call the pressure of the game. It's not so easy for everyone. It's not a Faisal, but everyone.
and he won the mid-wicket fielder also feeling the pressure. What could be a certain single, and that converted into couple. Now, 11 balls remaining, 11 runs required for the victory. 10 is enough, Gopi, because the fall of wicket is concerned. 11 to get. 11 runs. 11 to get from 11 deliveries. Riaz, right above the wicket. Sensible, absolutely sensible. This is what you call the captain. This is what you call captain. Captain is one, is leading from the front. And in the previous match also, he played a magnificent innings. Whenever his team is required, some good batting. This is a total different batting, Gopi. In the previous match, Dilip is played aggressive frame of aggressive cricket batting, because that was a situation is supposing him to do that. Here, they needed some sensible batting, cool and calm, and once again he producing that innings. Oh, Spectra wide, absolutely Spectra wide. This is what you call that pressure. This is all that pressure, and the Riaz, the same Riaz who bowled the first over magnificently, now when it's 13 required from 12 balls, he is also started to feel the pressure. 40 for the loss of 3 wicket, 9 required for the victory. Manjunath went for the reverse sweep. Chance, oh my goodness, wicketkeeper missing it. They're going for the run. This is the presence of mind, and one is the absence of mind. This is now, if NM cricketers Mangalore going to lose this match, they lost the match because of their own mistakes. Misfield, fumbles, and the wicketkeeper behind the stump. Have a look at that one. Ball is not in the hands of Asif. He misses the ball, uprooted the stump, ball which is not in the hands of Asif, so that Manjunath has got a presence of mind, asking his partner, come, take the run. The wickets already is uprooted, no chance at all to getting the run out there. The 41 for the loss of 3 wickets, now 8 more runs required for the victory. 9 balls remaining, he won 7, which is going to be enough without losing a wicket. KCCR Kadris, easily they will going to reach the target. 8 10 required, 9 balls remaining. Captain of KCCR Kadris on strike. Yes, a slower one, beautifully placed that one. Once again, they're running hard, they're looking for the second. In comes the throw, they completed a couple. What a sensible batting here from Dilip. Definitely, I want to compare him as a Mahendra Singh Dhoni, Gopi. Absolutely, is a perfect comparison. It's a perfect comparison of former Indian wicketkeeper batsman Mahendra Singh Dhoni, one who is playing as per the condition. Every kind of batting you can expect from this man. What a sensible batting he's playing here. 43 for the loss of 3 wickets. Again, chip that one nicely, wide of the fielder, Azad the fielder, but again the couple of runs. Now, KCCR Kadri started to dream of winning this run, because they are not far away from the target. 4 runs required for the victory for 7 deliveries. 4 runs required in the remaining 7 deliveries. What a fantastic batting display here from the captain of the side. Here is again Riaz. Bowles, he is unstoppable. He is seeing the ball like a football, keeping the strike for the next over. 46 on the board, 3 runs required for the victory, and looks like, Gopi, it's all over for NM cricketers Mangalore. But what a fantastic captain knock. Absolutely quite a different knock compared to his previous knock. He played 16 runs in just 4 deliveries in the previous match, when they are batting for some acceleration of run rate is required. When it's some partnership which is required, sensible batting is required. Once again, Dilip is leading from the front as a captain. Exactly, Satish. Absolutely fantastic knock coming from Dilip. पिछले मैच की तरह इस मैच में भी सेंसिबल क्रिकेट. पिछले मैच में आक्रामक बल्लेबाजी उन्होंने अपनाई थी. 16 रन बनाए थे सिर्फ 4 गेंदों पर मैच के उनके पारी के अंतिम क्षण में. यहाँ पर सेंसिबल नॉक पिछले ओवर में अपनाई, और कपल के रूप में 2-3 कपल उन्होंने बटोरे. 10 रन पिछले ओवर में बने, और इस ओवर की बदौलत केसीसीआर कदरी अब इस मैच में पूरी तरह वापस आ चुका है. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, अंतिम ओवर में कुछ घातक गेंदबाजी, मैजिकल बॉलिंग, चमत्कारी गेंदबाजी ही अब एनएम मैंगलोर को इस मैच में वापस ला सकती है. Absolutely, go magical and miracle bowling, which is badly required, but he is finished the match in a style. One bounce into the fans. KCCR Kadri are into the semi-final of this prestigious United Trophy 2023. What a fantastic knock coming from once again from Dilip. Outstanding, one of the best innings. One of the best innings in UCG cricket ground, which is played by Dilip. He is the man of the series and man of the match in the RRP Memorial Trophy, and he is justifying why
He's justifying his why. Why is the captain of KCCR Kadri. Once again, he's been outstanding, defeating one of the strong contender of this cricket tournament. And two men which is really responsible for the victory. One is Altaf Alpadi, one who opened the gate. For KCCR Kadri, and one is Dilip, one who just finishes the match for team KCCR. We'd like to announce the man of the match of this fantastic match. For all-round performance, 3 wickets and 16 unbeaten. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So now it's a presentation of a Man of the Match award for Dilip for his outstanding all-round performance. The consecutive second times he is getting that Man of the Match T-shirts and then the cap, and which is sponsored by Grahini Masala. So thank you very much, Grahini Masala, for your sponsorship of every Man of the Match of this prestigious United Trophy. And given by Prashant. Prashant is presented with Man of the Match, and I request the captain of NM Cricketers Manglore, NM ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
memento from our chief guest, NM Cricketers Mangalore captain. I request Atif, the captain of NM Cricketers Mangalore, please collect your representation memento from our chief guest. Now here is Captain Atif collecting that memento, and the hard-fought victory for team KCCR Kadri. Now one more good match, Young Friends Urwa versus KFC Kodikal, and before the innings will start of Young Friends Urwa, I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. I request the openers of Young Friends Urwa, please go to bat. The openers, Young Friends Urwa, please go for bat. So, धन्यवाद सतीश. So the match starts between Young Friends Urwa and KFC Kodikal. One more good match is now coming up, and the openers for Young Friends are a destructive batsman Arshad along with Altaf Basavanagudi. One more good striker of the ball for openers for Young Friends Urwa. The ball is taken by Shakir. Starts the fresh proceedings from the commentator box, and the first ball of the innings is now coming up. पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और इस बीच गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. अंतिम लीग मैच पहले दौर का बी पूल का यहां पर शुरू हो चुका है. एक और बेहतर मैच, एक और अच्छा मैच यंग फ्रेंड्स और केएफसी कोडिकल के बीच में इस वक्त से शुरू हो चुका है. यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 1 रनों पर. रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कहना पड़ेगा. पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज शाकिर इस वक्त गेंदबाजी में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए. तो
इस बीच शाकिर तैयार, ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, इस बार गेंद पैरों पर टकराई थी डिलिबरेटली, इस बार गेंद को पैरों पर लगने दिया था, अगर दौड़ते तो भी शायद रन उन्हें नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर विकेट उखाड़े गए और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। तो देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। नॉट आउट इज द डिसीजन एंड एवरीथिंग सेफ फॉर द बैट्समैन। और उनकी पारी इस वक्त आगे बढ़ती हुई, शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार अल्ताफ बसवनागुड़ी। और इस वक्त दाहिने हाथों पर द विकेट शाकिर गेंदबाजी करते हुए, पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी में। और शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार चिपकी अल्ताफ ने, गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर और वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। अल्ताफ बसवनागुड़ी की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। गेंद को हेलीकॉप्टर के जरिए, शॉट के जरिए स्कूप इस वक्त किया था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और गेंद यहां पर पहुंची लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, जहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। फर्स्ट विकेट लॉस फॉर देम एंड नाउ दे आर वन फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। अल्ताफ बसवनागुड़ी इज नाउ डिपार्ट्स। तो इंतजार है इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज का और यहाँ पर पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। दोपहर के 1:05 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है। सूरज आसमान की बुलंदियों की इस वक्त छूने के बाद अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता यहाँ पर बढ़ती हुई और इस बढ़ती हुई धूप की तीव्रता के साथ गर्मी की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई, खेल की भी तीव्रता यहाँ पर बढ़ती हुई और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ और ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई, नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद राजेश उबर, जो कि नए बल्लेबाज के रूप में, जो कि राजेश उबर इस वक्त क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार है। और गेंदबाज शाकिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद अंदर की ओर आती है, गेंद को ढकेला, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। इस बीच इससे पहले कि मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता और मिड ऑफ के इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर रहा। तो निस्संदेह जहाँ तक सवाल है एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का, तो यंग फ्रेंड्स उर्वा को इस वक्त ज़रूरत है एक आरंभिक बेहतर साझेदारी की। और इस बीच दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस बार उछाला अरशद ने, नॉट क्वाइट मिडिंग इट, इनफैक्ट द बैट्समैन गेट्स अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक। और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास, तीसरा रन लेने का मौका जरूर है लेकिन नहीं मिलेगा। और 2 रन यहाँ पर बन चुके हैं, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs after completion of first over for young friends Urwa. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಂಡಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಂಡಾ ವಾಹನದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಕೀ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ಅರ್ಷದ್ ರವರದು ಕೀ। तो यहाँ पर 4 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और गेंदबाजी हमसे दूर वाली छोर से यानी रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज चेतन और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश। तो चतुर्थ और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच, the fourth and the last quarter final match of this tournament is now progressing here of United Trophy 2023, which proudly organized by Real Estate Group registered Bejai Mangalore. So a fantastic tournament is now progressing here and the 4th match of the day 2 of this tournament is now going on here. Just started, just short while ago in fact। और ओवर की पहली गेंद लेकर चेतन इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद चेतन द्वारा,
ये गेंद इस बार राजेश के लिए, आक्रामक स्ट्रोक को उछालना चाहा स्वयं बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर हकीम भी समझ नहीं पाए कि गेंद कहां पर गई है, लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में वो इससे पहले कि गेंद को फील्ड करे, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर आगे की ओर बढ़ते हुए गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका और एक बार फिर से गेंदबाज चेतन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दर्शकों से मैदान खचाखच भर चुका है, एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज चेतन की ओर की अगली गेंद राजेश के लिए, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, गेंद को बिना देखे रन लेने के हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाए, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए देखा कि गेंद वहां पर तेजी के साथ गेंद पर विकेट कीपर हकीम लपक रहे हैं, अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 4 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और राजेश एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। चेतन दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश के लिए तैयार। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा। जोखिम भरा रन यशस्वी पूर्ण करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरशद इनफॉर्म बल्लेबाज, एक विस्फोटक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं अंडरआर्म क्रिकेट के, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस वक्त अपने हाथों में, दोनों हाथों में मिट्टी रगड़ने के बाद वो इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और चेतन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार चेतन दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद के लिए, यह गेंद उछाला, टॉप एज, मौका पॉइंट पर और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। अरशद का बेशकीमती विकेट गिर चुका है। आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त करते हुए और इस एक्स्ट्रा बाउंस की बदौलत गेंद उनके टॉप एज पर टकराई। देखिए किस तरीके से हुआ था और पॉइंट पर आसान सा कैच यहां पर लपक चुके हैं फील्डर और अरशद का विकेट यहां पर गिर चुका है। 5 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है और यहां पर यंग फ्रेंड्स उर्वा संकट की स्थिति में नजर आता। वाइट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और यहां पर जहां तक नए बल्लेबाज का सवाल है, एक और प्रमुख बल्लेबाज अजमल जो कि यंग फ्रेंड्स उर्वा के आधार स्तंभ एक वक्त माने जाते थे, एक लंबे अंतराल के बाद वो यंग फ्रेंड्स उर्वा का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए और यहाँ पर निस्संदेह इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा को ज़रूरत है उनकी एक बेहतर पारी की। और यहाँ पर इस बीच सामना करने के लिए तैयार और चेतन ने इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अंपायर से गार्ड लेते हुए अजमल आक्रामक मिश्रित तकनीकी तौर के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक जाने जाते हैं अंडरआर्म क्रिकेट के। लंबी बारी खेलने की क्षमता वो रखते हैं और यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज चेतन की ओर की अगली गेंद का। चेतन दाहिना तो ओवर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिना हाथ के बल्लेबाज अजमल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद किस वक्त खेलना चाहा, स्क्वायर ऑफ द विकेट, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार चेतन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए KFC कोडिकल के गेंदबाज और चेतन एक बार फिर से तैयार अजमल के लिए। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, शॉट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंचे, 1 रन मिलेगा। राजेश काफी धीमे, निशाना इस वक्त टकरा चुका है लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति, 2 बेहतरीन ओवर। द पावर प्ले ओवर कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ KFC कोडिकल। नाउ 6 for the loss of 2 wicket. Young Friends Urwa scored after completion of 2 overs. और जहां तक इस मैच का सवाल है, इस मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला के दूसरे सेमीफाइनल मैच में KCCR कदरी का मुकाबला करेगी। विनर्स ऑफ दिस मैच straight away go into the semi-final of this competition, and in the second semi-final match KCCR Kadri will takes over the winners of this match. और देखते हैं इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हकीम 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और जहां तक सवाल है पहले 2 पावर प्ले ओवर में, तो निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा 2 पावर प्ले ओवर में
केएफसी कोडिकल के गेंदबाज तो जो दो गेंदबाज इस्तेमाल किए गए हैं, शाकिर और चेतन, निस्संदेह अपने काबिलियत क्षमता के अनुसार उन्होंने गेंदबाजी की है। तीसरे ओवर की पहली गेंद हकीम के बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। मैं देखना चाहूंगा क्या हुआ था। एक्चुअली मेरी नजरें पॉइंट फील्डर के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, थोड़ी सी मिसफील्ड और आखिरकार राजेश ने वापस दौड़ना शुरू किया। दोनों छोर पर एक छोर पर दोनों बल्लेबाज थे और आखिरकार इससे पहले कि अपने सुस्तान पर लौट सके राजेश, यहाँ पर ये रन आउट हो चुका है। तीसरा विकेट गिर चुका है। एब्सोल्युटली a difficult time is now continuing here for the batsmen of young friends Urwa now. They lost their 3 top orders wicket for adding just 6 runs on the board, and this is an absolutely shackling start for them. नए बल्लेबाज प्रसाद, एक और बेहतर बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। स्ट्राइकर एंड पर अजमल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हकीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव straight forward into the hands of extra cover fielder. Vital wicket lost for young friends Urwa, and now they are looking deep in trouble. और गेंद को खेला था इस वक्त अजमल ने, लेकिन 2 गलतियां कर बैठे। फर्स्ट ऑफ देम, गेंद को जमीन पर रखने में असफल, और दूसरी बात यह है कि गेंद को प्लेसमेंट बिल्कुल गलत थी। इस बार देखिए गेंद को खेला किस तरीके से, सॉफ्ट डिसमिसल, और चौथा विकेट गिर चुका। 6 for the loss of 4 wicket. Young friends Urwa are now looking deep in trouble. और अब ऐसा कहना पड़ेगा, अजमल के विकेट के बाद, पतन के बाद यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए समस्याएं और बढ़ चुकी हैं। द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा आफ्टर द डिपार्चर ऑफ अजमल। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ क्रीज पर, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। परवेज, एक वक्त के जाने माने बल्लेबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा के, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और करीबन 10 से 15 साल पहले वो यंग फ्रेंड्स उर्वा का प्रतिनिधित्व किया करते थे। तब उन्होंने कई मैचेस में यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए बेहतरीन पारियां खेली है, और यहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद वो वापसी करते हुए इस बार गेंद को खेलना चाहा। अपील जरूर कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, और यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। He just wanted to follow that one at the last moment, in fact, and finally no contact between the bat and ball, and the batsman is survived in this delivery. स्कोर रुक चुका है 6 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। हकीम ड्राइव किया, oh brilliant attempt, absolutely fantastic attempt made by the extra cover fielder, लेकिन unfortunately फील्डर जो थे इमरान गेंद को लपक नहीं पाए। गेंद को हवा में खेला था इस वक्त परवेज ने अंतिम क्षण में, और जैसे ही गेंद के बाईं ओर से निकले, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, गेंद को देखिए किस तरीके से उछाला था, और यहाँ पर उछाल कर उस गेंद को लपकना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपक नहीं पाए, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7 for the loss of 4 wicket. Third over in progress. Still the batsmen of young friends Urwa are now searching for the right track, और इस बीच हकीम अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। प्रसाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन प्रसाद is now going to face हकीम। हकीम की ये गेंद इस बार चिप किया just over the cover fielder's head. In fact he gets in a single, looking for the second, and they come back for the second, और थ्रो काफी ऊंचा विकेट कीपर के पहुंच से बाहर। 9 for the loss of 2 wicket. Couple of runs added to the total, and थर्ड ओवर हैज बीन केम स्टूडेंट। 3 ओवर की समाप्ति, 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल बाकी, और आइए सतीश आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा। 9 रन दे मैनेज टू स्कोर ओनली ऑन द बोर्ड। 4 विकेट और 4 टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाज पिपलिन वापस लौट चुके हैं यहाँ पर। अरशद, अल्ताफ, बसवनगुड़ी, राजेश और अजमल, और मैं समझता हूँ जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने के सवाल, तो इन बचे हुए 3 ओवर में यहाँ पर कम से कम 30 रन उन्हें बटोरना होगा। अगर 40 के आसपास या 40 के ऊपर उनका आंकड़ा पार करता है तो कुछ हद तक चुनौती पर स्कोर खेलाएगा केएफसी कोडिकल के खिलाफ, लेकिन बचे हुए 3 ओवर में 40 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए इस वक्त जीतोड़ उन्हें निस्संदेह उन्हें जीतोड़ मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी होगी यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों को। Thank you very much, Gopi. Absolutely, the kind of shot which is really required for young friends. But what we are observing here is that they didn't got enough runs on the board,
At the same time, they lost 4 valuable wickets back into pavilion. But having Parvez and Prasad in the mid left and right combination, it looks like they can bounce back in the remaining 3 overs. For that, just like you were mentioning about some good batting, which is badly required for young friends Urwa. Parvez, after a long time, is joining his young friends Urwa, and one of the best performer during the 2000 when young friends Urwa is in a peak. He's contributed a lot for the success of young friends Urwa. Once again, is back into his home team. So single taken. With that single, total score now moves on to 10 on the board for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. As a batter, the bowler, little correction, the bowler Chetan is just arranging the field set now. Long on is coming a little bit wider in the wideish long on. One fielder at deep, wideish long off, and deep backward square leg and deep mid wicket for Prasad. Chetan, right arm over wicket. Prasad looking for the improvisation by playing the reverse sweep, but ball missing his bat, hitting his leg, so that leg by call by umpire Harish Padil and Vivek of challenge bowler. The 2 field umpires for this match. Scoreboard now slowly moving. 11 for the loss of a 4 wicket in the over number 4 in progress. Both the batsmen realizing that partnership, which is most important for young friends Urwa. Of course, the big blow for young friends Urwa is that they lost the wicket of Arshad too early. Went for the big shot. Looks like it's going to be a caught behind. It's caught behind because Parvez went for the expansive drive, but not really getting that one from the bat, middle of the bat, got outside edge of the bat. And wicketkeeper Akim, we have a look at the Akim. Once it is fumbled, but the second attempt, he managed to complete that catch. And now I think they are in a serious trouble. Akim, looks like ball is hitting his cheek or a neck, and then ball which is came into the hands of Akim. Akim is not the good player for Underarm cricket, but is proved that he is one of the best season ball cricket player as well. And 2-3 days back, he scored a century in KSCA Mangalore zone second division match when he is represented for Krishnapura, and scored 118 runs unbeaten with 61 deliveries. This is what good to see, that our Underarm cricketers also performing in overarm cricket as well. Again, a nicely driven, but lack of placement from the batter Vinod. Vinod Pollard, the nickname is Pollard. Vinod Pollard, one of the very good striker of the ball. But condition of for young friends Urwa is not that much of easy for any batsman to play their natural cricketing stroke. Chetan from the far end, right arm over the wicket, balls to Vinod. Vinod this time going for the try, got outside edge of the bat, ball running out to deep third man boundary, but fielder there in the deep, so that batsman out to settle for the single. With that single, score moves on to 12 for the loss of 5 wicket. Very hard to combine the runs for young friends Urwa against the disciplined bowling performance by the bowlers of KFC Kodikal. Of course, young friends Urwa, it's not a good time in the season after some players, their regular players left the team. But the rebuilding of this team, it's taken a little bit time, isn't it? But still, they managed to qualify for the finals of the UFCA trophy, RRP Memorial Trophy. This is a great achievement, isn't it? So I think it's taken a little bit time for young friends Urwa to back in their natural rhythm. This time is gone. Bowled him. Prasad looking for the expansive drive. But Chetan is so good, especially when they seeing that batsman little bit shuffled across the line of the delivery. So he bowled around the legs of the batter. It's a good thinking. And exposing the leg stump means you are giving opportunity for the bowler to hit the leg stump. And Chetan hitting the leg stump, one more wicket is back into pavilion. So now it's after this match is the first semi-final will be played between New Star Kunjatur versus Durga Konchadi. So that I request all the players of both the teams, please report to the committee box immediately to sign the official chart. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So 12 for the loss of 6 wicket. Even though they are missing some players, but today also they are missing Santu Bantwal, Zubair and Jalil. Some of the players were played for young friends even in the 30 overs format of the games.
So here is again Shakir is brought into attack. Shakir bowling with a short run off. Right arm over the wicket. Drives that one. And Vinod Pollard picked up a single down to short Tadman region. With that single covered Namuzan to 13 for the loss of 6 wicket in the over number 5 is in progress. So young friends Urwa won in the last 3-4 season. They are dominated in underarm cricket. They clinched some prestigious titles. And in this particular season, I think it takes time for young friends Urwa. And probably, and when everyone thought it might be all over for young friends Urwa, but they bounced back in that Harar Pai Memorial Trophy with by getting a place in the final, and they become the runner-up. So one more single is taken here. The new batsman just came into middle with the jersey number 77 for young friends Urwa. So Vinod drives that one up his leg, but fielder is in the right position. One more wicket is back into pavilion. Irresponsible cricketing stroke, isn't it? Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. You need to see where the fielder is. Shakir is a titillating delivery, inviting the batsman to go for the big shot. And Vinod Pollard lofted that one, but he didn't got enough room to play the shot, and he didn't got enough placement to get that the boundary. So one more wicket is back into pavilion, and the disappointment continues here for young friends Urwa. It's a 14 for the loss of 7 wicket. The new batsman in is Shagir. He is walking towards the middle for young friends Urwa. So young friends Urwa have to complete their 6 overs quota. They got the 7 wickets back into pavilion. Shakir balls 1+1. The big white wicketkeeper Hakim fails to collect the ball, and a white call by umpire. With that, Texas covered moves on to A16 for the loss of a 7 wicket. So wide outside the run of off stump, and one more wide. Shakir started to feel the pressure, and it looks like Shakir is asking Vivek to give the third umpire for that wide. 17 for the loss of 7 wicket. And here is Shakir again. Absolutely fantastic leg cutter. Fumble from the fielder. Chance of run out. Overthrow comes into play. They're going for the second. What could be a certain chance of run out because of that fielder? Imran is trying for the run out. Overthrow comes into play. Couple of runs. 19 for the loss of 7 wicket in the over number 5 in progress. Current run rate is a 4.07 runs per over. Again, that ball just passing between the legs. Umpire says it's third umpire. Hakim removes the bails and asking umpire Harish Padil to, yes, the first attempt he missed it. Second attempt, I think ball which came to him, and wait and see while doing that. Removing the bails, whether the batsman is in or out. That's how I want to see that. After ball is deflected from the legs, looks like ball going to hit the stump. Ball misses the stump. Batsman wanted to keep the bat inside the line, but umpire have to see when the bails are uprooted whether the batsman is in or not. Want to see. It's a touch and go, and looks like umpire Roland Pinto sir will go in to see. So just like we are mentioning about, Hakim scored 118 runs in 61 balls in NMPT cricket ground when he is represented for Krishnapura Sports Club against Brahmavara. And I think eyewitness is our umpire Shriniket is umpire during that match. He is eyewitness for the innings of Hakim. It was a fantastic innings came from his bat. It's not so easy, sir, isn't it? When you are playing underarm cricket and straight away going and playing a season ball cricket, overarm cricket. This is good to see that even our underarm cricket player, they're so good in that season ball cricket. So many players, just like some players like the former cricketers like Prashant Brax and Sohail Mohammad Billy is doing a fantastic job in the Gulf countries. And now it's out, which is a call from umpire. Out, which is a call from umpire. One more wicket is back into pavilion. It's a 19 for the loss of 8 wicket. And of course, so we're talking about some players like Suhail Mohammad Billy and then Shivaraj of Gori Young Boys. Some of the great players. Those are performing both in underarm and overarm cricket. Even Parvez also, is represented for Young Friends Urwa. He did a great job
And I thought now Santosh is coming to the middle there. The Santosh, we thought Santosh Bandwal, we missed it in this particular match. But now Santosh Japu is walking towards the middle. One of the most experienced campaigner is walking towards the middle. It's 19 for the loss of 8 wicket. And wait and see how Santosh will go into contribute from the bat. Of course, Santosh is the one who really contributed very well for young friends Urwa, and now he wanted to this time again. Looks like it's going to be a hard opportunity for the wicketkeeper behind the stump, outside edge of the bat, and wicketkeeper behind the stump collects the ball. And one more over completed after completion of over number 5, searching for the right track. Young friends Urwa, 19 for the loss of 8 wicket. Now I want to see the Bedra Media just turn your camera to that very attractive trophy, which is now in our main stage. Arshan, the cameraman of Bedra Media, and just having a close view of the very attractive trophy, United Trophy. And it's definitely going to be a very beautiful trophy. And each and every team wanted to become the champion of this prestigious, to lift this very attractive United Trophy 2023. So last over going to start from the far end. Tazuddin, one who did a great job in the previous match against Goryang boys, is now back into attack. Right arm over the wicket to Shagir. Shagir lofted that one, and he got the distance for that. Magnificent struck. Unbelievable struck there from number 9 batsman. The Shagir is tall enough. Is tall enough to get the distance. Have a look at that one. Effortlessly played, isn't it? Effortless cricketing stroke. Beautiful stroke. And that kind of cricketing stroke which is required if your young friends who wanted to get some respective total. 25 for the loss of 8 wicket. Tazuddin from the Rohan Corporation and bowling with the run-up. Right arm over the wicket to Shagir. Shagir drives. Beautiful looking shot. Down to deep long off. Never looks like it's going to be a number 9 batsman hitting the ball. Absolutely, it was a fantastic cricketing stroke there from Shagir. Scoreboard now was on to 26 for the loss of 8 wicket in the over number last in progress. Santosh is back on strike. Absolutely. And Santosh, the experienced campaigner of young friends who are facing his first delivery. This time, Santosh joining the party with a huge one. What a fantastic blow there from Santosh. Glorious shot. Have a look at that one. This is unbelievable struck. Nothing wrong with the line. Just a little bit outside the run of off time, and he stand and delivered. And ball is disappeared out of the park. And score jumps into 32 for the loss of 8 wicket. This is Santosh for you. I just mentioned earlier, he's the man. So every time when his team is struggling, he's always leading from the front to contribute from the bat. Even he can contribute from the ball. Tazuddin again from the far end. Right arm over the wicket balls. Again, Santosh wanted to repeat the stroke, but this time a little bit squarer he wanted to hit towards the mid wicket. So that ball just missing his bat. The wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Respective total now for young friends Urwa. 3 balls remaining. Wait and see how Santosh will go into contribute in the remaining 3 balls. Tazuddin from the Rohan Corporation and went for the reverse save. They're going for the single chance of run out in the strikers and in the non-strikers, and also there's opportunity. Little bit underarm throw there from Hakim, and all along the ball, Santosh is also following the ball, and at last he winning the race against the ball, and he got a single for that. 33 for the loss of 8 wicket. 2 balls remaining. Shagir is back on strike. Man who got a 1-6. Last ball remaining. Little correction, sorry. 1 ball remaining in this over. Last ball of their innings coming up. Tazuddin from the far end. Rohan Corporation end. Oh, that was a bad miss. Absolutely bad miss. Shagir can look for orthodox cricketing stroke. Was already got a 1-6 by playing at orthodox cricketing stroke. But now he wanted to play the reverse stroke. Missing it completely. So 34 for the loss of 8 wicket. 33 for the loss of 8 wicket. 34 going to be a target. 34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು. ಸೊ semi-final ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು. So wait and see how KFC Kodikal will going to get this total, and wait and see how well young friends Urwa will going to get contain the batsman. Have a look at the scoreboard. The contribution in the end, Shagir and Santosh Japo, the two lower order batsmen, number 9 and number 10 batsmen contributing with the 1-6 in the end, and got a respective total of 33 runs, and they set a target of 34 to win the match for KFC Kodikal. We'll take a short break here. After that commercial break, we are back once again with Mr. Gopi in our national language Hindi. Thank you. Thanks a lot. Star Kunjatur versus Durga Konchadi. Because of the request of the players of these two teams to please remove to the stage immediately to sign the official chart and also complete the toss procedure before the end of this match.
धन्यवाद सतीश। पहली गेंद इस वक्त ऑफ द टॉस गेंद को फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार यह विकेट यहां पर गिर चुका है। ताजुद्दीन की पारी समाप्त, बिना किसी गेंद का सामना किए हुए, विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी, रन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को थ्रो किया और ताजुद्दीन अपने क्रीज से कुछ इंच यहाँ पर बाहर रह गए। हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा उनका बल्ला हवे में था, the bat was in the air and because of that he lost his wicket. First wicket gone for KFC Kodigal. It's 1 for the loss of 1 wicket. 34 the target in 6 overs set by young friends Urwa for KFC Kodigal. And the first ball gone in their innings. They lost their first wicket. तंजीम स्ट्राइक रेट पर इस वक्त तैयार और नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ। शाकिर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और गेंदबाज का जहां तक सवाल है सागर गेंदबाजी, शगीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह एक घातक गेंदबाजी की सख्त जरूरत यंग फ्रेंड्स उर्वा को इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए। अगर उन्हें 33 रनों के अंदर केएफसी के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप को रोक कर रखना है तो ये गेंद स्वीप करना चाहा। शगीर की गेंद थी, लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शगीर एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट। इनफैक्ट द बैट्समैन क्रॉस्ड ओवर फॉर द सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस मैच की विजेता टीम इस टूर्नामेंट, इस श्रृंखला के सेमीफाइनल, दूसरे सेमीफाइनल मैच में केसीसीआर कदरी का सामना करेगी। और शगीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जो कि प्रमुख बल्लेबाज है केएफसी कोडिकल के। और ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आते हुए गेंद को रोका अंतिम क्षण में और दोनों बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 4 रनों पर। और शायद वहां पर डेलिबरेट स्क्वायर लेग अंपायर हरीश इस वक्त कहते हुए शाकिर से कि वहां पर जानबूझकर उन्होंने पैर लगाया था गेंद पर डेलिबरेटली, तो इस वक्त खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। तो 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज शकीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये चिप किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका शकीर का और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए और शकीर इस वक्त सामना करते हुए और शॉर्ट फाइन लेके फील्डर अरशद इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए डीप मिड विकेट फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया है, जबकि मिड ऑफ फील्डर को पीछे भेज दिया गया है इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर। और शकीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, अंतिम गेंद शाकिर के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं और जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket. Steady start for KFC Kodigal. 6 for the loss of 1 wicket. They scored after completion of first over, just chasing the victory target of 34 in 6 overs. 28 runs more. Now they have to score for victory in remaining 5 overs, and the required run rate is now gone up to and the required run rate is now at 5.67 runs per over for them. This is the match number 4 of the day 2 of United Trophy 2023 is now progressing, with proudly organized by Real Estate Group registered Bejai Mangalore to help
the poor children's education. They are organizing this tournament fantastically. United Trophy 2023 for good concept to help the poor children's education. And this tournament is now progressing along nicely. और अरशद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर के लिए दर्शकों से मैदान लगभग भर चुका है। आज गुरुवार वर्किंग डे होने के बावजूद मैदान में दर्शक इस वक्त नजर आते हुए इस मैच की शोभा को और बढ़ाते हुए और इस बीच ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्लोअर लाइन एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। शायद उनके हाथों से गेंद छूटी थी पहले प्रयत्न में। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हवा में और विकेट कीपर के हाथों में गेंद। Shakir की पारी से बाद is got a top edge on that and the wicket keeper just coming to his front side to took a catch with a perfect judgment. Have a look at this in the replay. और यहाँ पर आगे की ओर आकर गेंद को लपक लिया एक बेहतर जजमेंट के साथ। दूसरा विकेट गिर चुका। 6 for the loss of 2 wicket for KFC कोडिकल। तो यही एक रास्ता इस वक्त रह गया यंग फ्रेंड्स उर्वा के सामने। विकेटें ही उन्हें उखाड़ने होंगे बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ाने के लिए। और केएफसी कोडिकल का जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है उस लाइनअप पर अगर दबाव डालना है तो यहाँ पर एक घातक गेंदबाजी के साथ साथ विकेटें भी यहाँ पर उखाड़ने होंगे यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाजों को। एरिस नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अरशद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज एरिस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार बॉल्ड आउट। वन मोर विकेट फॉलन। Perfect slower off cutter delivery and he just got rid of the batsman। और आरिस ने पूर्वानुमान नहीं लगाया था कि गेंद इतनी धीमी आएगी और यहाँ पर गेंद को मोड़ना चाहा था। चूंकि गेंद सीधे ऑफर मिडल स्टंप पर जा टकराती हुई गिलिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। It's 6 for the loss of 3 wicket and now KFC Kodikal are now looking in trouble। तो 6 रन 3 विकेटें दूसरा ओवर प्रगति पर और एक बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी के जरिए यहाँ पर कर चुके हैं गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा के। अब एक और अनुभवी बल्लेबाज केएफसी कोडिकल के हकीम का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे बल्लेबाज गेंदबाज अरशद की गेंदों का। फील्डिंग में इस वक्त जब आउट करते हुए अरशद और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त अरशद तैयार रहा और देखना है कि क्या हकीम उनके हैट्रिक को रोक पाते हैं इस गेंद पर या नहीं। ये गेंद इस बार गेंद को ऑफ द टॉस खेला। क्विकर गेंद थी और गेंद को फील्ड कर लिया गया मिड विकेट पर संतोष द्वारा। रन्स बल्लेबाज को यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो स्कोर रुक चुका है 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 3 wicket in the over number 2 in progress। और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा के अरशद एक बार फिर से तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बार ड्राइव किया। नॉट क्वाइट पेडलिगेट इन फैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट and with that single run the scoreboard moving up to 7 for the loss of 3 wicket in the over number 2 in progress। Runs are still coming in singles now for KFC Kodikal and a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of young friends Urwa। रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से अगली गेंद अरशद की पैरों पर टकराई गेंद रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन मिलेगा। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रहे थे। अपील को सही तरीके से अंपायर हरीश पटेल ने नकार दिया और 1 रन का इजाफा। He's got a bat on that at the last moment। Single run added 8 for the loss of 3 wicket। 2 overs had been bowled। 4 overs left 26 to get। 26 रन चाहिए 24 गेंदों पर।
7 विकेट सुरक्षित इस वक्त KFC कोडिकल के लिए। और जहां तक यंग फ्रेंड्स उर्वा का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त एक घातक गेंदबाजी ही उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए संतोष, यंग फ्रेंड्स उर्वा के अत्यंत अनुभवी गेंदबाज संतोष का आगमन यहां पर हो चुका है गेंदबाजी में, और वो अपना ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज तंजीम, जो कि आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरते हैं, अभी तक क्रीज पर डटे हुए। और संतोष ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 26 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 24 बॉल्स। पहली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, लेग कटर गेंद को हल्के से पुश कर दिया, गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए, और जब तक गेंद को मिड ऑफ पर फीड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ KFC कोडिकल। और संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार हकीम सामना करते हुए डीप कवर पॉइंट फील्डर को काफी स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट के दरमियान। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त संतोष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार नहीं, गेंद यहां पर खाली गेंद पर टिप्पा खा चुकी है फॉलो थ्रू में, और इस बार रन का खतरा, और इस बार विकेट गिर चुका है, इस बार विकेट गिर चुका है। तो यहां पर तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई है, और देखते हैं यहां पर असल में क्या हुआ है। तो वहां पर मुश्किल सा मौका था, कॉटन बॉल का, गेंद हवा में थी काफी देर तक। अजमल सिलिमिड ऑफ से दौड़ कर रहा, संतोष भी गेंदबाजी के मार्ग से दौड़े, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाया। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज काफी आगे निकल चुके थे तंजीम, और इससे वो क्रीज पर वापस लौटे, तब तक थ्रो पहुंचा, विकेट कीपर ने विकेट चटकाया। और देखने वाली बात है कि जब विकेट चटकाए गए थे तब तंजीम क्रीज पर वापस लौट चुके थे या नहीं। He's gone. पहले जो हरीश पटेल ने आउट करार दिया था, निस्संदेह सही निर्णय उन्होंने दिया था, और आखिरकार यहां पर आउट घोषित करते हुए तृतीय अंपायर, और इसी के साथ तंजीम का विकेट यहां पर गिर चुका है 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब ऐसा कहना पड़ेगा मौका जरूर है यहां पर कमबैक करने का यंग फ्रेंड्स उर्वा को। तो देखते हैं यहां पर किस तरीके का कमबैक वो करते हैं आने वाले गेंदों में। तो तंजीम रनआउट के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए 10 रन, in fact its score is 10 now, 10 for the loss of 4 wicket. Ten for the loss of 4 wicket, and the new batsman is now comes out to the middle. चेतन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार। चंद और विकेट, चंद और डॉट गेंदे यंग फ्रेंड्स उर्वा को पूरी तरह इस मैच में वापस ला सकता है। इस बीच संतोष तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट चेतन के लिए, और इस बार अपील जारी है, और देखना यह है कि इस वक्त बल्ले का बाहरी सिरा टकराया था, बाहरी सिरा लगा था या नहीं। तो यहां पर
फील्डर्स काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हुए और विवेक इस वक्त बढ़ते हुए स्क्वायर लेग पर हरीश की ओर और आउट यहां पर घोषित किया और इसी के साथ पहले ही गेंद पर चेतन का विकेट गिर चुका है गोल्डन डक के रूप में. So a disaster is now continuing here for the batsmen of KFC कोडिकल. 10 रन 5 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और निस्संदेह यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाज इस वक्त पूरी तरह छा चुके हैं. 2.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका. 10 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर. सतीश, दिस इज एन एब्सोल्युटली ड्रामेटिकल कोलैप्स हैपेंड इन द इनिंग्स ऑफ KFC कोडिकल. Absolutely, Gopi. That's what called young friends Urwa. Young friends Urwa, especially when playing in the UCG cricket ground, they're always the dangerous, isn't it? Everyone thought it might be the one-side game, but again the bowlers once again showing why they are the top. Still, they are fighting. That's this fighting spirit is required, isn't it, Gopi? Of course, they are defending a small total, but you need to believe your strength. And of course, young friends has got some good bowling department, but might be a little bit underestimation here from the batsmen of KFC Kodikal that you're going to chase a little runs and they're paying the penalty for that. And another two good 2 wickets in a quick session, Gopi. It's going to be very, very difficult for KFC Kodikal to depend on. Once again, Santosh, being the experienced campaigner, contributed from the bat. Now he's contributing from the ball. एग्जैक्टली सतीश. संतोष पहले बल्लेबाजी के जरिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, अब गेंदबाजी के जरिए अपना योगदान यहां पर वो देते हुए और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद अंदर की ओर आई, गेंद को ढकेला शॉर्ट कवर पर और ओवर थ्रो. दिस इज नॉट नीडेड. इस बार अननेसेसरी इस वक्त थ्रो किया था अल्ताफ ने और यहां पर रन मिले बल्लेबाज को ओवर थ्रो के रूप में. रन 1 और 11 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर और इस बार स्ट्राइक पर आ चुके हैं हकीम. तो 5 विकेट गिर जाने के बाद अब सारा दारोमदार हकीम के ऊपर इस वक्त तैनात KFC कोडिकल के लिए हकीम की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी इस वक्त बन चुकी है. और जहां तक यंग फ्रेंड्स उर्वा का सवाल है, हकीम का विकेट उखाड़ना उनके लिए बेहद जरूरी यहां पर बन चुका है. और संतोष इस वक्त तैयार. यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. फील्डर वहां पर मौजूद, सगीर फील्डर है, थोड़ी सी मिसफील्ड और मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर लिया और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 13 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और 30 फॉर द टारगेट इन 6 ओवर्स. 13 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. KFC कोडिकल आर नाउ स्ट्रगलिंग. इस बार अच्छी क्या बल्ले का भीतरी किनारा, मौका जरूर था लेकिन राजेश के हाथों से गेंद छूट चुकी थी अंतिम क्षण में. तो बल्लेबाज हकीम बच चुके. 3 ओवर के समाप्ति अर्धांश ओवर समाप्त हो चुका. आधा सफर तय हो चुका. 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 13 for 5 आफ्टर 3 ओवर्स. 34 द टारगेट इन 6 ओवर. 21 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज. तो आइए सतीश आपको बुलाते हैं. 21 रन 18 गेंदों में और मैं समझता हूं पहले 3 ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाजों ने दिया है. फलस्वरूप इस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है KFC कोडिकल को. और जहां तक सवाल है कमबैक करने का, तो इस वक्त उनके बल्लेबाजों को एक बेहतरीन साझेदारी निभानी है अगर उन्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो. Thank you, Gopi. And what an outstanding reply coming from the bowlers of young friends Urwa. Unbelievable. Everyone thought it might be the easy target for the team KFC Kodikal, but the bowlers of young friends Urwa making too hard for KFC Kodikal. Not only they put some break on the runs, but they picked up 5 valuable wickets. That's only because of the bowlers like Shagir, Arshad, and now Santosh producing a very important breakthrough for the team, young friends Urwa. Now bowler Arshad, one of the best all-rounder as far as the present cricket is concerned. Arshad will go into ball his second and last over of his quota. From the far end, left arm round the wicket, the balls this time. Pitching and run, chance of run out. Oh, bad throw coming from the fielder. And looks like Vinod Pollard there in the short mid-wicket region returns the ball, but throw which is not good enough. Throw which is not good enough, otherwise it's going to be 1 more wicket. Have a look at that one. The fielder has got a throw, but it's a little bit wide for Arshad to collect that one. One more single. With that single scored Mazan to 14 for the loss of 5 wicket. Of course, having Akim and having Hafrid, the left and right combination, I think still young friends will have to work hard, need to work hard for the victory. But Hakim definitely is a key player now for KFC Kodikal if they wanted to win the match.
Again, the 2 century getters in this particular season as Arshad bowls. Improvisation quite nicely down to defined leg region. Shagir, the field spinner, the defined leg region will go into field the ball. One more single is added to it. Coming back to these two batsmen, Hakim has got a century in Urwa cricket, and E1, I think, in the present season, even now Arshad has got the century in Underarm cricket, and he scored 111 runs in 48 deliveries. So that is a good contest between these two. 15 for the loss of 5 wicket. Arshad again just calling the fielder in an unorthodox position. The fielder is not in the deep cover point, deep extra cover. Prasad. This time appeal for is gone. Flum in front of wicket. Flum in front of wicket. The batsman lit by shuffled across the line after delivery. Wanted to turn that one in the onside region. Finding himself in the middle stump. And umpire Arish Padil has got a no hesitation. Have a look at that one in a replay. Have a look at that one in a replay. That ball is almost pitching in a line. Pitching in a line. Batsman little bit going across the line. Wanted to turn that one in the onside region. And no hesitation at all from... no hesitation there for umpire Arish Padil to raise his finger. It's 15 for the loss of 6 wicket. Arshad once again producing a vital breakthrough for young friends Urwa. So what a match. What a match it's going to be. Everyone thought it might be the one-sided game, but here the match is slowly turning around. The match which is slowly turning around now. 15 for the loss of 6 wicket. 19 more runs required for the victory. And 15 balls remaining. 15 balls, 19 runs required for the victory. Outstanding comeback here from young friends Urwa. Again from the far end, Arshad. Round the wicket, chips that one nicely down to deeper long off region for a single by the new batsman. Arshad is off the strike. Hakim is back into strike. Scoreboard moves on to 16 for the loss of 6 wicket in the over number 4 is in progress. Fantastic match is going on here. This is really, the crowd loves to watch. That is, they love to watch, see that even 34, it makes too hard for the opposition. Arshad bowls. This time, lofted and lofted handsomely, and he got the distance. Hakim is just breaking the shackle. Effortless cricketing stroke, absolutely effortless. Have a look at that one. Little bit shuffled across the line. Slower one attempted by the Arshad, but it's a short pitch delivery. Of course, it's a slower one, but it's a short pitch delivery. Enough time for Hakim to see that short pitch and slowness of the ball. Lofted over the banner of our own corporation, and he got a very important 6 here. This time, just like the left-hand batsman steering the ball, full toss delivery from Arshad. The batsman looking for the free meditated switch it and place it down to short third man region for a single. With that single, scoreboard moves on to 23 for the loss of 6 wicket. 11 runs required from 12 balls. And have a look at that. One big 6 in that over, really changing the complexion of this game. Just like I mentioned earlier, Hakim is a key player for KFC Codical if they want to win the match. And at the same time, for young friends Urwa, the wicket of Hakim is so important. It's a 23 for the loss of 6 wicket. And just if I want to say that the fall of wickets, young friends Urwa have lost 8 wickets. And team KFC Codical have lost 6 wickets. That means a comparison of the wicket. Maybe the KFC Codical in the upper hand. The 11 to get now Santosh, the experienced campaigner. Wanted to do something special in this over. Beautiful delivery. Wicketkeeper missed it. Chance of run out. Now umpire asking for the third umpire. Arshad lost his bat. Once a batsman lost the bat, it's going to be that batsman might be is in trouble. But what we need to wait for the umpire signal. So that's all happening when I think is a reaper. The reaper which is in this pitch might be batsman struggling because the bat will go into stuck in that reaper. Then it might be the trouble for the batter. The good throw from the fielder, quick work by the wicketkeeper. I think the batsman is short of a crease. The bat is in the air.
The bat is in the air. Even the bat which is stuck. But before that, the job which is completed by the wicket keeper. And seventh wicket is out. The batsman is out. The out which is called from umpire, third umpire. So seventh wicket of KFC Kodikal is back in the pavilion. What a match. What a fantastic match is going on. What a beautiful delivery that from Santosh. Absolutely, that ball is just skidding from the good length spot. And that's why the wicketkeeper a little bit fumble. And but good ridden by the fielder quickly. And now, after dismissal of Arshad, Imran walking towards the middle. He is also recognized batsman, even though it is coming in a number 9 position. But he is a recognized batsman. But Santosh, one of the great performer as far as young Prince Urwa is concerned. Can he will do the magic here? 11 runs required, 11 balls remaining. 3 wickets which is required for young Prince Urwa. But 11 little runs which is required for KFC Kodikal. Santosh again bowling away from us. Right arm over the wicket bows. Beautiful off cutter, but equally well played there by Imran. Down to backward point region for a single. Prasad the fieldsman there in the deep. Now Akim back on strike. 10 balls, 10 runs required. It's going to be anybody's game. It's going to be anybody's game. As again Santosh bowls beautifully bowled and say to the field, a chance of run. Ajmal back and throw. The back and throw, but I think his opportunities in the striker's end. Ajmal wanted to get the run out in the non-striker's end. But I think it's very, very difficult for Santosh to come back to the stumps to collect the throw from Ajmal. What could be a certain chance of a run out there? They got a single. Each and every run here, where they all, we can see that they're fighting. They're fighting for each and every run. 9 balls, 9 required. This is a slow leg cutter. Enough time for Imran to read that. So they're coming back for the second. In comes the throw. And Imran and Akim completed a valuable couple of runs. That will going to release the pressure. That couple of runs will going to release the pressure from the batter. But outstanding fight given there by young Prince Urwa. Still, they're fighting for the victory. 1 wicket is badly required for young Prince Urwa. But sensible batting which is required for KFC Kodikal. Diwan, straight to the hands of fielder. Again, Ajmal saying that you are in front of stump. How can I hit the stump? But Santosh saying no need to hit the stump. You just field the ball and he will going to do the rest. 7 balls and 7 runs required. Important dotted delivery. Santosh balls, a loose delivery, lofted, chance here for the fielder to take the catch and is gone. My goodness, can you believe this? That ball went against the wind of the direction. Everyone thought that it might be a maximum. Everyone thought it might be a maximum, but ball went straight to the hands of fielder. What a match. 8 wickets back into pavilion. Now, both the teams have lost 8 wickets. Both the teams have lost 8 wickets. That means in that remaining 6 balls, they have to get 7 runs. The 6 will go into tie the match. The wickets are also equal. It's going to be a more interesting game of cricket. What a fantastic comeback here by young Prince Urwa. Absolutely unbelievable. Phenomenal comeback here by the young Prince Urwa. Now KFC Kodikal looking in a pressure. Because even they need to look for the wicket. The fall of wickets, which is 8 wickets back into pavilion. The 1 wicket will go into give a lot of pressure for KFC Kodikal. But 1 wicket will give young Prince Urwa more opportunity to back into this game. Now, very interesting to see that after the 2 bowlers completing their 2 overs quota, Arshad, Santosh completed 2 overs. The 1 bowler has to bowl, the new bowler has to introduce, and a youngster of the side of young Prince Urwa came into ball. Sahil is the bowler. Will go into ball the last over. 7 required from 6 ball. Akim
It seems to be a last hope of winning this. Oh, this a wicketkeeper missed it. Chance of run out in a non-striker side. Directly it comes into play. Umpire says not out. Umpire says not out. Then after that lot of argument, umpire, yes, asking for the third umpire. Have a look at that one. The wicketkeeper fumbled and returns the ball. Direct hit taken place. Looks like batsman almost dragging his bat. Akim looks to be safe, but umpire, third umpire have to see the batsman safe or not. If it is a run out, KFC Kodikal in deep trouble. If it is a not out, then I think having Akim might be relief for KFC Kodikal that Akim is still is safe. I want to see the third umpire decision. Everyone's eyes into the pavilion, commentary box. Will it going to be out? Will it going to be a not out? Is a not out. The batsman is safe. This once again Arish Padil justifying. Even in the naked eye. The second time you are watching, the once it's a batsman forcing to give the third umpire, and Arish Padil referred, and the same decision which came what Arish Padil is given. Again, here the fielding team is a little bit forced to give the third umpire. Again, umpire Arish Padil asked for the third umpire. Again, he is justifying his decision. So 28 for the loss of 8 wickets. 6 ball, 5 runs required for the victory. 5 balls, 6 runs required for the victory. What a match. The 4,000 viewers is enjoying the game of cricket. Now, punishment. This is going to be a disaster. This is going to be a disaster, and because already they got only one short fielder, they're playing with the 10 players, that bringing one fielder inside the ring might be benefits the KFC Kodikal. Sometimes it benefits the fielding team also, because who knows, when one extra fielder adding inside the ring will going to be a benefits the fielding team as well. 5 balls, 6 runs required for the victory. Iqbal is a batsman. Went for the reverse sweep, dotted delivery, wicketkeeper uprooted the stumps. Much required dotted delivery. Now pressure is creeping up. Now pressure is creeping up. 6 ball, 4 runs required for the victory. 4 balls, 6 runs required for the victory. What a match. What an exciting match. Young friends Urwa still saying that we are still here. We still here, not went totally away. This game seems to be fantastic. This is really a match is inching towards a nail batting finish. Every spectator's on their feet. The bowler is really handling the pressure very well. Sinan, Sahil from the far end. Right arm over the wicket. Looking for the safe shot. Chance of run out. In the non-striker end. Yes and no. Chance out given. He missed it. What could be a run out there? Sahil missing the throw. Now everyone shouting to wicketkeeper, why you are not trying for the run out in the strikers end. Absolutely there is an opportunity of striker end, but there is no one there to collect the throw. There is no one there to collect the throw of wicketkeeper in the strikers end. That's why he is not returned. Because if the ball will go into miss the stumps, will go into extra runs. Now, 5 required, 3 runs required. Everyone shouting because Akim back on strike. Akim back on strike, and that's why the young friends were everyone shouting, why you are not try the run out in the strikers end? Because they wanted desperately Akim to back into the pavilion. Once the Akim is back on strike, all looks like it's going to be under pressure situation. What a match. What a match. One of the best match of this tournament we are witnessing. Low scoring game, and young friends still fighting hard for the victory. KFC Kodikal D1, they are also fighting hard. 5 required, 3 balls remaining. It's going to be a decided delivery. Sahil so far done a great job. Being the very young bowler, but looks like so far he's handling the pressure very well. Akim is a striker. Right arm over the wicket, going for the safe shot. He is not going for the run. He is not going for the run. 2 balls, 5 runs required. What a match.
Now I want to see that Akim's level of confidence will be justified only if he is able to finish the match. His confidence will be justified only if he is able to complete the match. Otherwise, that single, what he is not interested, might be the big miss. And wait and see. 5 balls, 2 runs. 2 balls, 5 runs required for the victory. I want to see the field set. Deep extra cover, deep long off, deep mid wicket. The fielder is inside the ring, cover point, short mid off, short third man, short mid wicket. Sahil, so far, so good. 2 balls, 5 runs required for the victory. Akim is on strike. Here we go. Right arm, over the wicket. Went for the big shot. Missed it completely. Oh my goodness. Now, 1 maximum badly required. The boundary will go into tie the match. If the match will go into end it in a tie, because if a 4 will go into tie the match, then it will go into tie the wicket as well. So that winner will go into decide it by toss. Both the teams have lost 8 wickets. Both the teams have lost 8 wickets. Boundary will go into tie the match. A toss will go into decide. And 6 will go into win the match for KFC Kodikal. Already there is a last ball finish in yesterday's match. Will it go into be a 1 more match here? The last ball finish. Sahil, he will definitely will become the hero for young friend Urwa if he manages to defeat the bat of Akim. And Akim will going to become the hero if he manages to send 1 stroke out of the park. He will be the hero. Who will go into the hero? Whether going to be a bowler or whether going to be a batsman, this delivery will go into decide. Here is the last ball. 5 runs required for the victory. Here you go. This is a Sahil for you. This is a Sahil for you. It's a young talented bowler, young friend Urwa. He's done the job. He's did the job. He's did the job for young friends Urwa. And if really keeping Akim quiet, now I am telling that the level of confidence of Akim what is not going for the run, but that will not going to justify it because he didn't finish the match for KFC Kodikal, but Sahil finished the match for his team. Now it's a 500 rupees. Sharif Bantwal announcing 500 rupees for the very young talented Sahil for his outstanding the bowling performance in the last over. Is really great piece of bowling. Unbelievable victory for young friend Urwa. Unbelievable. I am still pinching my skin, Gopi, whether it's a dream or it was a reality. 33 depending against the KFC Kodikal, and he need not having a formidable playing 11. They're not having a playing 11. They're playing with the 10 players. They're playing with the 10 players. Still they're dependent the total. It's been outstanding effort there from young friends. That's why the UCG cricket is always going to be one of the luck and best performance what young friends has did in this particular match. Thank you very much. We'll take a short break. Goes to man of the match, which goes to once again Santosh Jabu of young friends who are just as man of the match for his all-round performance. They scored 6 runs in a crucial moment and he picked up 2 valuable wickets for just 9 runs in 2 overs with the economy of 4.5 overs. May I request Santosh Jabu, Santosh of young friends who please collect your
ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಇಟ್ಟಂತ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್, ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಇಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನದ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. versus Durga Kunjat, the first semi-final of this match. New star Kunjat Bail, after won the toss, they elected to field first, and the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए तो इस वक्त मैच शुरू होता हुआ
तो इस तरह से द फर्स्ट सेमीफाइनल मैच इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन Durga Kunjadi versus New Star Kunjatur, and New Star Kunjatur after what was elected to bat first after being some disturbance. The match is now going to start. The first ball of the match is now coming up. Sachin इस वक्त आरंभिक बल्लेबाज, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सचिन लंबे कद के खिलाड़ी, और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त द फर्स्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल मैच इज नाउ कमिंग अप ऑफ यूनाइटेड ट्रॉफी 2023. ये गेंद इस बार बैकफुट पर गई, खूबसूरती के साथ गेंद को दिशा दी, इस वक्त पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा. इससे पहले की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर पर जब तक फील्ड किया जाता, बैकवर्ड स्क्वायर कहना पड़ेगा, बैकवर्ड पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. तो 77 नंबर के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए, तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सचिन के लिए. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची वाइड स्लॉग ऑन पर, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर, बिना किसी नुकसान के 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज शशि जो कि सामना करने के लिए तैयार. पहला पावर प्ले ओवर यहां पर जारी, और गेंदबाज जो कि 77 नंबर की जर्सी पहने हुए अनजान गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, शॉट थर्ड मैन की दिशा में, नॉट फाइंड्स द कैच क्लीनली एट द लास्ट मोमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए धर्मा गेंदबाज, और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला, बैकवर्ड थर्ड मैन सी मारेगा जब हाथ 4 रनों के लिए. रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ खेला था, बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप थर्ड मैन के दरमियान, और गेंद का पीछा करने के बावजूद देखिए यहां पर फील्डर गेंद को रोक नहीं पाया, और जहां तक जाकर एक क्षेत्ररक्षक एक प्रेक्षक जो बैठे हुए थे उनसे जाकर इस वक्त टकराते हुए फील्डर, और आखिरकार 4 रन यहाँ पर जुड़ चुका है. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है शशि के बल्ले से, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर, 7 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर for Durga Kunjadi in the first semi-final match of United Trophy 2023, which proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Mangalore. और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए, और इस बीच गेंदबाज धर्मा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और अपने अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, डेलिकेटली प्ले डाउन टू डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, इन फैक्ट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 8 विदाउट लॉस. द फर्स्ट सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ स्टार्टेड जस्ट शॉट बाय गो धर्मा. इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सचिन स्ट्राइक पर आ चुके हैं, और सामना करने के लिए तैयार धर्मा की गेंदों का. यह गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी स्विंग दिस टाइम, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली. बेटर वन टू एंड द ओवर. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर गुड स्टार्ट फॉर द Durga Kunjadi. They managed to score 8 runs on the board, yet to lose any wicket after completion of first over. पहले ओवर के समाप्ति 8 रन बिना किसी नुकसान के. यहाँ पर दुर्गा कुंजाडी जोड़ चुका है. टॉस हारने के बाद न्यू स्टार कुंजाडी के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतर आता हुआ, और जहाँ तक एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो कम से कम 40 से 45 तक के आंकड़े तक इस वक्त पहुँचना होगा दुर्गा कुंजाडी को, अगर उन्हें न्यू स्टार कुंजाडी के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर दबाव बनाना है तो. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, तो इस मैच के बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. एक बेहतरीन मैच, एक ज़बरदस्त मैच, यंग फ्रेंड्स उर्वा का सामना होगा KCCR कतरी के साथ इस श्रृंखला के दूसरे सेमीफाइनल मैच में, इस मैच के तुरंत बाद. और फिलहाल यहाँ पर फील्डिंग में जमावट चलती हुई दूसरा पावर प्ले ओवर शुरू होता हुआ रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से. गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार रहता है दाहिने हाथ के बल्लेबाज शशि. और जहां तक सवाल है फील्डिंग के नजरिए का, तो 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट
गेंदबाजी करते हुए परवेज, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूंकि नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, शॉर्ट फाइन लेग पर, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो डॉट गेंद के साथ एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर परवेज कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शशि इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद इस बार उछालना चाहा, ऑफ स्टंप पर गेंद टकराई और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। The ball deviate a little bit at the last moment. Just have a look at this in the replay. गेंद को इस वक्त फेंका था ओवर द विकेट। देखिए किस तरीके से गेंद इस वक्त बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे जा टकराई ऑफ स्टंप पर, स्टंप डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। It's 8 for the loss of 1 wicket and this is the over number second in progress for दुर्गा कुंचाड़ी। और यहाँ पर टॉस जीतने के बाद न्यू स्टार कुंजतुर के कप्तान ने पहले टॉस फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया था, और यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए दुर्गा कुंचाड़ी 8 रन अब तक जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता 1 नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल फॉर दुर्गा क्रिकेटर्स कुंचाड़ी, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, स्क्वायर लेग फील्डर को इस वक्त पीछे भेजा जा रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो परवेज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ खेला, लेकिन फील्डर द्वारा मिसफील्ड वहां पर गली पर, और जब तक गेंद को वहां पर बैकअप किया जाता कार्तिक द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। 9 for the loss of 1 wicket and this is the second over in progress in their innings. परवेज दाहिने हाथ के बल्लेबाज सचिन के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉर्ट लेग क्षेत्र पर, और विकेट कीपर उन्नी कृष्णन ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए परवेज अब तक कुछ ज्यादा रन्स उन्होंने इस ओवर में प्रदान नहीं किए हैं बल्लेबाजों को, और एक बार फिर से अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सचिन के लिए ये गेंद इस बार उछालना चाहेगा फिर से बैक टू द बॉलर की दिशा में, और निशाना चूका, यहाँ पर निशाना चूक चुका है। निशाना स्टंप्स पर टकराता तो निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक गेंद दूरी पर निकलती हुई स्टंप्सों से, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर दुर्गा कुंचाड़ी, और गेंदबाज परवेज अमित नए बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त लेग स्टंप से बाहर, और यहाँ पर वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और 2 खिलाड़ी अभी भी पेशकश के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत, और अपनी अगली गेंद लेकर परवेज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बाउल्ड आउट एंड 1 more विकेट फॉलन। दिस टाइम अमित डिपार्ट्स, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गलत टाइमिंग्स के साथ खेल गए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, और यहां पर गेंद सीधे जा टकराई मिड लेग स्टंप पर। तो विकेट नंबर 2 इस ओवर में परवेज प्राप्त कर चुके हैं। पहले शशि की पारी, अब अमित की पारी, और यहां पर 2 विकेट खो चुका है 11 रनों के योग पर, और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 11 runs for 2 wickets for Durga Kunchadi. They made a slower start. In fact, they made a mixed start. Just managed to score 11 runs on the board after completion of 2 overs with a run rate of exactly 5.5 runs per over. Still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और यहाँ पर गेंदबाजी पर उतरते हुए गेंदबाज धर्मा, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 8 रन प्रदान किए थे, और इस वक्त अपने दूसरी ओवर लेकर तैयार। सचिन इस वक्त सामना करते हुए, सचिन जो कि आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, अभी तक का क्रीज पर डटे हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। धर्मा की ओवर की अगली गेंद का 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं।
पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और ओवर की पहली गेंद लेकर धर्मा इस वक्त तैयार। दाहिना तो बर्दा विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, स्लिप पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त धर्मा गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सचिन एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। धर्मा की गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ विकेट कीपिंग मेड बाय विकेट कीपर उन्नी कृष्णन। गेंद को उछालना चाहता, जैसे ही गेंद बल्लेबाज से चूकी विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे और विकेट कीपर उन्नी कृष्णन, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट पीस ऑफ स्टंपिंग मेड बाय विकेट कीपर उन्नी कृष्णन। और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका। सचिन की पारी समाप्त और यहां पर 11 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका। 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। दुर्गा क्रिकेटर्स कोंचाडी आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल। स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन 3.4 ओवर्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और जहां तक एक साझेदारी का सवाल है, एक पार्टनरशिप का सवाल है, तो इस वक्त दुर्गा कुंचाडी को चाहिए एक लंबी साझेदारी एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होने के लिए। और क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस, इन संदिग्ध हालातों में इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ एज अ नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर दुर्गा कुंचाडी। एक और सचिन अजय इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेला पर रन के लिए दौड़ पड़े विकेट कीपर निकृष्टन ने विकेट जरूर चटकाए, लेकिन बल्लेबाज इससे पहले यहाँ पर अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे। तो अजय का खाता पिछले गेंद पर खुल चुका है और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक का, तो संतोष के पास इस वक्त स्ट्राइक का और वो इस वक्त सामना करेंगे धर्मा की गेंदों का। तो एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज न्यू स्टार कुंजतूर के फलस्वरूप इस वक्त रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए बल्लेबाज दुर्गा क्रिकेटर्स कुंचाडी के। और इस बीच धर्मा अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट उन्नी कृष्णन करने के बाद और गेंदबाज धर्मा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एंड द बॉल रनिंग डाउन टू अ डीप एक्स्ट्रा कवर, इनफैक्ट इट माइट बीन कट ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस। और इस बीच बल्लेबाज 2 रन दौड़कर प्राप्त कर चुके हैं। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद को रोका गया था सीमा रेखा के अंदर बेहतर तरीके से। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। धर्मा एक बार फिर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 3 से 4 कदम उनका रन अप। और इस बीच ये गेंद इस बार दैट इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट वन in-cutter delivery at the last moment. The ball went just wide of the stumps and in fact the ball went just narrow to the stumps at the last moment and it went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run. 14 for the loss of 3 wicket. The scoreboard stays and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of New Star Kunjatur. फिर से एक बार गेंदबाज धर्मा गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंद को, लेकिन फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग वहां पर, हालांकि उनके हाथों में कुछ दर्द जरूर महसूस हो करते हुए, लेकिन गेंद को बेहतर तरीके से फॉलो थ्रू में रोकने में सफल। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 overs कंप्लीटेड, 14 रन ऑन द बोर्ड, 3 विकेट लॉस्ट। और जहां तक सवाल है बेहतर स्कोर का, तो कम से कम 40 का आंकड़ा, यहाँ तक 40 के आंकड़े तक पहुंचना होगा दुर्गा कुंचाडी के बल्लेबाजों को अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो चौथा ओवर प्रारंभ होता है और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त सतीश को अंग्रेजी में आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So low scoring
continues in this semi-final as well because Durga Konchadi little bit struggling to get the run rate what they really wanted after losing 3 wickets. They managed to get only 14 runs on the board, but nothing much worried about that because the hero of the previous day, Ajay as well as Santosh, the two batsmen are out there in the middle, and having these two batters in the middle, suddenly Durga Konchadi looking towards some score around 35 to 40 if they manage to continue that batting performance what they left in the previous day. So from the far end, it's going to be a start of the over number 4, and a bowler who started with the wide delivery. Bowler Farviz, it's bowled far away outside the line of off stump, so that wide call by umpire. One more addition total. Again, Farviz bowling from the far end. Right arm over the wicket, bowls. Ajay drives that one beautifully down to boundary. Oh, what a stop! Magnificent effort there from the fielder. It's outstanding fielding effort there by the fielder. I think the jersey number 16 looks like Sadakutta or... Yes, Sadakutta down at the deep, wideish long on range and done a great effort. What could be a certain boundary? That fielder is really an outstanding effort. Diving to his right, full and dive, stopping the boundary and stopping a couple of runs for his team. 17 for the loss of 3 wicket. Farviz, the very good bowler for the side of New Star Kunjatturu. Again going for the slash, but misfield there by the fielder, allowing the batsman to come back for the second. And Nazir Churugol is the second time in this position. Couldn't manage to collect the ball neatly. What could be a certain single because of that fumble by the fielder. The opposition team has got a couple of runs. 19 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. So Ajay, just like I mentioned about, he is the one responsible for the team in the semi-final for Durga Konchadi in the last 2 matches. Has he played magnificent game, and once again he is taking initiative. Again, beautifully bowled. A quicker one, the faster one. Chance of run out there. If we direct it, it's going to be a opportunity of run out. Santosh might be struggling to reach his home when the throw which is coming from Nazir from the backward point region. And before the throw which is just misses the stumps, the batsman completed a single. 20 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Santosh is also played a very good innings for his team in the yesterday's match. Now he's facing... Farviz, right arm over the wicket, going for the slog, same shot! Oh, good stop! How many runs they stopped there? Absolutely terrific. Absolutely terrific there from the fielder. Latif Kayar is standing at short fine leg ridge and diving to his right because ball is almost moving in his wrong direction. He thought ball will go into towards its left direction because Santosh went for the sweep shot, but wicketkeeper misses it and he diving to his right and stopping certain boundary. Farviz again, right now over the wicket, bowls. Ajay going for the drive. Again, that ball is much quicker, so that couldn't manage to have got a bat onto that. He missed it completely from the bat, so that leg by call by umpire. With that extra scope on Namuzan to 22 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. So 3 outstanding fields, one from Jojo Suraj down at deep extra cover, one from Sadakutta, and now from Latif. Lovely sweep shot there from Santosh, but this time again they need to settle for the single because the fielder is so quick from the deep, so batsman completed a single. Much productive over compared to last 3 overs. This is a much better over for the team Durga Konchadi after completion of over number 4, searching for the right track. 23 for the loss of 3 wicket. Durga Konchadi as well as New Star Kunjatturu really played a fantastic game of cricket yesterday in the local pool. And Durga Konchadi defeated Friends Kutar in the semi-final. What a match that was. And Durga Konchadi once again handling the pressure. It's not so easy to defeat very formidable Friends Kutar, but they defeated that team and qualify for the semi-final. Even New Star Kunjatturu also done a great job by defeating Team Matrix in the quarter-final, and they got a place in the semi-final. Saifuddin.
Saifuddin is the bowler. Will go into starts the proceedings. Starts fifth over of the innings of Durga Konchadi. Saif again with a short run up, bowling away from us. Right arm over the wicket to Santosh. This time Santosh left the ball, rightly so. That nothing much to do with the delivery, which is going down the leg stump further away. White single umpire Arish Padilla, and with that addition of that single, score was on to 24 for the loss of a 3-wicket. United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group, registered Bejai Manglore. Outside the line of off stamp, good comeback here by Saif. Little bit outside the line of off stamp, and batsman going for the drive away from his body. Wicketkeeper behind the stump. Unnikrishnan, as always, so good behind the stump. Uprooted the bills, but not getting the result. Here is Saif again. Right arm over the wicket, balls again. Going for the drive. They're going for the single, chance of not in the strikers. And Ajay looks like he's little bit struggling, and looks like his body language. Maybe he's a safe, but umpire Roland Pinto just referring for the third umpire to see whether Ajay is a safe or not. And just a little bit back and throw which is coming from the fielder. Then wicketkeeper behind the stump, Unnikrishnan, might be done a quick work, much quicker work from wicketkeeper. But looks like the batsman may be the safe or not. I want to see the signal from umpire, whether it's going to be out or not out. Wait and see. So we are just waiting for the umpire decision, the umpire's decision which is pending here, to see that whether the batsman is safe or not. So batsman is gone, Ajay is gone, and he is just short of his crease. And that is a quick work actually from Unnikrishnan, isn't it? Because of very quick handwork by the Unnikrishnan, and they got a result in the favor. The huge wicket for team Kunjaturu. The new star Kunjaturu definitely got a huge wicket, because the danger man Ajay is back into pavilion. And so suddenly this might be a little bit slow running here from Ajay, is costing a huge wicket, and is back into pavilion. It's 24 for the loss of 4 wickets. The new batsman in his 00 jersey number. Umesh. Here is Saif. Right arm over the wicket, balls. Going for the drive. Got a little bit inside the bat, and the batsman cross over for a single. So good piece of bowling continues here from Saif. So 25 for the loss of 4 wickets. Saif again back to his bowling mark, bowling away from us. Right arm over the wicket, Santosh. Santosh drives that nicely down to deep long off region for a single. With that single, scored was on to 26 for the loss of 4 wickets. Both the batters are tried to rotate the strike in this particular over. This is the 5th over is in progress. And last... after this over, the last over which is remaining, outside leg stump, going to be 1+1. Indisciplined bowling performance there from Saif again. Outside the line of leg stump, 2 more to the total. This is going to be a very costly one. You are conceding that kind of runs for the opposition. It's a 28 for the loss of 4 wickets. Santosh back on strike. Saifuddin bowling away from us. Right arm over the wicket to Santosh. Santosh drives that one. They're going for the single again. The misfield there by Farvez.
And they're capitalizing that misfield by picking up a single there. With that single, Skoban was under 29 for the loss of 4 wicket. So Durga Konchadi is getting some important runs in this particular over with the help of some extras, with the help of some rotation of strike. And again, Saif right arm. Over the wicket, Umesh drives that one nicely down to deep long on region for an easy single. It's a productive over as far as comparison between last 4 overs. It's a good over there for Durga Konchadi. And with that single, they got a 30 on the board with a run rate of exactly 6 runs per hour. The last over remaining of the innings of Durga Konchadi. And wait and see in that last over how well these two batters will going to get some acceleration. So looks like it's going to be one more low scoring game. But you can't say it's a low scoring game by seeing the result of the previous match between Young Friends Urwa versus KFC Kodikal. 34, which is defended very well. 33, which is defended well by Young Friends Urwa for against KFC Kodikal. So that you can't call it as a small score. If he bowls well, fields well, can depend the total. Now, but first priority of New Star Kunjaturu in this particular match, they wanted ball one good over. Ajit is got a ball in his hand. But at the same time, Durga Konchadi wanted one better over. The 8 to 10 runs, definitely it's going to be a good score. And here is first ball. Ajit balls, lofted at one, lofted, but I think fielder taken the catch in the second attempt. Once again, looks like Sadakutta is doing a fantastic job in the deep long on region. The ball once looks like it's going to be get the distance there. Have a look at the fielder there jumping. Just in the first attempt, just pushing the ball. Second attempt, just got that one, and catch really taken fantastically. It's a 30 for the loss of 5 wickets. A little bit entertainment out there in the dugouts. The 6 signal. I think something which is happened there, maybe the branches of the tree, they're hitting the, yes, so that umpire signal is a 6. Absolutely, the much required 6 which is came from the bat of Umesh. 36 for the loss of 4 wicket. Far out, the outside enough off stamp and batsman completely misreading the delivery, the line of the delivery. What a fantastic blow there from Umesh. Even looks like Krishna Sadakutta there in the deep long on. Has a good attempt, but not enough to saving the 6 from the opposition. Again, right arm round the wicket. Bowles going for the drive inside edge of the bat. One more single there. With that single, Skoban was under 37 for the loss of 4 wicket. These all runs are important runs for Durga Konchadi. Even though they lost the wicket of Ajay in a wrong time, but Umesh is taking initiative of getting some acceleration. And he got a very important 6 in this last over. Ajit again, bowling round the wicket. Santosh joining the party. This is a huge one. This is gone. That ball gone many miles. What a shot there from Santosh. Absolutely. He hit that one as clean as a whistle. Have a look at that one. Absolutely magnificent strike. This is a huge 6. Outstanding struck there from Santosh. 43 for the loss of 4 wicket. All in sudden, 2 sixes in this last over, changing the complexion of the game. Here is again Ajit Bowles. Santosh drives that one, rocketing. But fielder is there in the mid wicket. Looking for the second. In comes the throw. And Krishnan missed it. Not a good throw from the bowler. What an innings is playing here, Santosh once again. He's just joining the party after Umesh hitting the ball. Now, scoreboard is 45 for the loss of 4 wickets. This is turning out to be one of the best over for Durga Konchadi. Already 15 runs which is scored at 21 valuable runs partnership between Santosh and Umesh in just 9 deliveries. What a fantastic comeback. Absolutely unbelievable comeback here from Durga Konchadi. Ajit Bowles. This time,
This is much better than the previous one. This is a monumental. This is a monumental, and Santosh finishes the innings in a style. Just using his feet and loisting it over. That ball gone a many miles. It's a biggie. Absolutely a biggie. 50 comes up here for Durga Konjari. And they set a target of 51. 51 is the total score. They set a target of 52 to win the match for New Star Kunjattur. And this is going to be one more fantastic semi-final. This is turning out to be one more fantastic semi-final because even New Star Kunjattur has also got some destructive batters in the side. And so that it's going to be one more entertainment here for the spectators. And wait and see how well the Kunjattur, New Star Kunjattur will going to get back here. But look at the last over, the ball by Ajit, 21 runs, which is definitely going to be a very costly last over. 3 sixes which is came from that last over of Ajit. And afterwards, I think Farvez is definitely one of the economical bowler with the economy of 5 runs. But all the bowlers is contributed. But because of one expensive over, now it's a 52 runs which is required from 36 ball for New Star Konchade. Wait and see the kind of reply coming from the batsmen of New Star Konchade. We'll take a short break, the commercial break. And after that commercial break, we are back in this match with my friend Mr. Gopi. Thank you very much. धन्यवाद सतीश तो यहाँ पर 52 रनों का लक्ष्य क्वाइट कॉम्पिटिटिव टोटल आफ्टर बीइंग स्लो स्टार्ट दैट फर्स्ट 3 overs they managed to score only 14 runs on the board. After that they come back terrifically in the second half of their innings, grabbing 38 runs 37 runs in the second half of their innings. They scored that means their second half of their 3 overs they scored 37 runs and they finished well with 51 and they set a victory target of 52 for New Star Kunjattur and their innings now going to start. और जहाँ तक New Star Kunjattur के
लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है। तो उन्नी कृष्णन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, उनकी उपस्थिति इस वक्त न्यू स्टार कुंजतपुर के लिए बेहद जरूरी है। अब सबसे बाहर की ओर निकलते हुए इस बार चूके विकेट कीपर बहुत ही मुश्किल के साथ गेंद को उन्होंने रोका, जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। और इस बीच जहां तक का सवाल है, और इस बीच वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ 2 रन यहां पर जुड़ चुके हैं उनके खाते में। तो यहां पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है न्यू स्टार कुंजतपुर को, खासकर पावर प्ले का फायदा उनके बल्लेबाजों को यहां पर उठाना होगा। गिरी सामना करने के लिए तैयार, अजय की गेंदों का यह गेंद, रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूके गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 2 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद ऑन साइड पर, लेकिन मिड विकेट पर सीधे फील्डर के हाथों में पहुंची, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्विंग किया था जरूर जमीन के सहारे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद सीधे पहुंची थी मिड विकेट फील्डर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। और अजय इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार रहा। और दोनों अंपायर इस बीच कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए, अंपायर और इस बीच दोनों अंपायर कुछ बातचीत करते हुए। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त 2 रन स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, 2 रन बिना किसी नुकसान के। यंग फ्रेंड्स उर्वा ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ request the captains of KCCR Kadri and Young Friends Urwa please to be reported here for toss for the second semi-final of this tournament. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, पावर प्ले का फायदा इस वक्त उठाना बेहद जरूरी बन चुका है इस वक्त न्यू स्टार कुंजतपुर के सलामी बल्लेबाजों को। इस बीच अजय की गेंद उन्नी कृष्णन के लिए, गॉन फॉर अ वाइड स्विंग, नॉट सक्सीडेड दिस टाइम, much straighter line and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। और फिर से एक बार अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, consecutive dot balls for Ajay and this is turning out to be a good over so far in Durga Konchaudi's point of view. Just 3 runs scored in this over and Ajay once again comes last time in this over, right arm over the wicket, गेंदबाजी करते हुए again एक बार फिर से ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूके 3 डॉट गेंदें लगातार उन्नी कृष्णन के लिए इस वक्त अजय ने फेंकी है और एक बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर दे चुके हैं अजय। सो आफ्टर फर्स्ट ओवर न्यू स्टार कुंजतपुर chasing the competitive target of 52 in 6 overs, they made a slower start, 3 runs they managed to score after completion of first over, yet to lose any wicket। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त equation का, तो 49 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs, that means in 30 deliveries with the required run rate of exactly 9.80 runs per over। और सर्व 10 विकेट इस वक्त सुरक्षित। और इस बीच गेंदबाजी पर लगाए गए हैं, जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए 0-4 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज भगवान, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज गिरी के लिए। निस्संदेह इस दूसरे पावर प्ले का फायदा इस वक्त उठाना होगा न्यू स्टार कुंजतपुर के बल्लेबाजों को, अगर उनके रन की गति में कुछ हद तक बढ़ोतरी अगर लानी है, कम से कम 10 से 15 रन इस ओवर में बटोरने होंगे इस पावर प्ले ओवर में। ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पहुंची, स्वीपर वहां पर मौजूद और इस बीच गेंद को वहां पर रोका जाता बेहतर तरीके से, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर बल्लेबाज गिरी ने और 2 रन बटोरने में सफल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 5 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर। भगवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, ना तो ओवर द विकेट, ये गेंद चिप किया इंडिया जस्ट ओवर द पॉइंट फील्डर सेट, He's got a hand on that at the last moment, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और जब तक दोबारा खुद पीछे की ओर जाकर दौड़कर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और इस बीच इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, इस वक्त भगवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गिरी के लिए लेग कटर गेंद थी,
गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, गेंद गई बैक टू द बॉलर की दिशा में, बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 7 रन बिना किसी नुकसान के। भगवान एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स अ सिंगल, इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड कम बैक, ओह दिस कुड बी ट्रबल, अगर रन के लिए दौड़ते तो निस्संदेह नॉन सेकंड पर खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन ऐन मौके पर बिल्कुल सही तरीके से बल्लेबाज गिरी ने उन्नी कृष्णन को वापस भेजा और आखिरकार एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर उन्नी कृष्णन सामना करते हुए इस वक्त भगवान की गेंदों का ये गेंद उन्नी कृष्णन के लिए इस बार ऑन साइड की दिशा में गेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 9 रनों पर। वाइडिश लॉन्ग ऑफ और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर 2 फील्डर 20 के दायरे के अंदर तैनात इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और भगवान इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गिरी के लिए, ये गेंद इस बार ड्राइव किया गिरी ने, गेंद पहुंची इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, 10 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, और 2 ओवर के बाद 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, और रन से चाहिए 43 जबकि ओवर्स बाकी है 4। 4 overs left, 43 more runs now they have to score for victory. 42 more runs now they have to score victory in remaining 4 overs. That means in 24 deliveries. Still they got all 10 wickets kept intact. Exactly, the required run rate for them is 10.50 runs per over. और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा, चंद चौके और छक्के इस वक्त लगाने ही होंगे बल्लेबाज को न्यू स्टार कुंजतुर के इस मैच में कमबैक करने के लिए। तो 2 ओवर में बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक दिया है गेंदबाजों ने दुर्गा क्रिकेटर्स कुंचाड़ी के, और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, जबकि सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज दाहिने हाथ के गिरी। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबद्ध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट और डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त पीछे की ओर जाती हुई, जबकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, और फील्डिंग में जमावट अभी भी गेंदबाज करते हुए, जो कि नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करने जा रहे हैं, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गिरी के लिए अजय। ये गेंद पहली गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद बढ़ते हुए, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। Absolutely perfect strike. He just played that one with a twisted bat and finds the gap as well. Improvisation is exquisite, and because of that, he's got a boundary for that. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त गिरी के बल्ले से लगता हुआ, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, इस वक्त ऐसे चंद और स्ट्रोक की उन्हें जरूरत है इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। 38 रन चाहिए, 23 गेंदें बाकी, 38 runs more needed in remaining 23 deliveries now. और इस वक्त न्यू स्टार कुंजत बैल के बल्लेबाज एक बार फिर से फाइट बैक करने की पूरी कोशिश करते हुए, एक बार फिर से गेंदबाज अजय तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस गेंद को खेलना चाहा, ऑन साइड पर गेंद गई, ऑफ साइड पर शॉर्ट कवर की दिशा में 1 रन मिलेगा, लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए उन्नी कृष्णन, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद उछालना चाहा लेकिन गेंद पहुंची शॉर्ट मैन पर, और 1 रन इस बीच मिलेगा, इससे पहले कि आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर, और इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष जारी है इस बीच इन दोनों टीमों के बीच, दुर्गा कुंचाड़ी और न्यू स्टार कुंजतुर के बीच। और एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद एक बार फिर से अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, प्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है।
हालांकि 1-2 सेकंड जरूर लिया था अंपायर रोलांड पिंटो ने सोच विचार करने के लिए, लेकिन बिल्कुल सही निर्णय इस वक्त दिया। शफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहा था और अंपायर को कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो पहला विकेट गिर चुका है 16 रनों के ऊपर। गिरी आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हैं और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा समस्याएं और बढ़ चुकी है न्यू स्टार कुंजतपुर के लिए। द प्रॉब्लम्स आर नाउ बिल्डिंग अप फॉर देम। 16 for 1, 2.4 overs gone in the rings. 3.2 overs left, 20 balls left, and in remaining 20 balls still have to score 36 more runs for victory. नए बल्लेबाज कार्तिक का आगमन होता हुआ आमतौर पर नमना कसरगोड का प्रतिनिधित्व किया करते हैं। यहाँ पर उनकी टीम इस श्रृंखला में हिस्सा नहीं ले रही है, तो इस वजह से इस वक्त न्यू स्टार कुंजतपुर का वो प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हुए काफ़ी प्रतिभाशाली छोटे कद के खिलाड़ी और पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था और यहाँ पर सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अंपायर से गार्ड लेते हुए। 36 नीडेड इन रिमेनिंग 20 बॉल्स नाउ और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज अजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए दर्शकों से लगभग मैदान भर चुका है आज गुरुवार वर्किंग डे होने के बावजूद। और इस बीच अजय ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलते हुए प्रश्नार्थक तरीके से अंपायर की ओर जरूर देखा कि शायद वाइड देंगे, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, सही गेंद घोषित। और एक बार फिर से अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए कार्तिक के लिए ये गेंद स्वीप करना चाहा। गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथों से छूट चुकी है। दोबारा खुद अपने हाथों से वो जब तक गेंद को फील्ड करे, लेग बाय का इशारा, बल्लेबाज के पैर से लगकर गेंद उछली थी हवे में और एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस विकेट कीपर फीड करे, बल्लेबाज लेग बैक के रूप में 1 रन पर टोल चुके थे। 3 ओवर के समाप्ति 17 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 overs. Still the batsmen of New Star Kunjatur searching for the right track. 3 ओवर का खेल बाकी, 35 runs they have to score for victory in remaining 3 overs and the asking run rate is now gone up to 11.67 runs per over. और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब न्यू स्टार कुंजतपुर को इस मैच में वापस ला सकते हैं। देखते हैं उनकी पारी में क्या होता है और उनकी इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है, ये अब आपको अंग्रेजी में जानकारी देंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश। आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मैं उनको माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So the 35, which is a run required from 18 balls, and looks like it's a good start from the bowlers of Durga Konchadi, defending the total score. And today, I think there's a very good number of crowds. Have a look at the spectators out there. Absolutely, they're enjoying the game of cricket here, and there are a good number of crowds, even though it's a working day and a Thursday. But still, we are not. Doesn't look like it's going to be a working day. But a fantastic number of crowds enjoying the game of cricket. Now, 35 required from 18 balls and 17 for the loss of 1 wicket. And bowler will go into ball the next over is a man who's got a fantastic tournament with the ball. Dhanush is back into attack. Dhanush bowling with a short run up away from us. Right arm over the wicket, bowls to Karthik. Karthik went for the reverse, a flump in front of wicket. Karthik went for the reverse stroke while the first ball of the over of Dhanush, and Dhanush strikes. Just like I mentioned earlier, the man with the golden hand, man who got a very good tournament from the ball. And first ball itself, he went for the reverse sweep, a ball just hitting his back leg, and it is finding right in front of off stump. It's a 17 for the loss of 2 wicket. So 17 for the loss of 2 wicket. Absolutely the good start here by the bowler for Durga Konchadi. Now looks like the team New Star Kunjatur under pressure, but still having Unni Krishnan in other end. If anyone be able to get any support from other end, then I think still New Star Kunjatur has got a chance here to come back. But Dhanush here is, and this time nice looking drive there from the new batsman Nazir Chirugoli. He picked up a single by dragging the ball from outside the line of off stump towards the mid-wicket region. With that single, Skobert Mozanto 19 for the loss of 2 wicket.
What a fantastic game of cricket is going on here. Real Estate Group registered Bejai organizing such a wonderful cricket tournament in the name of United Trophy 2023. One of the best tournament I want to say, because which is organized very systematically, and I think all we can see that discipline cricket tournament so far in these 2 days of cricket. One more dotted deliveries, one each and every dot ball will going to create the problem here for New Star Kunjaturu. It's 18 for the loss of 2 wickets, 34 more runs required from 15 balls. Dhanush again back to his bowling mark. Right above the wicket, there's a top edge opportunity, but I think ball will going to land it safely. Yes, it does. The ball is in there for a long time, but ball which is landed between the bowler and the deeper long off, so that long off fielder have to run too much to reach that catch. Even a bowler, very difficult for him to run back. So ball which is landed safely. Batsman safe. They got a single. 19 for the loss of 2 wicket. Dhanush ball does this time slashes. Again the ball will go into land it safely before the fielder from cover point to run back towards a deep cover point, extra cover region. Ample time for the batter to complete the couple of runs. It's a 21 for the loss of 2 wicket. Nazir Cherugoli trying his level best to get 1 or 2 big shots, which is badly required for New Star Kunjaturu to win this match. And Dhanush again bowling away from us. Right arm over the wicket, went for the reverse sweep. Again couldn't manage to get at one middle of the bat. A little bit fumble, but no question of extra run there. One more single is added total. So Dhanush finishes that over. Now 30 runs required. 12 balls remaining. 15 runs per over, which is the required run rate for New Star Kunjaturu. It's going to be a very interesting match. Still looks like Durga Konchadi are looking in a commanding position, but cricket is, everybody knows, this is an unpredictable game. What we're talking about, the number of crowds, not only the number of crowds gathering here in UCG ground, but totally this area is having a festival atmosphere. Of course, and our backside of our commentary box, there is yes, Chandika Yaga is in performing in Marigudi temple. So a lot of devotees are passing in this Urwa area. So all together we are watching that the jam-packed stadium here, not only in the stadium but in the back of our community box as well. And it looks to be a festival atmosphere, electrifying atmosphere here in UCG cricket ground. 22 for the loss of 2 wicket, and the last 2 overs remaining. So last 2 overs remaining, 12 balls, 30 runs required for the victory. Krishnan and Nazir Cherugali, 2 very experienced campaigner and danger batsmen are in the middle. The first ball looks like it's going to ball is not too far from the wicket keeper, did a great job, but the bowlers Bhagwan starts with the wide, is bowling his second over, and first over he conceded 7 runs, and he's bowling his second over and it starts with the wide. 23 for the loss of 2 wicket, 29 required from 12 balls. Bhagwan, right above the wicket, driven that one towards the mid-wicket region, but the fielder is in the right position there in the mid-wicket, so that batsman have to settle for the single. With that single, Skoban moves on to 24 for the loss of 2 wicket, and they needed another 28 runs to win this match. 28 required from 11 balls. Bhagwan. Krishnan again, wicket keeper misses it. Wait for the umpire signal. By call by umpire. The wicket keeper behind the stump fails to collect the ball. Each and every run going to be a crucial if the strikes will go into rotate. The 10 balls, 27 required for the victory. Bhagwan from the Rohan Corporation end. Right above the wicket. This time they're appealing for leg before wicket. Umpire says that ball is just going to miss the off stump, and in fact of the lines. 27 required from 9 balls. Each and every dot ball will go to take the match away from New Star Kunjaturu. Bhagwan. This time Nazir drives that one, and the fielder there in the deep long off Bejai is just in a defensive frame of mind. You know exactly, trying for the catch, missing the ball, going to be a boundary, so that he is just going back, waiting for the ball to bounce in front of him, collects the ball, back to bowler. 26 required, 8 balls remaining. Krishnan, this time, this is what Krishnan wanted to do. Little bit shuffled across the line of the delivery, so that the bowler wanted to ball around the legs of the batsman. By doing that,
That ball went too far away from the outside and leg stump. 27 for the loss of 2 wicket. Ali young friends Urwa ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Young friends Urwa ತಂಡದ ನಾಯಕ. Bhagwan, this time only again going for the mighty stroke. Again he's not really getting that one from the middle of the bat. Just a single. Good over is in progress there from Bhagwan. 24 required. 7 balls remaining. Badly required one big blow for a team New Sir Kunjaturu. 28 for the loss of 2 wicket. There is a long off. There is a wideish long on. The fielder in the mid wicket. There is a square leg. There is a deep cow point. Again. Bhagwan. Balls to Nazir. Nazir again not really getting the ball. Good bowling there from Bhagwan. Excellent over. One more over completed. One more over completed and one more over remaining. 6 balls remaining. They have to get 24 to win this match. The comparison, there's just a comparison between these two teams. At the end of 5 overs, Durga Konchadi are 30 for the loss of 4 wicket. Now they are 28 for the loss of 2 wicket. Not a big difference, but difference in this last over is that in the last over, the batsman Santosh and then Umesh hits the 3 sixes and they scored a 20 plus runs in that last over. Now the same batting display which is required from the batsmen of Kunjatturu in their final over of their innings if they wanted to win the match. 24 required. Pradeep starts with the delivery. This is a dotted delivery. Just like I mentioned, each and every dot ball will go into a big problem for Kunjatturu to win this match. 24 required from 5 balls. Pradeep, Rajit, correction, balls, batsman rise, not for more than a single, just a single. 23. Now, last 4 balls remaining and 23 runs required for the victory. 4 balls, 23. Last opportunity. Nazir drives that one down to square leg region for a single. That single will not going to help the team because now just a format is left in this game. 22 required from 3 unless bowler bowls any no ball and wide. It's a victory which is going to be a permanent. But here is a bowler ball 1 wide here. But still it's a 21 required. 3 balls, 3 sixes will not going to help team Kunjatturu to win this match. The next semi-final, second semi-final. Young friends Urwa. Young friends Urwa versus KCCR Kadri. The next semi-final. So format is left in this game. Unnikrishnan. But unfortunately, Unnikrishnan, even though he came as opener for the side, but fails to get any one big shot in his innings. Now here is last ball. Top edge. And top edge is the chance opportunity for the fielder. And last ball wicket here for Rajit. So comprehensive victory for Durga Konchadi. They are entering into the final of this prestigious United Trophy 2023. Durga Konchadi, they are through to the final. Congratulations for the winners. And hard luck New Star Kunjatturu. They didn't able to qualify for the final, but they played a very good innings, very good game of cricket came from long way from our neighboring state, neighboring district, Kasaragod district. Played a good game of cricket, but not quite enough to defeat the Durga Konchadi. And thank you very much, New Star Kunjatturu, for your representation for this prestigious United Trophy. Congratulations for Durga Konchadi. And now it's a time for the announcement of the man of the match. Thank you. Now it's a time to announce the man of the match award, which is
deliveries with the help of two massive sixes which is came in the last over. May I request Mr. Santosh, Mr. Sai Santosh of Durga Konjadi, please collect your Man of the Match award from our chief guest. At the same time, I request the captain of New Star Kunjaturu, please collect your presentation memento from our chief guest. Dhanyawad Satish. So second semi-final match of this tournament is now going to start. One more good match is now coming up. Young friends Urwa will take over KCCR Kadri, and KCCR Kadri after won the toss they elected to field first, and the first ball of their innings is now coming up. Santosh the striker
और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज दिलीप, और जहां तक सवाल है इस वक्त पहली गेंद का, तो पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दिलीप संतोष के लिए। ये गेंद इस पर हल्के से गेंद को खेल दिया संतोष बंटवाल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक रन का इजाफा और एक रन के साथ यंग फ्रेंड्स उर्वा का खाता यहां पर खुल चुका। जहां तक संतोष बंटवाल का सवाल है, पिछले मैच में वो खेले नहीं थे यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए, लेकिन उनके बावजूद यंग फ्रेंड्स उर्वा KFC कोडिगल के खिलाफ विजय दर्ज करने में सफल रही थी। 4 रनों के लिए 4 रनों की रोमांचक जीत उन्होंने हासिल की थी। अब उनकी वापसी हो चुकी है और उनके वापसी के साथ यंग फ्रेंड्स उर्वा की बल्लेबाजी का लाइनअप भी सशक्त हो चुका है और इस वक्त अरशद सामना करने के लिए तैयार। और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो दिलीप इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद काफी विध्वंसक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। सामना करते हुए दिलीप की गेंद का फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी और आखिरकार गेंद के इस वक्त ऑन साइड के उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर, जहां पर अल्ताफ बॉलपाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 1 रन 90 बिना किसी नुकसान के। द्वितीय सेमीफाइनल मैच यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत शुरू हो चुका है। यह गेंद अरशद के लिए बेहतर गेंद थी इस वक्त, स्क्विकर गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद उनके पैरों पर टकराई थी और आखिरकार विकेट कीपर मंसूर ने आगे की ओर जाकर गेंद को फील्ड कर लिया। और खासकर मंसूर का आगमन यहाँ पर हो चुका है KCCR कदरी के लिए इस मैच में और इस वक्त उनके उपस्थिति में इस वक्त KCCR कदरी इस मैच में इस वक्त उतर चुकी है फील्डिंग के लिए। और इस बीच दिलीप अपने अगली गेंद लेकर तैयार अरशद के लिए। दाईं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर गेंद थी और आखिरकार गेंद को इस वक्त स्टीयर करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए यह गेंद इस बार ड्राइव किया डीप मिड विकेट पर अरशद ने, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। एक रन इस बीच बल्लेबाज को मिला। बेहतर फील्डिंग वहां पर डीप मिड विकेट फील्डर था। दर्शकों से लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है, एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और जहाँ तक का सवाल है रन्स का, तो रन्स इस बीच मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर। एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी और दिलीप इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद जाते हुए इनटू द गैप एज वेल, लंबा दौड़ इस वक्त लगाते हुए जब तक गेंद को वो फील्ड करे डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर। बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। नॉट क्वाइट मिडली गेट द लास्ट मोमेंट, ही गॉट अ कपल फॉर दैट स्ट्रोक, द बॉल वेंट इन द गैप और 2 रनों के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। तो यहाँ पर सतीश KCCR में मंसूर की वापसी हो चुकी है, जबकि यंग फ्रेंड्स उर्वा में संतोष बंटवाल की वापसी हो चुकी है। तो इन दोनों की वापसी से दोनों टीमें और सशक्त बन गई है और यहाँ पर हम उम्मीद अपेक्षा कर सकते हैं कि एक बेहतर क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन पहले ओवर में धीमा शुरुआत जरूर कर चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा, सिर्फ 4 रन जोड़ चुका है, लेकिन आने वाले 5 ओवर में अगर ये दोनों बल्लेबाज खासकर अरशद और संतोष बंटवाल रुकते हैं तो यंग फ्रेंड्स उर्वा एक बेहतर स्कोर खड़ा करने की ओर अग्रसर हो सकता है। Absolutely, Gopi. And just like you mentioned about two good players included for both the teams. One is Mansoor behind the wicket for KCCR Kadri as a wicket-keeper batsman. And Santosh, one more fantastic striker of the ball for young friends Urwas. Definitely, that will go into galvanize the level of confidence of all the players of both the teams. But Gopi, it always looks like the action replay of 30 overs formidable games of finals, RRP Memorial Trophy. The same teams, KCCR Kadri and Young Friends Urwa, they played a final. And KCCR Kadri, first time they become the champion in this in that RRP Memorial Trophy. So it looks like, Gopi, it's one more opportunity for the cricket lovers to enjoy the game of cricket. Winning and losing is a part of cricket, Gopi, but they wanted to need to see the two very good teams competing for the place in the big final. And just like you mentioned, Gopi, even though it was a slow start in the first over, but they got opportunity to bounce back in the second over of the power play. Exactly, Satish. और RRP मेमोरियल 30 ओवर के फॉर्मेट का एक्शन रिप्ले यहाँ पर है, लेकिन ये फॉर्मेट अलग है। 6 ओवर का फॉर्मेट है, वो 30 ओवर का फॉर्मेट था। यहाँ पर अलग क्रिकेट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर नया ओवर प्रारंभ करते हुए धनुष दाहिने हाथों पर विकेट। ओवर की पहली गेंद अरशद के लेग स्टंप से बाहर स्विंग किया है 4 रनों के लिए।
तो यहाँ पर अरशद अपने धीरे धीरे अपने बाजुओं को खोलते हुए इस बार जितनी तेजी के साथ गेंद उनकी ओर आई थी उतनी तेजी के साथ बल्ला उन्होंने घुमाया और गेंद को कनेक्ट किया मिडल ऑफ द बैट। देखिए किस तरीके से गेंद को स्विंग किया था और निस्संदेह यहाँ पर चौका वो प्राप्त करते हुए गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। और पावर प्ले में अगर अरशद को आप लेग स्टंप पर गेंदबाजी करेंगे तो निस्संदेह आपको भुगतान करना पड़ेगा और यहाँ पर गेंदबाज धनुष को भुगतान करना पड़ा क्योंकि उन्होंने लेग स्टंप पर गेंद फेंकी थी। गेंद को स्विंग कर दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए अरशद ने और 8 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए स्क्वायर लेग फील्डर का पीछे भेज दिया गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर ठीक सीमा रेखा के पास और धनुष एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 7 खिलाड़ी अभी भी पेशकश के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत और धनुष एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहा चूंकि वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रन। हालांकि गेंदबाज धनुष ने प्रश्नार्थक तरीके से अंपायर की ओर जरूर देखा लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी और इस वजह से अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया और वाइड की इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और खासकर कुल मिलाकर ऐसा कहा जाए तो गेंदबाज धनुष के लिए श्रृंखला बेहतर रहा है और देखना है कि पिछले मैचों के सफलता के सिलसिले को इस मैच में भी वो आगे बढ़ा पाते हैं गेंदबाजी में या नहीं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद एक बार फिर से वाइड का इशारा कंसेक्यूटिव वाइड और चौका इस वक्त झड़ने के बाद धनुष ऐसा कहना पड़ेगा अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर खो चुके हैं। 2 गेंदें वाइड भेज चुके हैं कुछ हद तक दबाव में नजर आते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को झालना और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। तो अरशद का ये मनपसंदीदा स्ट्रोक बंटवाल में भी एक स्ट्रोक ऐसे ही लगाया था उन्होंने एनएम क्रिकेटर के खिलाफ मुजीब की गेंद पर जमीन पर आती हुई गेंद को उछालकर उन्होंने खेला था लॉन्ग ऑफ पर पहले ही ओवर में और यहाँ पर भी मैच के दूसरे ओवर में ये छक्का वो स्ट्रोक खेलते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। और तुरंत इस वक्त कुछ बातचीत चलती हुई टीम के अन्य खिलाड़ी धनुष को कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। अरशद जैसे गेंदबाजों के खिलाफ अरशद जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ और जहां तक सवाल है इस वक्त तो धनुष का तो यहाँ पर इस श्रृंखला में पहली बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को वो गेंदबाजी कर रहे हैं और खासकर अरशद जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने मौजूद हो तो निस्संदेह किसी भी गेंदबाज के लिए यहाँ पर चुनौती होती है उन्हें गेंदबाजी करना। तो इस बीच धनुष तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर स्ट्राइट अवे ही इज ऑन प्रेशर ही इज अंडर प्रेशर नाउ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के 17 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए धनुष बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 4 से 5 कदम उनका रन अप दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद पैरों पर टकराई सर्टेनली गोइंग डाउन द आउटसाइड द ऑफ स्टंप जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और लेग बाई का इशारा अंपायर का और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर और स्कोर 18 रनों पर रुक चुका है जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और गेंद खासकर लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी अंतिम क्षण में। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद ड्राइव किया चिप किया इस वक्त संतोष ने डीप मिड विकेट पर कोई फील्डर वहां पर नहीं वाइड स्लॉग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। 16 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं 16 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर और सिर्फ 4 सही गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट गेंद को उछालना चाहा नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक रन नंबर 17 केम इन दिस ओवर एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ 21 विदाउट लॉस नाउ इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। इस ओवर में अंतिम गेंद बाकी और अरशद एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं जबकि गेंदबाज धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अरशद ने
गेंद की परीक्षा करने के लिए गेंदबाज से गेंद को मांगी और गेंद की परीक्षा करने के बाद एक बार फिर से गेंदबाज को गेंद लौटा चुके हैं और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। रन नंबर 18 came in the last delivery of this over और 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर इस वक्त बढ़ चुका है 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 22 without loss for young friends who after being completion of 2 overs. So 18 runs scored in this over. 18 रन इस ओवर में बने सतीश। और निस्संदेह जैसा कि इस ओवर से प्रारंभ से पहले मैंने और आपने फरमाया था, अगर ये बल्लेबाज अगले चंद ओवर तक टिकते हैं तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर हो सकता है। और यहाँ पर दूसरे ओवर में अपने सही लय रिदम को प्राप्त करते हुए 18 रन पर रोक चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज। और खासकर अरशद काफी आक्रामक नजर आते हैं और यहाँ पर एक यंग फ्रेंड्स एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ चुका है सतीश। Absolutely, Gopi. And just to have a look at the Dhanush, a little bit what changes has happened in this semi-final, because so far is so good, the young talented bowler. But the big difference in this match is that, Gopi, is first time I'm observing the bowling for the left-hand batsman. Just like not his bowl, just like I'm talking about the left-hand batsman is not a big problem, but the batsman, left-hand batsman like Ashad, it's maybe the big problem. The name itself, it's going to be enough for the bowler to feel the pressure, isn't it? You know exactly, I'm bowling to the one of the destructive batsmen, so there might be a little bit the level of confidence is not there, isn't it? But at the same time, the line which is bowling, absolutely is a perfect line to bowl to the right-hander batsman, isn't it? The problem is that is bowling for the left-hand batsman is considered a lot of runs. This is a big difference. Exactly, सतीश। अरशद के खिलाफ किसी भी गेंदबाज को गेंदबाजी करना एक चुनौती होता है कभी भी। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 23 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 23 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। दिलीप एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त स्वीप किया था, खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर। इम्प्रोवाइजेशन न करते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 24 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम, दर्शकों से खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है। वर्किंग डे गुरुवार होने के बावजूद और यहाँ पर अगली गेंद लेकर दिलीप तैयार। नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट, just wanted to play the reverse shot by संतोष बंटवाल, लेकिन 1 रन इस वक्त उन्हें जरूर मिला इससे पहले कि गेंद को शॉर्ट कवर पर फील्ड किया जाता। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 25 विदाउट लॉस। फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग यार फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा। और इस बीच दिलीप अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। नाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अरशद के लिए इस बार दुविधा में पड़ गए। पहले सोचा कि गेंद को रिवर्स शॉट खेला जाए, फिर सोचा कि गेंद को सीयर किया जाए, लेकिन गेंद को कुछ ज्यादा दूर नहीं खेल सके और रन के लिए दौड़ पड़े और सीधा थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के। इससे पहले कि अरशद नॉन स्ट्राइकर रन पहुंचे, गेंदबाज ने तुरंत विकेट उड़ा दिए थ्रो को रिसीव करने के बाद और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। तो इस दुविधा भरे बल्लेबाजी के कारण वो अपना विकेट यहां पर गंवा चुके हैं और पहला विकेट यहां पर गिर चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा का 25 रनों के योग पर। अरशद आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए एक बेहतर पारी खेलने के बाद और यंग फ्रेंड्स उर्वा अपना पहला विकेट यहां पर खो चुका है 25 रनों के योग पर। इट्स 25 for 1। सो दुर्गा क्रिकेटर्स कुंचाड़ी पिछले मैच में न्यू स्टार कुंजातुर को पराभव करने के बाद इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। और देखना यह है कि द्वितीय फाइनलिस्ट के रूप में इस श्रृंखला के फाइनल में कौन सी टीम प्रवेश प्राप्त करती है, यंग फ्रेंड्स उर्वा या फिर केसीसीआर कतरी। तो नए बल्लेबाज नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। राजेश उबर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और इस वक्त संतोष सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज दिलीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट ऑफ से काफी बाहर शॉर्ट टर्न पर रवि का मिसअंडरस्टैंडिंग। ओ इस बार गेंद उनके हाथ में पहुंची लेकिन मंसूर हड़बड़ाहट में खुद विकेटों के ऊपर गिर गए, हालांकि गेंद उनके हाथों से छूट चुकी थी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, आसान सा रन आउट इस वक्त। और यहाँ पर देखिए और अंतिम क्षण में गेंद को वो गैदर ठीक तरह से नहीं कर पाया और खुद विकेटों के ऊपर गिर गए और इस वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं। 1 रन यहाँ पर मिल चुका है और कुल मिलाकर एक आसान सा रन आउट था सतीश, लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर मंसूर विकेटों पर गिर पड़े और ये विकेट यहाँ पर बच चुका है।
So absolutely, Gopi. It looks like the same action replay of the mistake which is done in the Bandwal, and I think the catch of Santosh when Mansoor is drops the catch, then he's came into strike and he's hit the one boundary and changing the complexion of the game. Something similar to that, isn't it? The easy opportunity. Ravi returns the ball very nicely to the hands of Mansoor, but Mansoor little bit urgency which is shown. Ball slipped out of his hand, and I think that is a different story, Gopi, because that time I think the team which is chasing, and here is the batting first, young friend Urwa. But altogether, Gopi, one golden opportunity which is missed out by KCCR Kadri. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर स्वर्ण अवकाश गंवा चुके हैं मंसूर विकेट कीपर और अपनी अगली गेंद लेकर दिलीप इस वक्त तैयार। ये गेंद हल्के से इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेल दिया राजेश, और ऐसे स्ट्रोक्स के लिए राजेश जाने जाते हैं, गेंदबाज को विचलित करते हैं, कभी स्टंप्स को एक्सपोज करते हैं तो कभी विकेट को छोड़कर दाईं ओर आ जाते हैं, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, कभी स्टंप्स को कवर करते हैं, शफल हो जाते हैं। और यहाँ पर अजीब और गरीब ढंग से गेंद को खेला इस वक्त शॉट गली की दिशा में, और एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रन। एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाज किया, गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया जेंटली, इस वक्त सेंसिबली। एक रन के लिए संतोष ने खाली क्षेत्र चुनते हुए एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 7 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं। दिलीप इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश सामना करते हुए इस बार फिर से इंप्रोवाइजेशन किया, गेंद हवे में, बैकवर्ड थर्ड मैन फीडर दौड़ कर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने भापा की गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद का उन्होंने इंतजार किया, पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट पॉइंट उन्होंने गेंद को फीड किया और थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो 8 रन इस ओवर में बने, और सतीश पहले ओवर में 4 रन बने, दूसरे ओवर में 18, तीसरे ओवर में 8, 3 ओवर में 30 रन। बेहतर शुरुआत यहाँ पर यंग फ्रेंड शुरुआ कर चुका है, और बचे हुए 3 ओवर में कम से कम 25 से 30 रन भी अगर वो बटोर लेते हैं तो 55 से 60 तक का आंकड़ा पहुंच सकता है, और 55 से 60 तक का आंकड़ा इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिटिव टोटल इन दिस सर्कमस्टेंसेस। और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ, माइक्रोफोन पर मैं अब आपको बुलाना चाहूंगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Gopi. So, young friends, Urwa really has got a very good start from first of all, its opening batters, Santosh and Arshad, they got a very good start. Of course, it's not a explosive start in the first over, and Dilip bowled very well, just 4 runs is conceded. But the second over, I think it's going to have a big impact in this match. The second over, Tanush conceded some runs, 18 runs in the second over, and third over, once again, Dilip came into ball as a captain, bowled a little bit better over. Just 8 runs came from that over. Altogether, 30 valuable runs. They're going exactly 10 runs per over, and similar run rate, the projected score will be the big one, 60 runs, and that's what KCCR Kadri need to restrict the runs of young friends in the remaining overs. Again, nicely turns that one on the onside, and you have to look for umpire decision. It's a deliberate call by umpire. It's a deliberate call by umpire, so that Rajesh Ubar have to go to the striker's end. Might be the ball which is coming into the batsman, isn't it? He couldn't manage to take his bat into the line of the delivery. That's why umpire Roland Pinto, rightly so, is called. It's a deliberate padding. 30 for the loss of 1 wicket, and over number 4th is in progress. Ranjit back to his bowling mark. Second time in this over. Right arm round the wicket to Rajesh. Rajesh lofted that one up and over, down to deep long of boundary, and fantastic piece of fielding by the fielder. Outstanding fielding. Once again, this time Ashok, everyone appreciating it. Look at the crowd here, acknowledging. This is what the crowd loves to see, isn't it? 100% effort there from the fielder. What could be a certain boundary? What could be a certain boundary? Because Rajesh is lofted at one just over the top of the infield. The fielder from the deep long on, he need to cover a lot of ground to stop that boundary, and he did a great job saving a couple of runs for his team. 32 for the loss of 1 wicket. Ranjit bowling away from us. Pass umpire Roland Pinto. Right arm over the wicket. Bounce low. That was a little bit short pitch delivery, and was Rajesh not expecting that much of short pitch delivery. Otherwise, that ball, we need to search the ball in that out of the park in the market, because that ball has got a little bit extra bounce at the last moment, so that Rajesh couldn't manage to take the advantage of the delivery. One more single, 33 for the loss of 1 wicket, and the over number 4 is in progress. Ranjit, one of the
the better bowler in the present cricket, who has been really improved a lot in his bowling, and seems to be one of the best bowler in the present cricket. Is in operation, bowling away from us. Right arm over the wicket to Santosh. Santosh Bantwal so far looking cool and calm, and is playing his own game. Here is the first next one. This time going for the ball. Oh, reverse stroke. Looks like the batsman is safe. Oh my goodness. This is a juicy full toss, isn't it? Absolutely juicy full toss. Santosh is not really happy with himself. Have a look at it on the replay. Went for the reverse shape. Ball is came in the same line where he wanted to be, and but bat which is came little bit late to that line of the delivery. Otherwise, that ball will go into travel out of the park. Sometimes it's happening in cricket. His life is very luck in your favor. Even the juicy full toss definitely will going to give the wicket for you. But Ranjit, I think, is a lucky escape. He just survived from that full toss delivery, and Santosh just missed that golden opportunity. 33 for the loss of 1 wicket. So far, it's a very good over for KC Kadri from Ranjit. 5th time in this over, bowling away from us. Right arm over the wicket. Balls to Santosh. Santosh once again went for the reverse shape. He's got enough batter to that ball, running down to deep backward boundary for 4 runs. This time Santosh not given up. He's just saying that I am not given up. I will go into play that same stroke. But this time, after learning from the mistake of the previous one, he's just helping it down. He's not really try to get that one very hardly, but he's just helping it down, isn't it? Just using the face of the ball and just getting the direction towards the deep backward point region. Once he defeats the infield, quick outfield here in UCG ground, and no chance at all for the fielder to stop the boundary. Welcome boundary coming up here for young friends Urwa and for Santosh. 37 for the loss of 1 wicket. Ranjit again bowling away from us. Right arm over the wicket balls again. Santosh repeating that one. This time he finds the fielder. Altaf Walpadi is in the right position. If we see it in the replay, Gopi, before that the boundary, the same fielder is in that gully region. After that boundary, is called a deep cover point fielder, little bit fine towards a backward point fielder, so that the same fielder inside the ring coming towards a slip corner. This is an outstanding captaincy and good thinking by Ranjit. The bowler himself is asking that fielder, you go and stand there. And he bowled the same delivery, and Santosh went for the same stroke. This time he's got a top edge, but it's a good thinking by bowler, isn't it, Gopi, to get that wicket of Santosh. एग्जैक्टली सतीश और निस्संदेह बेहतरीन तरीके की फील्डिंग यहाँ पर सजाई थी कप्तान ने 2 स्क्वायर फील्डर तैनात है स्लिप कॉर्नर पर उन्हें बुला लिया गया स्लिप कॉर्नर से थोड़े से पीछे शॉर्ट थर्ड मैन पर और वो जानते थे संतोष उसी तरह का स्ट्रोक खेलेगा और गेंदबाज ने भी चतुरता के साथ गेंदबाजी की कुछ उछाल लेती हुई गेंद उन्होंने फेंकी थी अंतिम क्षण में गेंद बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उससे कुछ ज्यादा उछाल ली और टॉप एज पर टकराया इस बार पूरी तरह परफेक्ट इम्प्रोवाइजेशन के जरिए स्ट्रोक्स नहीं खेल सके संतोष टॉप एज पर गेंद टकराने के बाद गेंद पहुंची यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में तो चतुर सोच क्लेवर थिंकिंग कप्तान ने की और गेंदबाज ने भी चतुरता के साथ क्लेवर थिंकिंग के साथ इस गेंद को फेंकी फलस्वरूप संतोष का विकेट यहाँ पर गिर चुका है Well, Gopi, and at the same time, excluding that boundary, it's a better over. Just 7 runs which is came from that over, isn't it? That means it's a good over there from Ranjit. Nothing much wrong with that over because he's got a huge wicket of Santosh as well in that over. Ajmal is the new batsman in, and here is the first ball of the over number 5. The appeal for leg before wicket. Umpire saying this ball might be pitching a little bit outside the line of leg stump so that they are not interested. Of course, whenever the bowler bowling that to the left-hand batsman, of course, Rajesh is a left-hand batsman, so that looks like that ball pitching outside the line of leg stump for the left-hand batsman because it's going to be around the wicket for left-hand batsman whenever the right-hand bowler bowling in the over the wicket. Satish is the bowler is from the far end, bowling from the Rohan Corporation and 38 for the loss of 2 wicket. So here is again the bowler bowling from the So 39 for the loss of 2 wicket. One more dotted delivery. Now, oh, the opportunity of run out in the non-strikers end.
Ajmal. 3 balls bowled. Looks like Satish is doing a fantastic job here for Kadri cricketers here in this last fifth over. It's going to be a very, very good over so far for Kadri. Again from the far end. Again looking for the improvisation. Again the good line ball there by Satish. Absolutely good one. The kind of restriction which is required in this fifth over, and Satish is bowled so far a very good and tidy line. Now 40 for the loss of 2 wicket. Fifth over is in progress. Satish just definitely knows that any score 50 plus is going to be a good big score to chase down. So they wanted to get 1 or 2 good overs badly here for Kadri cricketers. Here is Satish again from the far end, from the Rohan Corporation end. Right arm over the wicket balls. Again, appeal for leg before wicket. Certainly, it's going to miss the leg stamp in this occasion because of his angling across in that occasion. One more delivery which is just missing the stamp. 41 for the loss of 2 wicket. And now Satish again bowling from the far end. And all we can see that in this particular over, the runs are coming in the form of extras, isn't it? Leg buys and even buys. And leg buys, in fact, all the runs we can see that in the form of buy. That means Satish is doing a great job, not really giving opportunity for the batter to freeze their arm. Satish bowling from the far end. Balls, oh, spectra wide. My goodness. Can you believe this? All the efforts which is gone in vain. Absolutely disaster. The disaster, isn't it, for KCR Kadri? What kind of wide that was. Absolutely uncatchable for the wicketkeeper and for the fielder. They gifted 5 runs and scoreboard jumps into 46 for the loss of 2 wickets. Satish and bowling from the far end, Rohan Corporation, and maybe he's looking for extra pace in that. By doing that, he's just lost his concentration over the line. Again, that ball beautifully balled, flicks that one off his leg, off his bat down to final region, looking for the second. But they're not going for the second rightly, so they got to run what they really wanted. Just look at that over. Absolutely, excluding that 5 runs, which is considered in the form of wides. Definitely, it's really... Now, umpire just showing the time that in the last over, KCR Kadri have to call 1 fielder inside the ring. That means outside the circle, only 4 fielders need to field outside the ring. 47 is a big score here for young friends Urwa. And any score in the last over will be the bonus. Any... .47 for the loss of 2 wicket. Last over is in remaining, and bowler Ranjit will go into ball that last over. So Ajmal, the experienced campaigner, being the captain of the side, and left-hand batsman is Rajesh is still hanging there in the middle and taking the responsibility of getting some acceleration of run rate. And Ranjit, of course, is bowled first over very well, and wait and see how he'll go into contribute in the last over. Now, KCR Kadri, really, they wanted to restrict the runs in the last over because any score around 50 plus is going to be a huge score. And against the teams like Young Friends Urwa. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ಉರ್ವ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಸುಧೀರ್ ಉರ್ವ. ಸೊ warm welcome Sudhir Urwa for this prestigious cricket tournament. So here is last over. Ranjit balls outside line stamp and going to be misfield by the fielder. They're going for the second, and it's a 3 valuable runs. 50 comes up here for Young Friends Urwa. 50 comes up here for Young Friends Urwa. That's only because of some extras really helping the team total. Now extras will go into play a big role here. So many extras which is conceded by KCR Kadri. Ranjit once again balls a wide. Wide plus 2. 3 runs conceded. 50 for the loss of 2 wicket. Ranjit again
This time, lofted. This is what I think it's going to be a maximum. Yes, it does. This is the Rajesh Hubar for you. After a long time, I'm seeing him performing. It's a natural batting display. He's been a cool and calm for a long time. When it's required some acceleration, and he's just coming down the track, hoisting it over, down to wide is long on boundary for a 6. 56 for the loss of 2 wicket. Ranjit looks like he's been under pressure. At one stage, they're really struggling to get the runs on the board. The first over is just 4 runs, but acceleration when it started through Arshad Bajal, then they're continuing. Again, nicely ball, good comeback. Chance of run out in the non-strikers and ball just missing the stumps. Everything is going wrong here for KCCR Kadri, but everything is went perfectly for young friend Urwa. The partnership of 20 runs in just 8 deliveries between Ajmal and Rajesh. But have a look at that Ajmal, who played only 2 deliveries so far and he scored 1 run. But most of the runs which came from the bat of Rajesh. 57 for the loss of 2 wicket. Ranjit once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket to the right-hand batsman Ajmal. Ajmal coming down the track now, once again, very interesting, very interesting. It's going to be deliberate padding, absolutely deliberate padding. Good thinking there by Ranjit, isn't it? Absolutely good thinking. Seeing that Ajmal using his feet, seeing that the batsman is using his feet and he's just following the batsman, ball to his legs, and batsman no way to make any stroke for that one. Deliberate padding, and umpire says no run conceded. So Ranjit again back to his bowling mark. Right arm over the wicket bounce. Radhesam, lovely shot, beautiful, imperious extra cover drive. They're looking for the second. In comes the throw, but it will going to be enough. Yes, it is enough to get the run out. Ajmal is back into pavilion. Good throw coming from the field in the deep extra cover. But I think they got the runs what they really wanted in the final hour. So good work there by the field in the deep. Have a look at the throw. You know exactly, Ajmal a little bit struggling to reach his home. And then I think wicketkeeper Mansoor completes the formalities. 58 for the loss of 3 wicket. Ajmal back into pavilion, and now Altaf Basavanagudi is just walking towards the middle. Of course, very interesting to see that there is 2 Altafs in this match. One Altaf which is playing for KCCR Kadri, most destructive, Altaf Walpadi, and now Altaf Basavanagudi, one more destructive batsman, and who is representing for young friend Urwa. So 58 for the loss of 3 wicket. Now Altaf Walpadi, who is standing in the slip cordon, may be thinking about his game plan when they're going to chase this huge run. I want to continue that same batting performance what I left in the previous match, and wait and see. 58 for the loss of 3 wicket. Ranjit back to his bowling mark. Last 2 deliveries remaining. Altaf Basavanagudi, one more big name as far as destructive batting is concerned. Ranjit bowls. And this time Basavanagudi looking for the big shot. This time I think Rajesh is keen to come back to the striker's end. That's why he asking Basavanagudi to please left your crease. I will deal with the last and final delivery of this innings. And he just went for the reverse sweep, missing it completely. And good thinking here by, yes, even Basavanagudi. After Rajesh is crossed in the striker's end, he just left the crease, rightly so that Rajesh Ubar came into bat. Now wait and see how he will going to take that last ball. The new batsman in is Prasad Shetik Karkala, one more very talented all-rounder for the side of young friend Urwa, who represented for Sri Devi cricketers for a long time, and now he is in non-strikers end. Last delivery of the innings of young friend Urwa. Rajesh is on strike. Rajesh went for the big shot. Good bowling. Chance of run out. Again Ranjit missing the stumps. Again Rajesh missing the stumps here, and they got the single here. So that's it. And total score is 59. And 60 will be the target, and I think young friend Urwa, their captain must be pretty happy with that total. Absolutely, he might be pretty happy with the total. 60 for the 60, which is the target for KCR Kadri, and
they wait and see how well KCCR Kadri will going to get this total. So now very interesting, and Gopi, 60, which is a target, and one of the most popular figure, 60. And for that 60, Gopi, what do you think? What kind of batting which is required for a team of KCCR Kadri? Just like we're mentioning about the 48, and against NM Cricketers Mangalore, KCCR Kadri, they managed to reach the target. But that match, Altaf Walpadi, who really opened the gate by hitting some massive sixes and boundaries and some explosive cricketing stroke. But in this match, Gopi, against young friends Urwa, will it going to be Altaf once again here to get some big role here, to get start here? What do you think about this match? Will it be possible for KCCR Kadri to win this match? जैसा कि सतीश आपने फरमाया अल्ताफ फॉल पड़ी, लेकिन एक और एडिशन हो चुका है। मंसूर इज नाउ बैक इन द स्क्वाड। और जहां तक सवाल है, मंसूर और अल्ताफ की जोड़ी यहां पर जमती है, खासकर 2 पावर प्ले ओवर का फायदा उठाती है, तो निस्संदेह यहां पर केसीसीआर कदरी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है, जैसा कि सतीश आपने फरमाया, 60 रनों का लक्ष्य और अल्ताफ वालपाड़ी की उपस्थिति यहां पर बेहद जरूरी है। और यहां पर देखना यह है कि अल्ताफ के साथ किसको इस वक्त आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर भेजा जाता है, मंसूर को भेजा जाता है या फिर मंजुनाथ आते हैं। तो यहां पर आ चुके हैं, मंसूर को भेजा गया है। तो मंसूर खासकर अल्ताफ की तरह ही पावर प्ले का फायदा उठाने में माहिर है। और मैं समझता हूं यहां पर इन दोनों की उपस्थिति अगर चंद ओवर तक रुकती है, खासकर 3 या 4 ओवर तक, तो निस्संदेह यहाँ पर केसीसीआर के लिए मौका है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। तो जहां तक सवाल है इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा का, तो पिछले मैच में जो बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन केएफसी कोडिकल के खिलाफ उन्होंने दिया था, तो उसी गेंदबाजी के बेहतरीन गेंदबाजी के प्रदर्शन को यहाँ पर उन्हें दोहराना है इस मैच में। लेकिन वहां पर केएफसी कोडिकल था, यहाँ पर केसीसीआर कदरी, और केएफसी कोडिकल की तरह ही यहाँ पर केसीसीआर कदरी की भी बल्लेबाजी सशक्त है। अगर केसीसीआर कदरी के बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर उन्हें दबाव डालना है, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर, पहले ही ओवर से उन्हें एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। और खासकर मंसूर और अल्ताफ वालपड़ी, जो कि दोनों आरंभिक बल्लेबाज हैं, इन्हें पावर प्ले में ज़्यादा रन से ना बनाने से उन्हें रोकना होगा। और देखते हैं अपने इस मकसद में वो किस हद तक यहाँ पर विजय किस मकसद अपने इस मकसद में किस हद तक वो यश प्राप्त करते हैं। तो सगीर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और इस वक्त अंपायर ने इशारा किया कि उनकी पारी की शुरुआत हो। अल्ताफ पिछले ओवर में, पिछले मैच में 18 रन उन्होंने बनाए थे। मुजीब के खिलाफ। तो यहाँ पर देखना यह है कि इस मैच में वो पिछले मैच की तरह एक विस्फोटक शुरुआत दे पाते हैं नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, और इस बीच गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, स्कोर रुक चुका है 0 पर। और फिर से एक बार सगीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, हाफ माइंडेड स्ट्रोक, और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर किस तरीके से इसके को लपका गया था, ऐसा कहना पड़ेगा, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था। और हाफ माइंडेड स्ट्रोक, देखिए यहां पर स्ट्रोक्स को रोक लिया था, गेंद तक पहुंचते पहुंचते गेंद हवा में उछली, काफी देर तक हवा में रही, और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर जो फील्डर थे उन्होंने इस कैच को, ओह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच, दैट वाज इन अ सर्टेन 6। और अंतिम क्षण में ऐसा कहना पड़ेगा, फील्डर जो थे रिफान, जो कि उन्होंने अंतिम क्षण में, अंतिम प्रयत्न में अपना हाथ अड़ाया, अपना बायां हाथ गेंद पर अड़ाया, और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद उनके हाथों में बैठ गई, जस्ट स्टिक इन द हैंड्स। और यहां पर इस बेहतरीन कैच की बदौलत यह विकेट अल्ताफ वालपाड़ी का गिर चुका है। और एब्सोल्युटली दैट वाज एन फैंटास्टिक कैच टेकन बाय रिफान, जस्ट इनसाइड द फेंस विद वन हैंड, जस्ट स्टंपिंग टू हिज टॉप साइड। एंड वरना निश्चित रूप से ये गेंद 6 रनों के लिए जा सकते हैं। तो अल्ताफ वालपाड़ी का विकेट यहां पर गिर चुका है पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में, और यह विकेट का पतन निस्संदेह केसीसीआर कदरे के लिए ड्रॉबैक साबित होगा। सतीश, absolutely Gopi, what could be a certain 6? If I have a look at that catch, Gopi, Rifan is the fielder. I think it's an outstanding catch. Have a look at it once again, Gopi. It looks like we're going to be a 6 because Rifan is a tall fielder, isn't it? He's a tall enough.
That's why he got that one, got that catch. And another fielder almost is catching him. Don't go out of the boundary line. It's going to be a 6. So that absolutely a very good catch, Gopi. And that's going to be a big drawback for KCCR Kadri. एग्जैक्टली सतीश, देखते हैं इस बार मंजुनाथ का शॉट एक्स्ट्रा कवर पर और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. केसीसीआर कदरी आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल. Consecutive wickets, consecutive deliveries, and this is an absolutely shackling start for them. First man to go was Altaf Walpadi, and then now Manjunath is caught by deep cover point fielder. He just played that one square of the wicket at the last moment, but the placement was too wrong, and because of that, he paid the penalty for that. सेकंड विकेट गॉन और 2 गेंदे 2 विकेट सतीश, और निस्संदेह यहां पर कहना पड़ेगा एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत केसीसीआर कदरी यहां पर कर चुका है. Absolutely, Gopi. The catching is so spectacular of young friends Urwa. One which is catch taken by the fielder in the Rifan, and now I think Prasad, everybody knows he's one of the best fielder in the outfield. And the way that he's covering that ground, unbelievable, Gopi. Because once it looks like the batsman Prasad hits that one down, correction, batsman Manjunath hits that one down to cover point region, it looks like it is going to be the safest area. But the fielder from deep extra cover, Prasad, he's got a lot of ground to cover that catch. And he got a very good running catch. Altogether, Gopi, it's absolutely shackling sack because 2 destructive batsmen, isn't it? One of the dangerous batsmen as far as the present cricket is concerned. They back into pivot in the first 2 deliveries. That means bowler is in a hat-trick. Sagir. एग्जैक्टली सतीश, हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज और अगली गेंद ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और हैट्रिक इस वक्त टल चुका है. लेकिन यहां पर गेंदबाजी बेहतर इस वक्त जारी है और 0 पर 2 विकेट यहां पर खो चुका है केसीसीआर कदरी. तो यंग फ्रेंड्स उर्वा इस वक्त कुछ हद तक उनका तख्ता भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त केसीसीआर कदरी के बल्लेबाजों के लिए. और इस वक्त शगीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशोक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद शगीर के लिए जस्ट फ्लिक दैट वन ऑफ द टोज क्लियरिंग द इनफील्ड. ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार वहां पर कोई फील्डर नहीं था स्टंप स्टैंड पर और मंसूर भी कुछ हद तक धीमे दौड़े थे, लेकिन आखिरकार अपना दूसरा रन प्राप्त करने में सफल. और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो शगीर इस वक्त एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और अशोक एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार. मंसूर ऑफ द स्ट्राइक अभी भी है और इस वक्त शगीर गेंदबाजी करने के दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशोक के लिए राइट आर्म अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ अराउंड द विकेट, ये गेंद इस वक्त इस बार टॉप एज मौका, विकेट नंबर 3 हो सकता है. अजमल गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल. 1 more wicket fallen. So wickets are falling like a pack of cards. और यहां पर कहना पड़ेगा ये विकेट काफी ऊंचा उछाला था, लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई और आखिरकार मिड विकेट के फील्डर अजमल ने कोई गलती नहीं की. तो 2 रन 3 विकेटें 4 गेंदों पर, 2 रन 3 विकेटें 6 गेंदों पर. तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और निस्संदेह जो बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी गेंदबाजी में यंग फ्रेंड्स उर्वा के, वो बेहतरीन शुरुआत यंग फ्रेंड्स उर्वा को शगीर दे चुके हैं सतीश इस पहले ओवर में. Exactly, Gopi. Just have a look at the batting department of KCCR Kadri, Gopi. It's an outstanding batting department, but having that much of the potential in the batting department, they feeling the pressure is that, Gopi, they're chasing a use total. When you're chasing a use total, Gopi, the batsman, they knows that if I am got out, someone is there to back up. That's a big problem, isn't it? All we can see that every batsman is got out because they're playing for some big shots. And that's why they lost the 3 wickets. Losing wickets means, Gopi, they're losing the deliveries as well, isn't it? That's a big problem for KCCR Kadri. That now I think nothing much wrong with that 3 wickets, Gopi. But wrong here is that they didn't got runs in that first over. And losing 3 wickets, Gopi, scoring 15 to 20 runs, it's a different story. But they lost 3 wickets. At the same time, they didn't got any runs. Only 2 runs. That means it's an outstanding start given by Shagir. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर एक बेहतरीन शुरुआत शागिर दे चुका है और यहाँ पर हर गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहता बल्लेबाजों ने और अपना विकेट खो बैठे हैं और 3 विकेट यहाँ पर खो चुके हैं. और लेकिन मौका जरूर है इस वक्त बाउंस बैक करने का. मंसूर इस वक्त मौजूद है. नए बल्लेबाज रवि पटयूर का आगमन हो चुका है जो कि एक आक्रामक बल्लेबाजी के रूप में जाने जाते हैं. तो यहाँ पर एक बेहतरीन साझेदारी निस्संदेह केसीसीआर की भटकी हुई गाड़ी को सही पटरी पर बैक ऑन ट्रैक इस वक्त ला सकती है. और इस बीच
अरशद गेंदबाजी शुरू करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट उनकी पारी की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंसूर इस वक्त सामना करते हुए पावर प्ले नंबर 2 इस वक्त शुरू होता हुआ। यह गेंद पहली गेंद मंसूर के लिए ऑफ स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर चूके और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर द्वारा 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। तो जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज का, तो रवि पडयूर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आ चुके हैं। पिछले मैच में उन्होंने दौरभाग्य के वजह तो रनआउट हो चुके थे 1 रन बनाने के बाद दूसरा रन चुराने के प्रयत्न में, और यहाँ पर इस वक्त अरशद की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। अरशद इस वक्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, और जहां तक का सवाल है केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। रवि इस वक्त सामना करते हुए अरशद की गेंदों का। बिल्कुल दर्शकों से खचाखच यह मैदान इस वक्त भर चुका है। एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ वाइड स्लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, और दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक का, तो मंसूर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अरशद की गेंदों का बाएं हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद मंसूर के लिए उछाला है गेंद को इस वक्त मिड ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ मंसूर की भी विकेट की पतन यहां पर हो चुकी है। तो मंसूर का भी विकेट यहां पर गिर चुका है, और अब इस विकेट के साथ ऐसा कहना पड़ेगा केसीसीआर कदरी की पारी की नैया इस वक्त बीच मझधार में जूझती नजर आती हुई। 4 रन 4 विकेटें और निस्संदेह ड्रीम स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा के। और मैदान से कुछ प्रेक्षक इस वक्त गुजरते दिखाई देते हुए, शायद वो प्रेक्षक इस मैच के नतीजे का अंदाजा अभी लगा चुके हैं। तो यहाँ पर देखना यह है कि किस तरह की कमबैक इस वक्त केसीसीआर कदरी करते हैं बचे हुए ओवर्स में। तो 4 चोटी के बल्लेबाज यहाँ पर पेविलियन पर लौट चुके हैं। अल्ताफ, वालपाड़ी, मंजुनाथ, अशोक और मंसूर। तो अब 6 विकेटें सुरक्षित, और मैं ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एक चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब केसीसीआर कदरी को इस मैच में वापस ला सकती है। स्वयं कप्तान इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। दिलीप इस वक्त आते हुए, इस वक्त बेहतर गेंद थी इस वक्त अरशद के ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को कट करना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 4 रन 4 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा इस बार निशाना एब्सोल्युटली एक्यूरेट नॉन स्ट्राइक रन पर, इज गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या जब स्टंप से बिखेरे गए थे तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या बल्ला हवे में था। देखना यह है कि तृतीय अंपायर इस वक्त क्या निर्धार देते हैं। तो निस्संदेह एब्सोल्युटली फिनिक्स की तरह इस वक्त उठ चुका है यंग फ्रेंड्स उर्वा। पिछले मैच में 33 रन जब उन्होंने बनाए थे, और इस बार नॉट आउट का इशारा हो चुका है, बच चुके हैं इस बार रवि पडयूर। और भाग्य उनका साथ देता हुआ, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, संतोष कहते हुए कि भैया आप इत्मीनान से रहिए, आप नॉट आउट हैं, आपका बल्ला लैंड हो चुका है क्रीज पर। तो यहाँ पर वो अपने स्थान पर लौटते हुए, और इस वक्त दिलीप जो कि सामना करने के लिए तैयार, और अरशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद दिलीप के लिए, इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना था, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई इस बार, ओह दैट वाज एन अ बैड मिस। इस बार सीधे अगर विकेट कीपर राजेश के हाथ में गेंद दे देते तो भी आसान सा रनआउट यहाँ पर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर विकेटों पर निशाना दागा और उनका निशाना चुकता हुआ बल्लेबाज दिलीप यहाँ पर सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। 2 ओवर को 4 रन 4 विकेट। अब 56 रन चाहिए, ओवर्स बाकी है 4, और रिक्वायर्ड रन रेट अब जा पहुंचा है ठीक 14 रन प्रति ओवर।
56 they have to score for victory in remaining 4 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 14 runs per over. Still they got 8 wickets kept intact. और ऐसा कहना पड़ेगा अब मैजिकल बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही, कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी ही, कुछ एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी ही इस मैच में अब केसीसीआर कदरी को वापस ला सकते हैं. लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और मौका जरूर है बाउंस बैक करने का, लेकिन बाउंस बैक करने के लिए इस वक्त केसीसीआर कदरी को बल्लेबाजी में कड़ी मेहनत मुशक्कत यहां पर करनी होगी. संतोष जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब अर्जित किया था, बेहतरीन बल्लेबाजी उनके पारी के अंतिम क्षणों में उन्होंने की थी और विकेट भी उन्होंने उखाड़े थे. और यहाँ पर उसी गेंदबाजी में उसी सफलता के सिलसिले को दोहराने की कोशिश में इस वक्त गेंदबाजी वो शुरू करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती है. पहली गेंद ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ केसीसीआर कदरी के बल्लेबाजों के ऊपर. और इस बीच ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, इस वक्त बेहतर गेंद थी संतोष की, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई. दर्शकों की तालियों की आवाज़ इस वक्त सुनाई देती हुई हर डाउन गेंद के साथ यंग फ्रेंड्स उर्वा के समर्थक इस वक्त अपनी टीम का खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए निस्संदेह यहाँ पर अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एक्स्ट्रा क्विक वन, मच स्ट्रेट लाइन, 3 डॉट बॉल्स इन ए रो and the pressure is now building up on the batsmen of KCCR Kadri. They need a magical batting at this situation to get back into this match. इस बार उछाला रवि पड़ैयूर ने 6 रनों के लिए. तो जैसा कि मैं फरमा चुका हूं, इसी तरीके की बल्लेबाजी ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है. ब्लाइंड स्ट्रोक इस वक्त उन्हें खेलने होंगे. रवि पड़ैयूर ने इस वक्त खेला था गेंद को, फुल टॉस गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए. 4 विकेट के नुकसान पर संतोष एक बार फिर से तैयार. दाहिना हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद बेहतर गेंद, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, धीमी लेग कटर गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार संतोष गेंदबाजी करते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. अगर उस छक्के के एक गेंद को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की है संतोष ने. 3 ओवर की समाप्ति, 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर बाकी, 50 रन चाहिए. द रिक्वायर्ड रेट इज नाउ एग्जैक्टली 6.34 रन पर ओवर. और सतीश यहाँ पर तख्ता काफी हद तक यंग फ्रेंड्स का भारी लगता हुआ. जहां तक विजय का सवाल है तो यहाँ पर विस्फोटक बल्लेबाजी अब कहना पड़ेगा केसीसीआर कदरी को इस मैच में वापस ला सकती है. Thank you, Gopi. And exactly, and some explosive batting badly required. But having Ravi Padayuru and captain and Dilip, and I think the match which is not yet over. And they got a potential of hitting a big shots. But even it's a difficult one, but not impossible. Sahil is the bowler, one who bowled brilliantly in the previous match. He starts with the brilliantly here also. First ball, outside line of off stump. Dilip missed it completely. Then wicketkeeper also missed it, and Arshad Bajal behind the stump fields the ball back to bowler. 17 balls and 50 runs which is required for KCCR Kadri. And here is Sahil. Right arm over the wicket to Dilip. Dilip this time 1+1, 2 more to the total. Extra runs, the bonus run here for KCCR Kadri. KCCR Kadri not really bothered about how the runs are coming for them, but they wanted a run badly. They wanted the runs badly, the more than 15 runs per over, the 16 to 17 runs per over, almost 17 runs per over is the required run rate, and they wanted to enjoy, they're definitely going to enjoy these extra deliveries and extra runs which is considered by the opposition, young friends Urwa. Sahil from the far end to Ravi going for the mighty stroke, and he didn't got enough bat onto that. One of his favorite shot, of course everybody remembered, it's the 1-6 when he played in the semi-final in Underarm Memorial Trophy, when he's single-handedly has taken his team into the victory in the semi-final. That's the same condition here for KCCR Kadri, and for that Ravi Salian have to talk with this bat, and it's a big ask but not impossible. Sahil from the far end. Right arm over the wicket, balls to Ravi. Ravi slashes that one. The opportunity here for Ajmal. He's one of the best fielder. He's one of the best fielder in that extra coverage and running back and taking a wonderful catch. Ravi Padayur, we are talking about the only hope of winning this match here for the team. And he's back into pavilion.
But in the replay, you are not watching that. It is a 6 in the previous over. That might be without the over of Santosh. But you need to retake that one. The catch which is taken there by Ajmal. Outstanding catch. Running from the edge of the circle towards the back and taking that one fantastically when the ball is going away from the fielder. This is one of the best fielding performance by young friend Urwa. All we can see that all catches, which is outstanding catches taken by young friend Urwa. The Rifan is the one who really started for the downfall of KCCR Kadri when he got the catch. And then afterwards, Prasad who took one more good catch. Then Ajmal taken a wonderful catch. 12 for the loss of 5 wicket. This time he's gone. Leg before wicket. Flum in front of wickets. Ranjit departs. Ranjit departs and wicket number 6 which is back into pavilion. It's 12 for the loss of 6 wicket. This is a perfect example of young friends Urwa, how danger they are. If you give one chances for the teams like young friends Urwa, they will never going to give up this chance. Just grabbing the opportunity. Of course, no one thinking about. Even everybody knows the young friends Urwa, what they did in the last the many years. They dominating in underarm cricket. But in this season also, you were not having that much of potential in their playing 11. But once again showing that they still are enough to win some big titles. Absolutely outstanding performance here from young friends Urwa in this prestigious United Trophy. Again, nicely done ball, just rocketing towards the fence. Down to deep backward square leg boundary for 4 runs. The magnificent struck there from the new batsman. Aman, everybody knows that he is one of the best fielder, Aman Osangadi. But he can bat as well. The way that he hit the ball, just a little bit shuffled across the line. Just look at that one. He was almost standing in the 4th and 5th stump. Again, one more wicket is back into pavilion. Sahil depression. Aman departs. And it looks like it's all over. 16 for the loss of 6 wickets. 16 for the loss of 6 wickets. Now looks like KCCR Kadri are very difficult to bounce back. And young friends Urwa are looking in a top. Young friends Urwa are looking in a top. And Santosh will go into ball the second over. What a fantastic leader he has been. It's not so easy, isn't it? When everything is, everyone is left the team. But someone like Santosh need to lead the team. And is lead the team with some new faces. And rebuilding the team is not so easy. And Santosh is the one. Now Ajmal once again helping the young friends Urwa to rebuild their team. And looks like young friends Urwa once again they will go into bounce back after this victory. Beautifully balled. Ekataranga in there from Santosh is the master of doing that. The previous match he's won the man of the match award because in a very important time he got some runs for his team and he got a wicket as well. Santosh balls again looking for the drive and one more single. But I think altogether losing and winning is part of the cricket. But for KCCR Kadri, I think Dilip is the one. Might be the unlucky, the captain who really performed very well throughout the tournament, but not really able to take his team into the finals. This time lofted at one, fielder is in underneath it and he takes a catch. One more wicket is back into pavilion, one more wicket into the account of Santosh. 17 for the loss of 8 wicket. The Bashir Shanti Angadi announced ₹1,000 for the catch. For the catch which is taken by Rifan. That a catch of Altaf which has really changed the match. And
Also, 1,000 rupees for Rajesh Ubar for his outstanding innings. And 1,000 rupees for Sahil, and which is announced by Sharif Bantwal. This time umpire says it's not out. The big smile in the face. I don't know what Santosh, whether he's appealing or asking for the hat. I don't know. But whatever it is, what umpire says not out. But a little bit of a funny exchange of smiles. And 17 for the loss of 8 wickets. Over number 5 gone. Last over remaining. 43 runs required for KCCR Kadri to win the match. So 1,000 rupees for Sahil, 1,000 rupees for Rajesh Ubar. The Sharif announced 1,000 rupees for Sahil. Rajesh Ubar will going to get 1,000 rupees from Bashir. Santosh will going to bowl the last over. Santosh Bantwal. This time again, nicely driven, but ball went straight to the hands of the fielder. One more wicket is back into pavilion. Dhanush, the very young talented bowler, is tried to hit the ball, but didn't got enough power behind the stroke, and he got out. One more wicket is back into pavilion. It's 18 for the loss of 9 wicket. Now KCCR Kadri. Looks like there's just a 4 minutes left in this game. Of course, they're going to lose this match, but they won the heart of cricket lovers. That's for sure. The way they performed against against Torpedoes Khana and against NM Cricketers Mangalore, outstanding performance from KCCR Kadri, no doubt at all. But in the semi-final, I think young friends Urwa looking more better than KCCR Kadri. Appeal for leg before it is gone. That's it. Bundle out. KCCR Kadri has bundled out for 18 runs and a comprehensive victory. 41 runs victory for team Young Friends Urwa, and they qualify for the finals of the prestigious United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai Manglore. Congratulations, Young Friends Urwa. Once again, they're proving that they're the hunter in UCG cricket ground, and they're unstoppable. So congratulations. And thank you very much, each and everyone. Congratulations and hard luck, KCCR Kadri. Really played a good game of cricket, but not enough in front of Young Friends Urwa. And now it's a big final, and mega final will be played between Durga Konchadi versus Young Friends Urwa for the big title United Trophy 2023. And we'll take a short break here, and time for the announcement of the man of the match as well. Thank you. So one more announcement, 500 rupees once again from President of Young Friends Urwa, Rohan, announcing 500 rupees for Rifwan. Rifwan who taken a wonderful catch, will going to get extra 500 rupees. Sharif already announced the 500 rupees. And Bashir Bantwal announced the 500 rupees for Rajesh Ubar. Ali Kadri cricketers naik dayamadi ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ
ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. So thank you very much KCR Kadri for your representation. Thank you very much. You played a very good game of cricket. Of course, the winning and losing is a part of cricket, but you played a very good game of cricket. Thank you. So man of the match which is goes to Arshad of Young Friends Urwa. Arshad Bajal. May I request Arshad Bajal, please go and collect your man of the match award. And along with that, I request Sahil, Rifwan, Rajesh Kumar, please collect your cash prize in our main stage. ದಯಮಾಡಿ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸಾಹಿಲ್, ರಿಫಾನ್, ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ. So now it is going to be a presentation of Man of the Match award for very destructive Arshad Bajal for his all-round performance. Scored valuable runs. Scored valuable 13 runs and bowled brilliantly. Picked a wicket for his team. 1 over 1 run and 1 wicket, and deserved the Man of the Match award. Thank you.
request captain of Durga Konchadi, please report here. Durga Konchadi ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So welcome back for the mega final of this prestigious United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Mangalore. I request those who are not signed yet to please sign the official chart as soon as possible. Rajesh Ubar of Young Friends Urwa, I think the sign which is pending. And I request all the players of Durga Konchadi, kindly request you to sign the official chart as soon as possible. Thank you.
Welcome back once again for the prestigious United Trophy 2023. And at last, two teams which is qualified for the mega final of this prestigious United Trophy, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Manglore. And two teams which is qualified for the mega final in the local pool. Team Durga Konchadi, they qualify for the big final. Big hand for Durga Konchadi. So fantastic performance in the local pool, and they qualify for the mega final of this prestigious cricket tournament with some outstanding performance in the yesterday and in the semi-final as well. And now in the Mangalore pool, in the seeded teams, 6 teams which is participated at last, Young Friends Urwa qualify for the mega final. Big hand for Young Friends Urwa. Once again showing that the UCG cricket ground, one of the luckiest ground for Young Friends Urwa, and they are showing their once again the potential, and they got a place in the mega final of this prestigious cricket tournament. Meanwhile, the umpires are walking towards the middle. The big hand for the 3 umpires did a great job for the success of cricket tournament. Umpire Roland Pinto sir, umpire Arish Padil and Vivek did a great job, and yesterday Mohan Ayadi did a great job for the success of this cricket tournament. Altogether one of the best tournament, the very systematically organized. Big end for the organizers, Real Estate Group registered Bejai for that outstanding cricket tournament. The cricket lovers will going to remember this tournament for a long time for their outstanding effort for making this possible. Fantastic and successful cricket tournament. Meanwhile, before we are going to the tossing ceremony, idiga ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಲಾಗುವುದು. ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. Thank you very much. Afterwards, now is the time for the tossing ceremonies. May I request the 2 teams captain please come forward. The captain of Durga Konchadi, please come forward. Umesh is the captain of Durga Konchadi and captain of Young Friends Urwa, Arshad Bajal. And all the best Arshad Bajal and all the best Umesh for the big final, the mega final of this prestigious cricket tournament. Naveen will go into toss the coin of the mega final. So Arshad Bajal will go toss the coin. The call. Sorry, no one heard that what call Umesh is did. Once again, retoss. The call from Umesh. Head is the call. Here is a toss. Yes, it's a tail. And Arshad, please come here. Arshad, toss winner. Fielding. Fielding. Fielding.
ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರು ಎನ್ನದಿತ್ತದ ಐತ ಈ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ 6 ಟೀಮ್ಸ್ ಟಾಪ್ 6 ಟೀಮ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಂದಿಜ್ಜಂದು ಅವು ಕಟ್ಟದ ಎದುರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಸಂತುಲ ಸಗಿರಿ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಮಾತ ಬೌಲಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತದೇರು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಆ ರೇಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗಾರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜಿಪವೇರು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಾರು ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅಕುಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉರುವಾಡು ಫೈನಲ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರು ತೂತಾರೆ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏತ್ ರನ್ನಡ್ ಇರು ಉಂತವಾಡು ಬಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲು 30 ರನ್ ಉಂಟವ್ರು ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯವಂಡ ಎಡ್ಡ ಬೌಲಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಸಂತು ಮೂಜಿ 6 ಹಾಕ್ದೇರು ಸಾಯಿ ಸಂತು ಸರಿ ಅದು ಅವಾಗ ಇರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂಡರ್ ಇರು ಅರೇಂಜ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕುಡೊಂಜನ ಉಂಟಲ್ಪ ಕೂಡ 2 6 ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಜಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಏಪಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲವೇನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರತ್ತೊಂಡು ಆ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸೊ ಪ್ಲೇ ವೆಲ್ and play with the true spirit of game. All the best. Arshad Bajal, big hand for Arshad Bajal. Won the toss, selected to field first. Umishana, Olar, captain. Bale, bale. Yes, Butter, bale. Raghavendra Butter, like cricketer, Raghavendra Butter, incha on the Dabanda, Durga Konchadi. ಇಯರ್ಲಿ ಏನದಿತ್ತು ಜೇರ್ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ತೂನಾಗ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ಏನದಿತ್ತಾರ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪರಂಡ ಇಡೀ ಫೈನಲ್ ಬರೋದಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ನೆಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉರುವಾಡು ಫೈನಲ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮುಲು ಗೊಬ್ಬೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆದಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲ ಪಂದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾನಿರ್ದವರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗೆಲುವು ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹಾಡು ಅಂಚಾನಿರ್ದವರ ನಿಖಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲು ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಸುರು ಕಾದಿಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರಂಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಲ್ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ನ 30 ರನ್ ಗುಂತ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಏತ್ ರನ್ ಪಾಡೋದು ಬಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಟೀಮ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಕುಲು ಬಂದೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆನ ಟೀಮ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ನೋಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಲಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ರಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಅಕ್ಲೆನ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಜಾನೇರ್ದ ಅವರ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲೆನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಜಯ್ ಆಪುನು ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರ ಅಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನು Absolutely, fantastic word. Like may the best team to win. Nikul effort padur, akul effort padur. Winning and losing is a part of cricket. All the best, Raghav. Dala pandretne. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಆಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಮಾತು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈ ಪಂದ್ಯನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಲಕ ಶ್ರಮಿಸಿದೇರು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೈಪುನಾಗ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನವೀನ್ ಪಂಡದು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ದಾಕುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಆತು ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಎಂಗುಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಆತು ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲು ಎನ್ನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡೆಂದು ಅಂಡ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತಂಡಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂದ್ಯಾಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದೇರು ನನ್ನ ಮಿತ್ಲ ಹಾಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದಿಯಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಕೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರಾಘವಣ್ಣ ಇರ್ನ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ವರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎಂಗ್ಲು ತೂಯಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಪೂರ ತಂಡದಾಕಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದ್ಯರು ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಾಕಲು ಬಂದಿರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಇವನ್ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟರ್ ಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಲ್ ಮದುವೆಗೆ ಐಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದು ಮೂಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅರ್ಷದ್ ಬಜಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಾನ್ ಏಮ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾವ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಸೊ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023.
So that's it. Thank you very much, each and everyone. Now the introduction of the players of Young Friends Urwa. All the best to both the teams, Durga Konchadi as well as team Young Friends Urwa. This is a very good competition. I'm sure that this match will going to be one more fantastic match because both the teams has got some good players in the side. You cannot underestimate the players of Young Friends Urwa as well as Durga Konchadi. So thank you very much. And all the best for umpire Arish Patel, done a great job for the success of this cricket tournament. And Vivek, as well as umpire Roland Pinto, sir. And Gopi just straight away coming at the big final, mega final, Durga Kunchadi. And from the local pool, they really brilliantly played, isn't it? Yesterday's match, we are witnessing some extraordinary batting, bowling performance by all the players of Durga Kunchadi. At the same time, Young Friends Urwa, maybe in this particular tournament, maybe they're against 6 teams, and it never looks like they're going to win the match. But the way they batted and bounced back in this particular tournament, it looks like it's outstanding. And what do you think of Young Friends Urwa versus Durga Konchadi? Durga Konchadi lost the toss, and captain of Young Friends Urwa, Ashut Bujal, elected to field first. What do you think? What kind of competition you are expecting from these two teams? जैसा कि सतीश कहना चाहिए, इस वक्त एक बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा मेगा फाइनल मैच में, इसकी हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं। और जहां तक दोनों संतुलित टीम है, बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुकी है। दुर्गा कुंचाड़ी लोकल पूल में बेहतरीन प्रयत्न और यंग फ्रेंड्स उर्वा, खासकर केएफसी क्रोनिकल के खिलाफ उन्होंने जीत दर्ज की, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री बिकॉज ऑफ दैट बेस्ट परफॉर्मेंस। और उसकी बदौलत अगली मैच में उनका सहज रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया केएफसी कोडिकल के खिलाफ जीत के साथ। तो बेहतरीन प्रयत्न देते हुए केसीसीआर कदरी को उन्होंने हराया। और मेगा फाइनल मैच दुर्गा कुंचाड़ी और यंग फ्रेंड्स उर्वा दोनों संतुलित टीमें हैं, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जहां तक विजय के संभावना का सवाल है, मैं कहूंगा इट्स गोइंग टू बी 50-50। हालांकि मैच अगर जल्दी भी समाप्त हो जाए तो भी हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि क्रिकेट का हर पहलू हमें इस यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के मेगा फाइनल में देखने को मिलेगा। Well, Gopi, absolutely right, because in cricket you cannot underestimate any teams, because Durga Konchadi, where they performed, I think Young Friends, Shashwat Badal just mentioned about that they're also got some good players in the side. We cannot underestimate the team Durga Konchadi. So that expectation is very high here from both the teams. The spectators, they definitely wanted these two teams will go into fought hard for the big title United Trophy 2023, and we are straight away going into the commentary box for the final match. Right, the final match, grand finale of United Trophy 2023 is now going to start, with proudly organized by Real Estate Group registered Bangalore, Bejai Manglore. To help the poor children's education, they are organizing this tournament. And
good concept from the organizers of United Trophy 2023. And now we are just waiting for the first ball of the grand finale match. 6 overs per side to be played. And news is here from the center that the captain of Young Friends Urwa, after won the toss, he elected to field first. And because of that, the openers of Durga Konchari at the crease, Sachin and Shashi and Shagir start the fresh proceedings from the commentator box. And the first ball of the mega final match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाईं हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंची, यहाँ पर रन आउट का खतरा जरूर, लेकिन यहाँ पर वाइड थ्रो, और इस वजह से बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। शाम के 5:15 यहाँ पर बच चुके हैं और फाइनल मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। एब्सोल्युटली जाम पैक स्टेडियम, दर्शकों से खचाखच ये मैदान इस वक्त भर चुका है। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त दो प्रतिष्ठित टीमें, लोकल पूल और मैंगलोर पूल के दो प्रतिष्ठित टीमें इस वक्त भिड़ रही है इस मेगा फाइनल मैच में। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो सगीर ये गेंद टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे अरशद, और जब तक गेंद को यहाँ पर फील्ड किया जाता है शॉर्ट लेग फील्डर द्वारा, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। तो दो गेंदें 2 रन इस वक्त प्रदान कर चुके सगीर। और जहाँ तक का सवाल है अगली गेंद का, तो इस वक्त तो गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 40 के आंकड़े को यहाँ पर पार करना होगा दुर्गा क्रिकेटर्स कोंचाड़ी को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना और सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप जो है यंग फ्रेंड्स हुआ उसके ऊपर दबाव डालना है। तो ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक्स्ट्रा फिगर गेंद कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं इस वक्त बेद्रा मीडिया द्वारा, जो इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर। दाईं हाथों पर विकेट, ये गेंद उछालना चाहा, इस वक्त गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस एक रन के साथ कुल स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। एंड इस बार सामना करने के लिए तैयार शशि और सगीर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद इस मैदान पर। यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। एंड गुड पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर Shagir in this over, conceded just 4 runs in this first 5 deliveries. This बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पैर पर टकराई, अपील को नकार दिया। Certainly the ball going down the leg side. ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 4 without loss after first over scored by Durga Konchari after being won the toss, after being losing the toss and put it back by Young Friends Urwa in the grand finale of United Trophy 2023। और जहां तक सवाल है बचे हुए ओवर्स का, तो 5 ओवर का खेल यहाँ पर बाकी है और देखते ये है कि इन बचे हुए 5 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो दोनों टीमें संतुलित और पिछले मैचेस में बेहतरीन प्रदर्शन देने के बाद ये दोनों टीमें इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुकी हैं। और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस मेगा फाइनल मैच के अंतर्गत। दूसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से शुरू होता हुआ हर्षद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, शशि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। रोहन कॉर्पोरेशन एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाज अरशद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, मत स्ट्रेटर लाइन, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद, और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर शुरुआत डॉट गेंद के जरिए इस ओवर में अरशद यहाँ पर कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाईं हाथ बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को स्वयं गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक धीमा शुरुआत यहाँ पर कर चुका है दुर्गा कोंचाड़ी और अरशद अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से निकली, मिसफील्ड यहाँ पर, और गेंद जाते हुए यहाँ पर थर्ड मैन पर, वहां पर शशि फिसल गए थे। पहला रन पूर्ण करके दूसरे रन के लिए जैसे ही वो दौड़ रहे थे वो फिसल गए वहां पर, और शायद वहां पर दूसरा रन मिल सकता था, लेकिन वहां पर शशि के फिसल जाने की वजह से बल्लेबाज को आखिरकार एक ही रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और अरशद एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सचिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड।
और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, और फिर से एक बार यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर गेंद निकल रही थी और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और इस बीच अरशद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेला, कवर पॉइंट पर रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन नहीं मिलेगा और विकेट भी उनका यहां पर गिर चुका है। He just ran with that stroke, लेकिन गेंद सीधे पहुंचे थे कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। गेंद को इस वक्त खेला था कवर पॉइंट पर, फील्डर के हाथों में गेंद, और फील्डर ने तुरंत गेंद को लौटाई विकेट कीपर के हाथों में, और बल्लेबाज सचिन को क्रीज पर वापस लौटने का कोई मौका नहीं, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस, और अपना पहला विकेट यहां पर दुर्गा कुंचाड़ी यहां पर खो चुका है। तो जैसा कि हमने पहले कई बार फरमाया है, जैसा कि हमने पहले कई बार फरमाया है, रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर्ड बेजाई मैंगलोर द्वारा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर किया गया है। सुंदर से विशाल से यूसीजी मैदान पर यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत आज इस श्रृंखला का दूसरे दिन का अंतिम मैच यानी ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस टूर्नामेंट इस वक्त प्रगति पर, और इस वक्त मुकाबला जारी है दुर्गा कुंचाड़ी और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच में। इस फाइनल मैच में संतोष नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, अरशद की गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद है, धीमे ऑफ कटर गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति, एक और बेहतर ओवर की समाप्ति। इस ओवर में सिर्फ 2 रन यहाँ पर अरशद ने प्रदान किए। 2 runs just conceded by Arshad. First over, Shakir conceded 4 runs and after 2 overs it's 6 for the loss of 1 wicket. एक धीमी शुरुआत सतीश यहाँ पर कर चुका दुर्गा कुंचाड़ी, और मैं कहूँगा पहले 2 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है अब तक यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाजों ने। फलस्वरूप इस वक्त रनों के लिए संघर्ष करते हुए दुर्गा कुंचाड़ी के बल्लेबाज। Well, exactly, Gopi. It's a slow start and quite understandable after losing a wicket. Of course, they lost a wicket, the first wicket in the previous over, the second over, and that only because of the good bowling performance. Shagir, of course, is just grabbing the opportunity to represent for young friends Urwa, and he really bowled well throughout the tournament. And second over, which is bowled by Arshad, is much better than the first over. Altogether, Gopi, it's a very good start from the bowling, a very good toss to win very good toss to win in the final, and bowlers really justifying that the decision of the captain. But I think, Gopi, now onwards, I think the batsmen of Durga, they need to change a little bit gear here. Need to get some at least 35 to 40 runs, which is badly required because this is a big mega final, and at the same time they're playing against one of the top team, young friends Urwa. Exactly, सतीश, यहाँ पर कुछ हद तक गियर को बदलना होगा और टीम की गति में बढ़ोतरी, टीम की रन की गति में बढ़ोतरी लानी होगी, रन रेट को एक्सेलरेट इस वक्त करना होगा। और यहाँ पर ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूके और वहाँ पर गिर गए, घुटनों के बल बैठ गए, लेकिन गेंद को कनेक्ट करने में सफल संतोष इस वक्त ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार, दिस इज अ मैसिव वन, इट्स गॉन मेनी माइल्स, इट्स अ ह्यूज वन, इट्स अ बिग ए। शशि के बल्ले से ये छक्का इस वक्त लग चुका है, इसे देखना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से he just picked that one right from the spot and lofted that one in a style over the fence for a huge one. छक्का इस वक्त लग चुका है शशि के बल्ले से। अगली गेंद, और जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया था, रन की गति में बढ़ावा इस वक्त देना होगा, और यहाँ पर शशि इस वक्त जानते हैं इस वक्त उन्हें रन्स बनाने, करारे प्रहार करने होंगे अगर रन्स बनाने हैं तो इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ डिस्पैच करने में सफल। लॉन्ग ऑन से मारेगा जवाब छक्के के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक। और इस बीच संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शशि गेंद ऑप्शन से बाहर, गेंद को कट करना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े तो, लेकिन गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट पॉइंट पर संतोष के हाथों में, और इस बीच बल्लेबाज को रन यहां पर नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, यह गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन किया, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, और गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। हालांकि अरशद पहले आस छोड़ चुके थे, बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए, लेकिन जब तक वो दौड़े गेंद तक पहुंचे, गेंद उनको वंचित करते हुए सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी थी 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ इस वक्त स्कोर
बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन एक विकेट के नुकसान पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स हाफ द वे मार्क और 3 ओवर के बाद 3 ओवर का खेल अभी बाकी। और सतीश जहां तक सवाल है ये ओवर बेहतर रहा, इस ओवर में 11 रन बने और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा दुर्गा कुंचाड़ी कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए 3 ओवर का, तो 3 ओवर में कम से कम 25 से 30 रन अगर दुर्गा कुंचाड़ी के बल्लेबाज बटोरते तो चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा कर सकते हैं। Exactly, Gopi. Just like I mentioned, they need to change the gear. Of course, Shashi is started to change the gear, especially in the previous over, Gopi. And one of the biggest six, Gopi. It is one of the biggest six, I want to say, which is came from the Shashi. It went long way, many a miles out of the park. And that will going to give a lot of confidence for Shashi to get some acceleration in the remaining overs. Altogether, 17 runs in 17 runs for the loss of 1 wicket and 3 overs completed. Now 3 overs remaining in their innings, and wait and see how well they will going to get some acceleration. So from the far end, looks like the bowling change. The bowler Sahil is a young man, has got a very good tournament in this particular tournament. He's bowled very well throughout the tournament, and now once again he starts well with the dotted delivery. Outside the nerve of stump, Santosh wanted to steer that one, but ball went straight to the hands of captain Arshad Bajal, and there is no chance at all for any run. Again from the far end, Sahil, right above the wicket. Santosh again looking for the drive, but missing it completely. Santosh need to be very careful, seeing that Shashi is there in the other end, because he is the one who got some acceleration. He got a good touch in the previous over itself. His intention is very clear that he wants to get some acceleration. Here is again Santosh going for the mighty stroke. One more dotted delivery. One more dotted delivery there from Santosh. Of course, Santosh is the one who is responsible for the victory in the previous match, because in the last over he got some big shots. But here is the final, and wait and see how Santosh will go into contribute. But a very good start there from Sahil. This time against the line, hitting the ball straight to the hands of fielder. Chance of run out, and looks like he's out of the crease. This is the result of frustration, isn't it? After playing back-to-back 3 dotted deliveries, he wanted to hit the ball, but didn't got the placement right. Shashi, rightly so, he's not interested, and there's no chance at all for any run. And fielder Santosh, making no mistake at all, quickly returns the ball to the hands of wicketkeeper, and wicketkeeper Rajesh making no mistake at all. 17 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. And what a fantastic tournament. Just like we have mentioned earlier, one of the best tournament we have witnessed in the UCG cricket ground in the name of United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, with the motive of raising the fund for the students who were financially backward. And that, I think, is a good concept from all the organizing committee of this cricket tournament, having such a good motive behind this tournament. And we are in the mega final of this prestigious cricket tournament, and wait and see which team will go into lift this prestigious title. New batsman in is Ajay. Ajay is the one, I think, as far as danger batsman is concerned. Young friend Urwa absolutely knows what kind of batsman Ajay is. So he want wait and see how Ajay will going to give little bit correction. Wait and see how well Ajay will go into bat in the big final. There's one more good delivery there from Sahil. Quite a difficult face dive by Ajay to face the ball, because that ball is nipped back into the batsman sharply, and he managed to get the single down to short mid-wicket division. With that single, score moves on to 18 on the board for the loss of 2 wickets. Sahil from the far end looking for the reverse sweep, but ball just going down the leg stump. Appeal for leg before wicket. Umpire says it's from the bat. One more good over completed by Sahil. Outstanding over. It's outstanding over. I think it's just a couple of runs which just came from that over. It's a 19 for the loss of 2 wickets. And I think, Gopi, for young friends Urwa, the Sahil might be the future bowler, because the way that is bowled so far, I think Sahil in this tournament he is represented for Gori Young Boys, and he is not represented for Gori Young Boys for some reason, so that it going to become a bonus for young friends Urwa having Sahil in their bowling department. I really has produced a fantastic over for the success of young friends Urwa. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर साहिल ने इस श्रृंखला में इस टूर्नामेंट में यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की है, और खासकर केएफसी कोडिकल के खिलाफ जो अंतिम ओवर उन्होंने फेंका था काबिल तारीफ थी, और निस्संदेह भविष्य में एक बेहतर गेंदबाज के रूप में वो
उभरने की इस वक्त पूरी तैयारी में। और जहां तक सवाल है, हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि उनका भविष्य अंडरआर्म क्रिकेट में उज्जवल हो, चाहे वो यंग फ्रेंड्स उर्वा का प्रतिनिधित्व करें, चाहे गोरी यंग बॉयज का, लेकिन परिपूर्ण खिलाड़ी के रूप में वो भविष्य में उभरे, यही हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Exactly, Gopi. So Santosh brought in attack and ball is in there. Prasad taken a wonderful catch. This is a Prasad for you. Every time when there is a tough catch, but Prasad definitely is going to make it very easy because of his early movement. You know exactly Sahil is going for the reverse sweep and he just kept the eye on the ball. It's not so easy to run front and take the catch when ball is going to drop in front of the fielder. But fielder did a great job having a fantastic run in front and completes the catch, and danger man Shashi is back into pavilion. It's 19 for the loss of 3 wicket. Durga Konchadi against young friends Urwa. Once again, Santosh is leading from the front. What a fantastic performer he's been. Outstanding. He's playing for the last 2 decades for young friends Urwa, and he's once again in this particular day also is one of the match winner for young friends Urwa. Again, is a bit of wicket taking every time he's coming to bat, coming to ball. He's got a habit of picking up a wicket. Now, captain of the side, Umesh, came into bat. Santosh bowled him, cleaned him up. Beauty of the delivery, leg cutter from Santosh. Umesh departs. Umesh, the captain of Durga Konchadi, departs with a beauty of delivery from Santosh. Pitching in a line, little bit outside the leg stump, little bit deviation. And the batsman going for the stroke against the turn and misses the line. And the ball hits the stump. So 19 for the loss of 4 wicket. That means Santosh is on hat-trick. So Santosh he's got a lot of wickets so far in this tournament. Of course, one of his favorite ground. I'm watching him performing in any tournament. He won the last week, that Cricket Utsav, which comes to an end. In that particular tournament also, Santosh becomes the match winner in every matches when it's going to be out of the hands. He's the one who once again brought match into the favor of his team. This time, what a shot! That will going to be a maximum. This is a glorious shot. Amit is a batsman picking that line and length so quickly. Have a look at that one. Leg cutter, but not that much of turn. And batsman Amit hoisting it over. Fantastic timing and even better power behind the shot to get the distance down to deep backward square leg for a 6. That 6, the 2 sixes already. 2 sixes already in the innings of Durga Konchadi. One which came from the bat of Shashi and one which came from the bat of Amit. But both the 6 which came from the bowling of Santosh. So that means Santosh sometime be expensive, but he is a wicket-taking bowler as well. That's one problem that for Santosh. Sometime he bowls a loose delivery, and the batsman sometime getting some advantage of that one. But even is bowling some wicket-taking delivery as well. The hat-trick delivery bowled by Santosh, but Amit dispatches that one down to deep backward square leg for a huge 6. Now it's a 25 for the loss of 4 wicket. Looks like the ball which went out of the park, maybe ball contact with the water. So wetness which is one umpire wanted to remove from the ball. And after that he's just, I think Santosh is back to his bowling mark. Right arm over the wicket, balls again looking for the same shot. This time bowler Santosh knows that he's just learning from the mistake not to bowl that short pitch delivery, not to bowl that line which is outside the line of leg stump. Little bit inside as he bowls leg cutter and one more dotted delivery. It's 25 for the loss of 4 wicket in the over number 5 is in progress. Fantastic crowd. It's absolutely jam-packed stadium out here in this most beautiful UCG cricket ground, witnessing this prestigious United Trophy 2023. Santosh, ball stoppage, opportunity for the keeper, and it's absolutely, you can't judge, it's absolutely, you can't question the quickness of the wicket keeper. And Rajesh Hubar running towards his left in fact, and taken a very good running catch, and 3 wickets in that over for Santosh. Even he conceded 1 6, but he picked up 3 valuable wickets. So 4 overs completed after completion of 5, little bit correction.
One ball remaining in this over. The fifth over is in progress. It's 25 for the loss of 5 wickets. So new batsman in, slowly walking towards the middle with the jersey number 007, Praneeth. One more talented young player for the side of Durga Konchadi. Just like earlier in the tossing ceremony, Raghavendra Bhatt has mentioned that it's going to be a proud moment for all of Durga Konchadi to get the place in the big final. Here is going to be one more chance here for the fielder. And he picked up a 4th wicket. 4 wicket for Santosh in the mega final. Have a look at that one. Just like I mentioned, sometimes he bowls a loose ball, but nothing much bother about the loose ball because he's got a potential of bouncing back every time when he's finished. And he got one more wicket. 25 for the loss of 5 wicket, 6 wicket, and last over remaining, Gopi. And Gopi is just coming back to Santosh. We are watching him in the last 10 to 15 years. As far as his performance is concerned, Gopi, the consistency what we are observing for Santosh is that he's a wicket-taking bowler. And every time when his team is wanted some restriction, whenever the time his team is wanted some wicket-taking overs, he's the one leading from the front. Once again, 4-wicket hold for Santosh. He's been outstanding in the big final. बिल्कुल सतीश, यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए एक अरसे से संतोष प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं और जब कभी भी यंग फ्रेंड्स उर्वा को ज़रूरत पड़ती है उनकी, वो हमेशा उनके सहायता में रहते हैं और पिछले कई वर्षों में हमने कई उदाहरण देखे जहां पर संतोष ने अपनी टीम को अपने गेंदबाजी के जरिए जिताया और यहां पर भी एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए इस फाइनल मैच में 4 विकेटें वो प्राप्त कर चुका है। निस्संदेह परिपूर्ण खिलाड़ी के रूप में इस वक्त वो उभरते हुए यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए। Absolutely, Gopi. Now 2 brothers out there in the middle, Ajay and Vijay, the brothers. Because we are not watching batting, these two brothers batting together, but it's a golden opportunity was the cricket lovers, the 2 brothers performing here, but last 5 deliveries remaining in Durga Konchadi. Sahil, right, above the wicket, Ajay, bowler's back drive, powerful entry one. Have a look at that Sahil. Sahil, once he wanted to avoid that stroke, but I got a bind onto that, so he stopped that stroke from Ajay. Ajay is certainly is a powerful striker of the ball, no doubt at all. And but here, Durga Konchadi, at least 1 or 2 big shots which is required in the last over. Sahil balls again outside the leg stump. He wanted to reach that delivery. This is once again. Ajay wanted to play the reverse sweep and Sahil seeing that batsman going for the reverse sweep. He wanted to bowl that one outside the leg stump. But that ball went too far away from the outside leg stump. Still Ajay wanted to reach that delivery, just following that one. But he didn't got any contact with the bat. Here is again Sahil, right arm over wicket balls to Ajay drives that one, but just for a single, not more than a single. With the singles covered moves on to 27 for the loss of 6 wicket. Is absolutely one of the best experiment I want to say in underarm cricket. Sahil is a young man, is doing a great job for young friends Urwa in this particular tournament. Sahil from the far end. From the Rohan Corporation end. Right arm over the wicket, balls to Vijay. Vijay went for the reverse sweep, but Ajay is not a good runner between the wicket. He doesn't want to get the single. That was a bat which is involved. He is not happy with his brother and he's asking why you are not got the single there. I want to deal with the last 2 deliveries, but there is no run at all. 27 for the loss of 6 wickets. Sahil. Right arm over the wicket to Vijay. Vijay went for the big shot, missed it completely. You miss height. What Sahil is dead. He got the wicket of Vijay. 27 for the loss of 7 wicket. Now last wicket remaining. The last last delivery remaining and 7 wickets back into pavilion. The last ball of their innings is coming up. Ajay is in non-striker zen, but Bhagwan is coming to the middle. Bhagwan so far has got a very good tournament from the ball because Durga Konchadi in the final, because of all the bowlers of Durga Konchadi did a great job in the bowling department. But it's the last delivery remaining, at least a boundary which is required for Durga Konchadi to get some respective total. Sahil, so far so good. Right arm over the wicket bounce. Visits it completely. Wicketkeeper not missing. It's going to be 1 more wicket here for Sahil. So back-to-back 2 wickets in the last over. And Sahil finished well. Absolutely. He's bowled a fantastic 2 overs for young friends Urwa. At last, Durga Konchadi only managed to get 27 in the mega final. And they set a target of 28 to win the match for young friends Urwa. And
it looks like it's going to be easy total for young friends Urwa, just considering the fact that the way they defeated the top teams like KCCR Kadri and top team like KFC Kodikal, looks like young friends Urwa might be the favorite, but everybody knows that cricket is an unpredictable game. You can't say anything in cricket. You can get so many examples in UCG cricket ground. Even unseeded teams is gave some result which is unbelievable. So that kind of result if you wanted, I think Durga Konchadi bowlers have to do something special, isn't it? The upsetting the big teams is not so easy, but I think for that Durga Konchadi have to bowl well. They need to bowl well, and at the same time coming back to the young friends Urwa, I think the bowlers did the job. Now all up to the batsmen of young friends Urwa justifying the effort of their bowlers. So Gopi 28, just like in the tossing ceremony, what Ashad Bajal is mentioned, that we want to restrict them under 30, and he succeeded, isn't it? That is what he called the captaincy, isn't it? Strategy is not important, but converting that strategy into performance is very important. I think the bowler really justifying the captain decision, and they are won the first attempt by restricting them for just under 30 runs. We didn't go into enough Gopi for Sri cricketers to finish matches 28 in 36 deliveries against some phenomenal batting department of young friends Urwa. If it is not, if it is yes, how please tell me. निस्संदेह सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल गेम और यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अर्शद ने कहा था टॉस जीतने के बाद 30 रनों के अंदर रोक कर रखना है। अपने योजना के अनुसार उन्होंने दुर्गा क्रिकेटर्स को जाने के बल्लेबाजों को 30 रनों के अंदर रोक कर रखा और खासकर योजना बनाना उतना आसान होता है जितना कार्य रूप में लाना उतना मुश्किल। कार्य रूप में लाना काफी मुश्किल होता है, योजना बनाना आसान होता है। और यहाँ पर अपने योजना जो बनाई थी अरशद ने, उसे कार्य रूप में वो 100% इस वक्त ला चुके हैं अपने गेंदबाजों के जरिए। और यहाँ पर 27 रनों पर रोक कर रखे हैं। और जहाँ तक आपने फरमाया कि यहाँ पर क्या ये रन काफ़ी हैं दुर्गा कुंचाड़ी के लिए, तो क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जाए। तो यहाँ पर 2 मैच पहले का उदाहरण ही अगर लेते हैं तो KFC कोडिकल जैसे सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप को 33 रनों के अंदर रोक कर रखने में सफल रही थी यंग फ्रेंड्स उर्वा। तो यहाँ पर 28 रन यंग फ्रेंड्स उर्वा के अगर बलाढ्य बैटिंग लाइनअप को तोल कर देखा जाए तो ये लक्ष्य कुछ ज़्यादा नहीं है 28 रनों का। लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन गेंदबाजी, मैजिकल गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी अगर राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर यहाँ पर दुर्गा कुंचाड़ी के गेंदबाज करते हैं तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स उर्वा के बलाढ्य बैटिंग के लाइनअप पर दबाव आ सकता है। लेकिन इस उनके यंग फ्रेंड्स उर्वा के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर अंकुश लगाना है तो इस वक्त दुर्गा कुंचाड़ी के गेंदबाजों को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, असामान्य गेंदबाजी करनी होगी और एक विशेष रणनीति के साथ एक योजना बनाकर उसे कार्य रूप पर लाना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए अजय और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए संतोष बंटवाल, जबकि नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद अरशद। और जहां तक का सवाल है उनकी पारी की पहली गेंद का, तो पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए अजय। और 28 द टारगेट एंड रिक्वायर्ड रन रेट इज एक्जैक्टली 4.67 रन पर ओवर एट दिस सिचुएशन। इन एक्जैक्टली कैलकुलेशन इज गोइंग टू 4.66 रन पर ओवर। ये गेंद, पहली गेंद कवर की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त संतोष हल्के से पुश करने के बाद और आखिरकार 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। ग्रैंड फिनाले यूनाइटेड ट्रॉफी 2023 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया रियल एस्टेट ग्रुप रजिस्टर विजय मैंगलोर ने। यह श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए एक एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर किया जा रहा है बेद्रा मीडिया पर। जनाब इरफान इनके सारथ्य में और कुल मिलाकर दर्शकों से खचाखच मैदान भर चुका है, एब्सोल्युटली जाम पैक स्टेडियम। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अजय। इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, अंडरआर्म क्रिकेट के डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजों में से एक जाने जाते हैं अरशद। और यहाँ पर जो कि सामना करने के लिए तैयार। दाहिना राउंड द विकेट गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया अजय की गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में। क्लीन कलेक्शन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है और फिर से एक बार अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। मिड ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड बैन पॉइंट और कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद सीमा रेखा के अंदर 20 गज के दायरे के अंदर। ये गेंद, इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता, अंतिम क्षण में अपने
इरादे को बदलते हुए इस वक्त खेलने में चूके और गेंद सीधे गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अजय एक बार फिर से तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाह, नॉट क्वाइट मिडली गेट, इनफैक्ट गेंद जाती हुई इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अरशद बैक ऑन स्ट्राइक, और इस बीच अजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अरशद के लिए तैनात ओवर द विकेट, इस बार इंप्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, गेंद 4 रनों के लिए। He just played that one after being shuffling across the line at the last moment and just scooped it away wide of the short fine leg fielder and he finds the gap as well. और delicately played अरशद, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रन बिना किसी नुकसान के। अरशद ने भाप लिया था कि शॉर्ट फाइन लेग पर जो फीडर खड़े हुए हैं कुछ हद तक स्ट्रेटर वर्जन पर खड़े हुए हैं, और उनकी दाईं ओर से गेंद को खूबसूरती के साथ फाइन निकालने में सफल है। गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए, 7 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, परिवर्तन के दौर पर ऑफ कटर गेंद, और इस गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए और स्वयं अरशद के चेहरे पर मुस्कान इस वक्त, और आखिरकार उस गेंद पर बिल्कुल वो बीट होते हुए, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का समाप्त हो चुका है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 28 in 7 overs, a steady start for young friends Urwa. 7 runs they managed to score, yet to lose a wicket after completion of first over. And let's straight away coming back to the equation, 28 minus 7, 21 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs with the required run rate of exactly 4.20 runs per over. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त भगवान के हाथों में। भगवान ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है, और यहाँ पर इस फाइनल मैच में देखना यह है कि वो क्या बल्लेबाजों पर अंकुश लगा पाते हैं या नहीं। दूसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ, दूसरा पावर प्ले ओवर, और संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए, और अपनी अगली गेंद, पहली गेंद लेकर भगवान इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, और ओवर की पहली गेंद लेकर भगवान इस वक्त तैयार। संतोष के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ಪೊಳಲಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. इस बार गेंद को खेल दिया, शॉट में विकेट पर 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर, और भगवान इस वक्त गेंदबाजी करने के बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए, और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि स्ट्राइक रेट पर मौजूद, और अरशद इस वक्त अंपायर से गार्ड लेते हुए, और इस वक्त भगवान की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज भगवान, कोई डीप बैकवर्ड स्कोर लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए, और जहां तक फील्डिंग के नजरिए का सवाल है, वाइडिश लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर इस वक्त एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के दरमियान एक फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन उससे उन्हें इस वक्त बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर। और इस वक्त जहां तक सवाल है, एक फील्डर को पीछे भेजा जा रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान, और इस बीच भगवान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद इस वक्त सामना करते हुए 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद उछाला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की ओर बढ़ते हुए, और वहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त रोका गया, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद को उछाला था लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान स्ट्रेट हिट एरिया पर, और वहां पर बेहतर फील्डिंग यहाँ पर फील्डर ने की, गेंद को रोका सीमा रेखा के अंदर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। भगवान की गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद खूबसूरती के साथ स्क्वायर होता विकेट, गेंद को स्कूप किया है, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की दिशा में। एक बार फिर से बल्लेबाज को 2 रन मिलेंगे, तीसरा रन लेना चाहते हैं, और तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े अरशद, और 3 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। Just rocked on the back foot and scooped it away, square of the wicket at the last moment, just taking the advantage of the power play, just clearing the infield, and because of that he's got a 3 runs for that stroke, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर
प्रगति पर। और इस बीच भगवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद संतोष के लिए बल्ले का बाहरी किनारा, ऑफ सबसे बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, गेंद इस वक्त जाती हुई डीप थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 14 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और 14 रन और चाहिए विजय के लिए। और इस बीच भगवान इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन आसानी के साथ इस बीच पूर्ण कर चुके हैं। 16 रन बिना किसी नुकसान के, 16 विदाउट लॉस आफ्टर 2 ओवर। दे आर लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन। तो सतीश आइए, आज अंतिम बार आपको बुलाते हैं माइक्रोफोन पर। 16 विदाउट लॉस, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 2018 6 ओवर्स। दिस इज एन फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा। 16 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और 12 रन सिर्फ चाहिए 24 गेंदों पर। रिकॉर्ड रन रेट आकर इस वक्त रुक चुका है एक्जैक्टली 3 रन पर ओवर। 4 ओवर 12 रन, 24 बॉल्स एंड 12 रन। टीवी मॉनिटर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है इस वक्त, जो इस वक्त मोबाइल पे इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट का मुआयना कर रहे हैं। तो 12 रन 24 गेंदें। अब ऐसा कहना पड़ेगा वापसी करने के लिए यहाँ पर दुर्गा कुंचाड़ी को कुछ चमकदारी गेंदबाजी ही यहाँ पर करनी होगी। फिलहाल इस वक्त तख्ता भारी लगता हुआ यंग फ्रेंड्स उर्वा का। और जहाँ तक सवाल है यंग फ्रेंड्स उर्वा का, तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा वो अपनी मंजिल की ओर इस वक्त बेहतरीन तरीके से अग्रसर होता हुआ। So thank you, Gopi. Exactly, you are mentioning about the young friends who are looking in a commanding position without losing a wicket. They scored already 16 runs. Now one more single is added to total. Now 17 on the board without loss of any wicket. 11 more runs required for the victory. 11 more runs required to lift the prestigious title, which is called United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group registered Bejai, Mangalore, in this most beautiful and historical UCG cricket ground. And everything is set here for the big moment for team Young Friends Urwa. But I think a lot of hard work which is required here for Sri Durga Konchade if they wanted to back into this game. Now they're trying a little bit extra. Maybe they wanted one fielder inside the ring. No, the mid-on fielder is going back to deep mid-wicket region. There is a long on is there. One is long off is there. One is deep extra cover, deep backward point. So it's 11 more runs required for the victory. The over number 3 is in progress. Bowler from the far end, Dhanush from the Rohan Corporation and balls. And Arshad once again nicely plays it down to square leg region, running out, looking for the second before Ajay seaming in from the far end, from the deep backward square leg region, and towards his front. I think is ample time for the batter Arshad to complete the couple of runs. With that couple of runs, they are now coming very close to the victory target. It's a 19 on the board. That means another 9 more runs required for the victory. Dhanush balls. This time reverse trophies comes into play. The production has been given in the deep, so that the batsmen have to settle for the single. It's a 20 on the board for the loss of, without loss of any wicket in the over number 3 is in progress. If Young Friends Urwa will going to win this big title, it is one of the first title, winning title in this season for Young Friends Urwa after they're becoming runner-up in the UFC trophy, the RR Memorial Trophy, the World Cup of Underarm cricket. That means in Urwa cricket ground, and Young Friends Urwa is always a favorite. And 21 on the board without loss of any wicket. 7 more runs required for the victory. Sahil, Dhanush. This time he hoisted it over, but I don't think he will go to get the distance. But he's just finding the fielder in the deep long on. Captain of Young Friends Urwa departs. Just talking about Gopi, in this particular tournament, we are witnessing some youngsters who really showcase their talent. This tournament is becoming the perfect platform for the youngsters. Some youngsters like Sahil, the Dhanush from Durga Konchade, and another Dhanush which is from KCCR Kadri. All are done a great job. All are youngsters, about just 18 or 19 years age, Gopi, but they are using this platform very well to showcase their talent. And definitely in this particular team, Durga Konchadi, Dhanush, he bowled very well. Now, it's an announcement which is coming from Kishore. Yes, Sai Kishore announcing 1,000 rupees for Rajesh Hubar for a 6. If Rajesh Hubar will go into hit the 6, and Sai Kishore will go into, yes,
present 1,000 rupees for 22 for the loss of 1 wicket. Three overs completed, 3 overs remaining, 18 balls and 6 runs required for the victory for young friends Urwa. Now after that long discussion, Durga Konchadi may be thinking about, they wanted 1 or 2 good overs badly. Otherwise, they wanted to give any chance for the new bowler because opportunity was given for the new bowler. No, they doesn't want to take this match a little bit towards the 5th or 6th over. That's why they're asking Ajay to continue. Ajay is one of the recognized bowler for Sri Durga Konchadi, so that they wanted him to continue. And Ajay so far has got outstanding tournament for Durga Konchadi. And in part of Durga Konchadi, we are observing some very good performance from Ajay, from Santosh. And just like we had mentioned about Asif is the senior most player missing this big final. But he is one who is represented for Durga Konchadi. I think it's bowled him. And Kishore has got a smile in his face because he's saving 1,000 rupees. And it's just safe in his pocket. And of course, Rajesh Ubar may be thinking about, I'm a little bit, I showed urgency. I can get 1,000 rupees in my pocket. But Ajay is not allowed that one. I think Kishore have to give 500 rupees for Ajay because you saved your 1,000 rupees and by picking the wicket of Rajesh. So 22 for the loss of 2 wicket. In the over number 4 is in progress. A new batsman walking towards the middle for young friends Urwa, Vinod Pollard. And wait and see, any cash prize here for Vinod Pollard for a 6? Because by hearing the name Pollard itself, everyone is shaking. Because Pollard is, of course, everybody knows, the one of the big hitter of the ball from West Indies, Kiran Pollard. But here is Vinod Pollard will going to take the strike of the bowling of Ajay. Ajay right arm over wicket balls, quicker one, faster one, but missing the direction, little bit outside the leg stamp, one more single, 23 for the loss of 2 wicket, 5 runs required for the victory for young friends Urwa. Pushing and running there from Vinod Pollard. Santosh has got opportunity to get the winning run. Coming back to Durga Konchadi, we are just missing the name, Asif of Durga Konchadi. Just I have heard the news that he has got a record of every time he's playing for any team, 8 times it's a team which is qualified for the final. And a very good stop there by the fielder. Bhagwan, I think so, is saving certain boundary from the bat of Santosh. So 25 for the loss of 2 wicket, 3 more runs required for the victory. Ajay bowling away from us. Right arm over wicket to Vinod. Vinod going for the big swing of the bat. That was one of the best delivery, I want to say, what Ajay will go into ball sometime. The leg cutter, slow leg cutter, which we are going to be the difficult delivery for any batsman. This time batsman drives that one down to mid-wicket, mid-square leg region for a easy single. With that single score, moves on to 26 for the loss of 2 wicket. So again, nicely plays it down to a short gully region for a single. So one more over completed. Completion of over number 4, chasing 28 to win this match. Scores are level. Just one more run required for the victory. Now 1,000 rupees, which is announced by Sharif Bantwal for Arshad Bajal, and 1,000 rupees for Sagir by Bashir Shanti Angadi. Announced 1,000 rupees for Sagir. And Santosh is just turning back and just listening whether any cash prize for Santosh Bantwal. But there is no cash prize for Santosh Bantwal. And 27 for the loss of 2 wicket. And last, the winning run which is required here for young friends Urwa. And just a format is left in this game. And here is Santosh to Santosh. Santosh of Durga Konchadi will go into ball. Santosh of young friends Urwa. 1 run required for the victory. Now Santosh sending one fielder from mid-on to long on, saying that Santosh is a very good hitter, especially in that region. And still fielding arrangement is on. Test match field set here for Santosh. And first ball lofted, but here is a catch.
This is what I'm talking about. Santosh enjoying his wicket because he sent that mid-off-fielder towards a deep long off and gave a juicy full toss, inviting Santosh to go for the big shot. And taking the invitation, Santosh lofted that one down to deep long on and comfortably taken there by Bejai down at deep long on. So now I think, yes, Nasib apna apna, what you call. I think this man has got a lucky man because he will going to finish the match for young friends Urwa. Ajmal. Ajmal is got opportunity. He got opportunity to get the winning runs. So first of all, this time lofted that one and looks like that could be a winning runs. They completed single. Ball will not go into travel. But here is such a single which is required. The young friends Urwa becomes a champion by defeating Durga Konchadi by 7 wickets. And once again, they are lifting the prestigious United Trophy 2023. Second time. And Ajmal once again saying that, yes, I am the man who represented for young friends Urwa for a long time. He missing his team. Yes, because of his went towards the Gulf for the work. But he came back and joining his young friends Urwa team. And he is now saying that, yes, my team still has got a potential of winning a big title. Congratulations, young friends Urwa. The Ajmal finishes the match in a style. And he got opportunity to get the winning runs. And young friends Urwa becomes the champion of this prestigious United Trophy 2023. Congratulations for the winners. Even congratulations for Durga Konchadi because they also played a very good game of cricket. But in the final, they're playing against one of the much better team, ICD team. And conference victory for young friends Urwa. That's it from the commentary box. Thank you very much, each and everyone. We are straight away back into the presentation ceremony.
ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆವೇಶ್ ಸದಾಶಿವ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇವರಂತಹ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಘುಭಟ್ ಮಾಲಿಮಾರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಗಿಲ್ಬಟ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಮೊಂತೇರು ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್, ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚೈತನ್ಯ ಭಟ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. 2 ತಂಡದ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ಪೊಳಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಲಂಬಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಾಬು ಗಿಲಿಯಾರ್ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರೆಬಾಯಿ ಕೊಂಚಾಡಿ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಬಿರೇರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುಭಟ್ ಮಾಲಮಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸೀಪನ್ ದಿವಾಕರನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ NS ಕೋಡಿಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲಂದರ್ ಆಯುಬ್ ಇವರಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಇವರು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಾವು 2 ಕೇಕನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉರದ ನಾಯಕ ಹರ್ಷಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೆ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ನಾಯಕ ಶ್ವೇತಾ ಉಮೇಶ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಕೇಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಆಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಒಂದೇ ರೀತಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ಆದ ನಂತರ ರನ್ನರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಈ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹರ್ಷಾದ್ ಅವರು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಜೈ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘವನ್ನು ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹಣ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಉಂಟು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ 1 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. 20 ಸದಸ್ಯರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಆಶಯದಂತೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ. ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ 16 ತಂಡಗಳಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ 7 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿನೇಶ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಇವರು ಒಂದು ಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮುಖ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫಾನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನೋಬೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಂಜತ್ ಪೈ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ಪಳಲಿ ಇವರು ಈ ಗೌರವದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಮಿಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಆಚಾರ್ ಮಂಗಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶೂರ್ ಶಲೋನ್ ಅಮನ್ನ ಮನ್ನಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನ್ನಗುಡ್ಡ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಮಂದ್ಯರು ಇವರು ಈ ಸಹಾಯವನ್ನು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶ್ರೀ ರಘುಭಟ್ ಮಾಲಿಮಾರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಯಲ್ ಗಿಹಲ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ ಆಫ್ ಜಲಜಾ ಬೋಳೂರು ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೂರು ಇವರು ಇದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಸುಚಿತ್ರ ಆಚಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ. ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲರ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಗೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ವಿವೇಕಿಯವರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಿರೇರ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇದರ ಪಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೋಲಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೋಲಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿ ಸರ್, ಇವರಿಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಕೊಡಲಿ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾ ಇವರಿಗೆ ನವೀನ್ ಮಧ್ಯರು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇವರಿಗೆ ರಘುಭಟ್ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ರಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇದರ ಕಿಶೋರ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ದಿನಗಳ ಶಾಮಿಯಾನ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಿರಿಲ್ ನಮ್ಮವರೇ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪಡಿಕಲ್ ಇವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಸಿರಿಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಚೆಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ವೇತಾ ಸುಭಾಷ್ ಮಳಲಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಮೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಪರಿಚಯದವರು. ಆಗ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆಕ್ಕಿಂತ ಸೋತವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಗೆಲುವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೋಲು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಸೋತವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೋತವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಸೋತವರು ಕಲಿತಾರೆ. ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೋತವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಸೋಲು ಯಾವರಿಗೂ ಸೋಲಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಾದೆ, ಒಂದು ಗೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಬೋಕ ಅವನಿಗೆ ಪಾದೆ ಪಾದೆ ಅದ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಬೋಪ ಚಪ್ಪಳ ಪೂಲ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ಪಾದೇನು ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಮತ ಬಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಳಿತ ಪೆಟ್ಟ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ರಾಮ ಆಪೆ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ಆಪೆ ಕೊಡೋದು ದಾದನ ಮೂರ್ತಿ ಆಪೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವೊಂದು ಸೋಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೋಲು ನಮ್ಮ ಪಾದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಲನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಾದ್ರೆ ಗೆದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಲಾಗಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸೋತವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಾದಂಥ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ. ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಬೋದು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ದುಡಿದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಖಾಲಿ 2 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ನೀವು 20 ಜನ ಇರುವಂಥದ್ದು 200 ಜನ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಮನೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹನುಮಾನ ಪುಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೋದಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಾಗ್ತೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಾಗ್ತೇವೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯಾ, ಕೆಟ್ಟದಿದೆಯಾ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನೀವೊಂದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ 20 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 200 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 1000 ವರ್ಷವಾದರೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕಾಯುವವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ರಘುಭಟ್ ಮಾಲೆಮಾರು. 2 ವಿಚಾರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಗ್ಗೆ. ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಡರಿಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯರು ದಯಪಟ್ಟ ಆ ಪಂದ್ಯ ಸುರುಳಾಗಿ ದಯಪಟ್ಟ ದುಬ್ಬುಗೊಬ್ಬುದು ಬಚಬಹುದು ಮುಗುಲನ್ನು ಏತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಬರ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪದೊಂದು ಉಂಟು ದಯಪಟ್ಟ ಯಾನ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದೆ ಪದ ಇಟ್ಟು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಯಾರು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 5 ಬರೋದು ತೊಂಬಳು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ 2 ಪಾತ್ರ ಬರೋಡಾರು
ದಯಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೊದಲು ಸುರುತ ವರ್ಷ ಬಂದೇವೆ ಆ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗಳು ಏತು ಬೆಂದೆರ ಏತು ಬಣ್ಣ ಬತ್ತೆರ ಬೆಂದಿನಿಗೆ ಏತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಆ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದೇ ಭಾಗ ಇದೆ ಮೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಧನ ಸಹಾಯ ದಯವಂತ ದೊಡ್ಡ ಆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮೂರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾನು ನನ್ನ ಜಾತಿ ಕಲ್ಪನಿಂದ ನಾನು ಏನೊಂದು ಎಂಚ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾವನೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಗಾಣಿಗೆಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಾದುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಚಿನ ಬದಿ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ನನಾತು ಮಲ್ದೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ಪಡು ನಾಟ ಅದು ಸುಲಭ ಐತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಧ್ಯಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಮಲ್ಪಡು ನಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಪಡು ಬಂದಿಗೆ ದಿನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಲಿ ಕಮಿಟಿ ಅವಡು ಅಥವಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಥವಾ ಆಯೋಜಕರಾದರು ಬಂದಿಗೆ ದಿನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುನ್ಪಾದ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಲೇ ದಯಮಾತ್ರ ಅಗಲೇ ನಿಂತೋಗ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ದಯಪಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಭಾರಿ ಅದು ಎನ್ನದಾಯನ ಆಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಲಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಸುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಡ್ಡು ಪಾತ್ರ 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 ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇದು ಪಾತೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ఎక్కువ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಪವರ ಟ್ರೋಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲಡೆ ಬಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲು ರಡ್ಡು ದಿನ ಮೂಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂದಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೇಕ್ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ರಾಜೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋಡಿ ಅಂಚಾದ ಅರಣ್ಯ ಪಂದ್ಯ ಉಂಟು ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಆದ ಸಿರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಣಿ ಅಡುಗೆ ಮಸಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಲವಡಂಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಜರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಋಣಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈತೆ ಬರ್ಲವಡಂಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಎರಡೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಬರೋಣ ಪಕ್ಕ ಮೈಕಾನ ಸತೀಶ್ ಮೆರುಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ನಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಎದುರಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಪುರಾಂಡ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುರಾಂಡ ಇಂಚನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನನವರ ಮಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷ 7 ಜಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 14 ಜಗಲಿಗೆ ಗೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂದು ಆಶಿಸಿದ ನನ್ನ ಎದುರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಾನು ಮೈಕನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋಮೇಲು ನವೀನ್ ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ and without wasting us time and we are going to the individual department of this prestigious United Trophy 2023 which is proudly organized by Real Estate Group Bejai registered Mangalore. And 2 days of cricket is witnessing some fantastic, one of the best tournament I witnessed in this UCG cricket. Big hand for Real Estate Group. And a very disciplinary and successful cricket tournament which is organized in this historical UCG cricket ground. First of all, congratulations for the winners as well as the runners. A big hand for champion of this cricket tournament, young friends Urwa, and big hand for the runner-up Durga Konchadi. And now it's a time to announce the man of the match of the final. The man of the match of the final which is goes to, any guess? Santu. Here Santu, Mastu Santu le. Ji, kuda, change adi. Yes, with start up. Yes, very talented, young, energetic player. The Sahil is the man of the match of the final for his wonderful bowling figure of 2 overs. No
maiden, conceded 4 runs and picked up 2 wickets. The wicket for a very talented Sahil. He's got a great future. He's got a bright future in cricket. Fantastic performance from Sahil. Not only in the big final, but throughout the tournament he's outstanding. He is going to collect a T-shirt as well as a cap, and along with that he is going to collect very attractive Man of the Match award. Kishore, our chief guest, presenting this Man of the Match award for Sahil. Congratulations, Sahil, and we wish you bright future. Thank you. Thanks a lot. And now we are coming to the next department, which is the best batsman of the tournament. The best batsman of this tournament goes to. Any guess? Actually, I was talking about pura Santosh. Pura Santosh is there. Pura Santosh. What is Santosh? Durga Santosh. Absolutely Durga Santosh. Durga Santosh. He's got a 54 runs. He got a 54 runs in the tournament, and he's got a fantastic tournament from the bat. May I request Santosh please come forward. He is famously known as a Sai Santosh, and here he is going to get yes, best batsman award from our chief guest Rajesh. Wicket for Santosh, one of the big followers of cricket. Yes, thank you Santosh. Congratulations for your outstanding performance in this particular United Trophy 2023. Now it's going to be a next one. Best bowler of this tournament. Udana Santosh. Yes, now I am not going to disappoint. It's going to be a Santosh of young friends Urwa, the best bowler of the tournament. I request Santosh please come here. Santosh Jabo of young friends Urwa. He is the best bowler of the tournament. Outstanding bowling performance throughout the tournament, especially in the first round match against KFC Kodigal when they are defending a small total of 34 runs. This man is, I request Shubhas Polali to present this beautiful memento for Santosh. Congratulations Santosh. And now we are coming to the huge one, the big one. The man of the series, the man of this United Trophy 2023 goes to मस्त खुशी आहे against team the उधर हारना नहीं पड़ेगी सत्यवाद. This is called a true spirit of cricket. And the young friends are absolutely told that the Ajay of Durga Konchari for his all-round performance, and he will going to get shoes from Sports World, the sponsors of Man of the Series. Along with attractive trophy, he will going to collect shoes. Shoe party का पूरा performance जास्त किया हो अजय. So he bowled very well, he batted very well, and he deserved this Man of the Series. Naveen Montero will going to present Man of the Series award for Ajay for his all-round performance. 7 wickets in the tournament. 36 from the bat. Congratulations Ajay for your outstanding performance. Now straight away, yes, without. So now it's a time to announce the runner-up of this prestigious cricket tournament. The first time in the history, Durga Panchadi, they qualify for the final and become the runner-up. And this trophy which is sponsored by Deal Well. So trophy which is sponsored by Deal Well. And of course the medals for each and every player, so that I request all the playing 11s please come here and collect your medals from our chief guest. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು, ಎಸ್ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. So attractive, very attractive runner-up trophy for Durga Konchadi, and cash prize which is donated by Rohan Corporation. So thank you very much Rohan Corporation for your heartfelt contribution for the success of this cricket tournament. The cash prize of rupees 25,000 which is donated by Rohan Corporation. Thank you very much once again for Rohan Corporation.
and the proprietor of Rohan Corporation, Rohan Montero. Thank you very much, Rohan Montero, sir, for your cooperation for the success of this cricket tournament. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಂತರ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. So here we go, the runner of this prestigious United Trophy 2023 Durga Konchadi cricketers. Durga Cricketers Konchadi has become the runner-up of this prestigious United Trophy 2023. So congratulations for Durga Konchadi, outstanding performance in this particular tournament, and Umesh is the captain of the side, lifting the trophy. Congratulations Durga Konchadi for your outstanding performance. Now, it is time to announce the champion of this prestigious United Trophy 2023, which goes to once again Young Friends Urwa. May I request all the players of Young Friends Urwa, please come forward. I request all the members of Real Estate Group, please come front. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎಸ್, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. So now is the time for the champion to go, and leading from the bench, the captain of the side, and before that the senior player of Young Friends Urwa, Ajmal, and along with him Arshad Bajal, and along with Arshad Bajal, it's Rajesh Yuvar, and Altaf Basavanagade, Vinod Palaj, Prasad Parvez, one of the senior most player of the Young Friends Urwa, and along with them some young talents are walking here. Sakir, outstanding tournament he has got from the ball. The champion of United Trophy 2023. Very good catch. Very attractive United Trophy 2023. Here you go, the champion of this prestigious United Trophy 2023. Young Friends Urwa once again, after they becoming the runner-up in the Urwa Memorial Trophy, New York State Trophy, once again they become the champion here in University Ground of this prestigious United Trophy 2023. Cash prize of rupees 50,000 will be presented for the champions. Here we go, the champion, Young Friends Urwa. He becomes the champion here. Congratulations, Young Friends Urwa. Thank you very much. Congratulations, Young Friends Urwa, to become the champion of this prestigious United Trophy 2023, which is proudly organized by Real Estate Group, registered Bejai, Manglore. It is historical UCG ground. That's it, the presentation ceremony. Once again, thank you very much, each and everyone, those who are cooperated for the success of this cricket tournament, directly and indirectly. And I would like to give special thanks to the Real Estate owner group for this providing opportunity, being a part of this cricket tournament as a commentator and as an MC. So thank you very much once again, each and everyone. Thanks a lot.